पर गगन गौड़ा रहते हैं, शशांक रहते हैं, कल तो मधु कवीरप्पा बहुत अच्छा खेले। और पिछला मैच अगर हम बात करें, गगन गौड़ा ने सिर्फ 4 पॉइंट प्राप्त किए थे, बट एक बहुत ही अच्छे अंदाज में ये पता चला है कि उन्हें सपोर्ट मिलने लगा है। मधु कवीरप्पा ने वहां बहुत अच्छा किया, सुदर्शन ने जाकर रेड पॉइंट्स प्राप्त किए। तो पर फिर भी आज जिन पर हम सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कवर्स बहुत स्ट्रांग है चोला वीरेंस के, वहां पर एम गौतम नजर आते हैं। तो आइए तुरंत हम बात करते हैं गगन गौड़ा की, कहां उनकी स्ट्रेंथ है, कहां वो थोड़ा सा वीक करते हैं। अगर राइट कवर से अच्छा चेन टैकल आएगा तो नवीन मुझे लगता है कि आज गौतम उन्हें अपना शिकार बना सकते हैं। आइए गगन गौड़ा के परफॉर्मेंस को देखते हैं। And he should wait for the left corner to attack first. Gautam today against Gagan Gowda. It will be a very, very important contest. And also don't forget, the first raider to reach 150 raid points in the summer edition is that glorious raider, Gagan Glorious Gowda. But also, importantly, watch out for the captain. Humpy Heroes' captain now is in a very, very good form, as Madhu Kavirappa has come out there and he's got that 22 raid points. None of the raiders have got 22 raid points in one particular match. So, watch out the defense of Chola Virens. You've got attack on both the sides. Right raider Gagan and left raider Madhu. जी हाँ, तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा कॉर्नर्स हैं, अच्छे रेडर्स हैं। बट मैच नंबर 83 की तरफ हम अब तुरंत प्रस्थान कर लेते हैं, क्योंकि वो भी मुकाबला बहुत ही बड़ा है। अरावली एरोस एक बड़ी हार के साथ आ रही है। वहां पर नीलगिरी नाइट्स के विरुद्ध लगभग 36 पॉइंट के मार्जिन से वहां पर वो मुकाबला हार कर आ रही है। और सामने उनके कौन है जिन्हें भी जीत चाहिए, जिनका भी मनोबल थोड़ा सा डाउन गया है, पलनी टस्कर्स वहां पर आपको नजर आएंगे। दोनों बार जरूर हम सभी जानते हैं कि पलनी टस्कर्स वहां पर जीता है और अच्छे मार्जिन से जीता है। बट पलनी टस्कर्स की सबसे अच्छी बात क्या रही है नवीन, टोटल रेट्स 538 है और उसमें एम्प्टी रेट सिर्फ 167 नजर आएंगे और सक्सेसफुल रेट का परसेंटेज बहुत अच्छा है। And unsuccessful raids for the Aravali Arrows. I am kind of wondering why that empty raids are 212. So that suggests the raiders have not gotten the points. Yes, when you say successful raids are 246 for the Aravali Arrows, that's very nice. But when you also just go down and say empty raids compared to 167 is 212, that will be really, really interesting. And also look at the unsuccessful raids there. When the unsuccessful raids has been going ahead with 184, that means, so as always I say, they are very good on the defensive side, but the Raiders need to do a better job, as we can lose this graphics and we can release this for the further discussion as well. And also, Harshit, very importantly, the point of the defense, where they are very good, they should also try and understand not to go for any advanced tackles, because the only problem there, Palani Tuskers are hungry today. They are coming in with all guns blazing. They have all the guns loaded up with all the bullets that can fire out, because they are really hungry. They haven't had a single victory yet in the booster round. So watch out the defense of the Chola Virens and also the defense of Aravali Arrows, because their defense is little vulnerable, especially Aravali Arrows. If they can play the game in the covers what they did previously to this match, then that's going to be a good contest. जी हाँ, तो ट्रक लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आज यहाँ पर उतरने वाला है पलनी टस्कर्स, क्योंकि वो डेस्परेट है जीत के लिए। बट अरावली एरोज एडवांस टैकल्स, बट कई खिलाड़ियों को जाना पड़ेगा, क्योंकि कल हमें नजर आया राजेंद्र भाकर ने पूरे मैच में सिर्फ एक ही टैकल इनिशिएट किया और वो उनके गेम के विरुद्ध था। तो राजेंद्र भाकर, प्रेम भडू और अंकित जाट को एक साथ मिलकर वहां प्रदर्शन करना होगा और कवर्स को अच्छा साथ देना होगा, क्योंकि एक खिलाड़ी वहां आपको नजर आएंगे नवीन, जो एक शानदार रेडर है, जयसूर्या नागराजन, जिन्हें बहुत पसंद है 6 या 7 के साउथ में पॉइंट लेना। Yeah, absolutely. We will see Jayasuriya, but even before that, I was actually wondering, Harshit, how can the Aravali Arrows just give, or rather just score only 14 points? Yeah. I mean, I was like really shocked, because for a team that has gone ahead and got 50 points, only 14, yeah, that's the reason why Jayasuriya Nagarajan now today becomes that lethal raider. Because on that left raider, if you are wondering to see if you can come out there and attack on that right corner very nicely, because for Rajendra Baka, it is going to be on the left corner. And I will want to see if Rajendra Baka, because he's very, very good in the thinking lines when it comes to defense, if he can go out there and stand in the right in position along with the right corner. Can Rajendra Bakar think that of doing? Because that will actually stop Jayasuriya from going in for all those touch points. Because yesterday, Jayasuriya was the only sole fighter, because he was the only one raiding, and of course against Sanskar Mishra, it was a tough job because Sanskar was just unstoppable and the defense made a lot of errors. But today, if Rajendra Bakar can think on these lines, if Jayasuriya can be tackled out, then Palani Tuskers will be under a problem. But if they want to go out there and make a lovely match out of this, Jayasuriya has to fire like yesterday. जी हाँ, फायर करना पड़ेगा। और नवीन, बिल्कुल आपने सही कहा कि जयसूर्या नागराजन के विरुद्ध एक अच्छी रणनीति हो सकती है अंकित जाट के साथ। क्या पता वहाँ राजेंद्र बाकर आपको राइट फ्लैंक में नजर आए, बट मैंने जयसूर्या नागराजन को देखा 6-7 के आवर्स में बहुत ज्यादा लीथल हो जाते हैं। 98 successful raids and 140 unsuccessful raids. So compared to the Nilgiri Knights, the unsuccessful raids are like more than whatever that number suggests. So say around 40
43 raids are more than whatever the Nilgiri Knights have gone ahead and taken it. So that is the problem there for the Chambal Challengers. If they can avoid such things, of course, with Sanskar Naveen Mishra, he is doing a fabulous job. He's gone out there. My only problem is, can Sanskar get a support? Again, we spoke about this yesterday also. Uday did not fire. Yesterday they were under a pressure because Sanskar had to go for the tackle. And remember, that tackle initiated by him only started to give them the tackle points. Now that is again an issue. So if the defense and the other raiders need to support Sanskar, because how long can you believe and put a burden on only one man? Yeah, absolutely. क्योंकि उदय ने कल अच्छा किया वहां पर 4 डू और डाई रेड्स लगाए और चारों में सक्सेसफुल वहां पर हुए, पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस का बूस्टअप हो रहा है और अभी भी उनका 100% गेम हमें देखने को मिलेगा, हम यही आशा करते हैं। बट नवीन, एक और जो स्टैट्स था ना, वो इसमें नीलगिरी नाइट सबसे कम अनसक्सेसफुल टैकल्स भी कल हमने उनके देखे और सबसे कम अनसक्सेसफुल रेड्स है उनकी, यानी कि उनके रेडर्स को पता है कि कब हमें अंदर जाना है, कब वहां पर पॉइंट लाना है। बट जिस रेडर को अच्छी तरह से पता है उसमें एक संस्कार मिश्रा का नाम भी आता है, जो एक ऐसे प्रदर्शनकारी बन चुके हैं, जो एक चिंगारी लेकर आए दुर्गेश कुमार के इंजर्ड होने के बाद। हमें लग रहा था कौन स्टेप अप करेगा, इन्होंने बताया है कि मैं करूंगा। I will really want to see the Manigandan Sudalamani and Manigandan Nesamani cover combination to work out well, because the problem today is, Harshit, let me break you this news. There, Velavan Muruganandan will not be there available for the Nilgiri Knights, because he's gone in for some of the trials and selections where he will be missed out on that left corner. And today, again, Sanskar Mishra, if you are fielding in another left corner, I think it is going to be Elumalai Murthy who will be coming in. Comparatively less on the experience side, comparatively less on the strength side also, because he's not that heftily built or tall like Velavan Muruganandan. But the only problem is, if the left corner is a bit inexperienced, I will want the Manigandan combination to do well on the covers. या बहुत जरूरी, और मेरे लिए सिर्फ एक ही चिंताजनक विषय है कि वो अब कौन लगाएगा डू और डाई रेड्स नीलगिरी नाइट्स की तरफ से। बट कोई बात नहीं, वेलेवन जल्दी ही वापस आएंगे हमारे साथ जुड़ जाने के। बट बहुत ही शानदार आज के मैचेस देखने की उम्मीद है। और नवीन, पहला मैच तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पलक झपकाते हम आप सभी के साथ वहां पर जुड़ जाएंगे। बट अभी एक बार फिर से समय है आप सभी को याद दिलाते हैं कि कबड्डी का खेल और युवा कबड्डी सीरीज एक बहुत ही बड़े कैंपेन के साथ आप सभी के साथ है। इस स्पोर्ट को हम पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं कि सेफ रखेंगे और क्लीन लगातार बनाए रखेंगे। आइए उस प्लेज वीडियो की तरफ चलते हैं जहां सभी खिलाड़ियों ने की है सत्यनिष्ठा की शपथ। हम युवा कबड्डी सीरीज परिवार शपथ लेते हैं सुरक्षित खेल और सत्यनिष्ठा की। We at Yuva Kabaddi Series take a pledge to play safe and clean sport. Match number 82, and the Nilgiri Knights and the Chambal Challengers are going ahead and making sure that they will be able to win one match against each other, because previously twice they are in the tie zone. Harshit, can we have both the teams on the mat to start the match number 82, please? What a match to start the day off in style. A perfect, magnificent thriller of thriller is coming. दो बार अभी तक ये टीमें भिड़ी है एक दूसरे के विरुद्ध। अभी तक न कोई जीता है न कोई हारा है, दोनों ही टीमें है बेकरार। किसके खाते में जाएगी एक दूसरे के विरुद्ध जीत? आइए बुलाते हैं सबसे पहले the most balanced side of this summer edition is coming to roar, Nilgiri Knights! They have actually gone ahead and scratched that gold surface. Actually, the Chambal Challengers in the boost around. And of course, not just scratching the surface, they have got the gold miners itself in their arena is the Nilgiri Knights, because
They have been very, very consistent. Only team that has been consistent from the survival round to the booster round are Nilgiri Knights. But every other team has seen one or the other changes. Who's just come in yesterday from Chennai, Surya Selvam and Marimuthu Selvam will be raiding. And as the trusted cover combination of Sudalamani and Nesamani, the Manigandan combination, Ajayananda Krishna, Kesavan Raja, Balaganapati Manikam, and yes, Abhikumar will be there in the substitution lines. And along with me, Rashid, welcome. Yeah, thank you so much, Naveen. A perfect match to start the day in style, यार. बहुत ही बड़ा मुकाबला है. दोनों ही टीमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज में अभी तक खेली. आइए बात करते हैं शुरुआती साथ की चंबल चैलेंजर्स की. संस्कार मिश्रा यहाँ पर नजर आएंगे. एम गोपी को लगातार वहाँ पर मौका मिल रहा है. आज लेफ्ट कवर पे एक छोटा सा बदलाव देखने को मिल रहा है. लखन कश्यप को आज खेलने का मौका मिला है. क्या लखन कश्यप अपनी टीम के लिए वो कार्य कर पाएंगे? वंश राइट एंड पर इन्हें खेलते हुए दिखाई देंगे. आप उदय कुमार पारते होंगे. दुर्गेश साहू रेहान शेख की जोड़ी में कोई बदलाव नहीं किया है. क्या यहाँ पर जावेद खान को लगातार मौका मिलना चाहिए शुरुआती साथ में? इसके बारे में बात करेंगे. अभिराम होंगे, अक्षय होंगे, अजय मारवी थोड़े से अंडररेट किए गए हैं अभी तक चंबल चैलेंजर्स की तरफ से. हो सकते हैं अच्छा सपोर्ट दे पाए. पर जावेद खान, दुर्गेश कुमार अभी सब्स्टिट्यूट की लाइन में है. अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगी, उन्होंने कहा कि मुझे अभी थोड़ा रेस्ट चाहिए, लगभग 50-60% में फिट हूं, बट और बेहतर अगर कहीं भी जरूरत पड़े तो शायद वो अंदर आ सकते हैं. He always wants to be in the arena with the team, isn't it, Durgesh Kumar? But nice that the Vansh Mudaliar lad is getting a nice look in as a raider. That's good that he's getting a lovely opportunity. But this is the man, Gagan Glorious Gowda. There we go, the first raider to reach 100 raid points. First raider to reach 150 raid points this summer edition of the Hampi Heroes. And then look at that. Top two are being actually going ahead and attractively being taken away by the Chambal Challengers. Sanskar Naveen Mishra and Durgesh Kumar. Both brothers, top two, top three. और चंबल चैलेंजर्स के दो खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं, इसलिए हम चंबल चैलेंजर्स को बहुत अच्छा करते हुए देख रहे हैं. और यहाँ पर भी दो खिलाड़ी आपको एक टीम से नजर आएंगे. वो होंगे रावली एरोज के राजेंद्र भाकर, अंकित जॉर्ज. लोकेश कुसलिया को पिछले 3-4 मैचेस में ज्यादा अंक मिले नहीं है. 19 मुकाबलों में 56 वहां पर टैकल पॉइंट्स और टॉप द डिफेंडर्स की लिस्ट थी. और इन दोनों टीमों में से कोई बड़ा डिफेंडर में नजर नहीं आया, क्योंकि दोनों ही टीमें कॉम्बिनेशन में जाना पसंद करती है. मणिकंदन, नेसामनी उतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और एस मणिकंदन भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. तो एक अच्छा क्रम यहाँ पर रहना होगा और ये टॉप 3 डिफेंडर्स हमें नजर आए. Yeah, you just spoke about if Javed Khan needs an extra look in. I completely support that point. Javed Khan needs to play more than Rehan Sheikh for me, as the Chambal Challengers have won the toss and they will be selecting the court as well. And the first raid, I think, will happen from Marimuthu Selvam as always. The captain of the opposition will go for it. Mohan Gowda was there for the toss. And he says the Chambal Challengers have won the toss. As I said, Marimuthu Selvam will be raiding in first, and his numbers looks impressive. Not daunting, not very terrorizing, but it is very, very impressive. The reason where his raid strike rate is under 50 is because the responsibility has been equally shared. But today, Vasant Murugan, the new raider, will be coming in. But against this man, left corner is a new left corner, Rashid. It's going to be tough for Elumalai Murthy. जी हाँ, बिल्कुल उनके लिए मुश्किल कार्य होगा, क्योंकि संस्कार मिश्रा को पसंद है वहां से लेफ्ट फ्लैंक से बहुत ज्यादा पॉइंट चुराना. और रेड स्ट्राइक रेट, नवीन सर्वाइवल 2 की शुरुआत में इनकी रेड स्ट्राइक रेट लगभग 60 के आसपास की थी. और अब देखिए कितने अच्छी तरह से वहां पर पड़ी है. 55 से कहा इन्होंने 70 तक के मार्जिन को तय किया है. ये बताता है कि किस प्रकार से पूरी तैयारियों के साथ उतरे संस्कार मिश्रा. नीलगिरी नाइट्स 13 जीत 2 हार हाई है और 2 टाई आए हैं. दोनों ही मुकाबले टाई खेले हैं अगेंस्ट चंबल चैलेंजर्स. क्या तीसरा टाई भी हो सकता है? No, don't even say that. Let the question be asked by people watching it live and exclusive on FanCode. Let's not even go to a tie match. Already we have seen a tie where Hampi Heroes and Palani Tuskers got their second tie, and that was the booster round as well. And even in survival round they had a tie. Yeah, this is a very, very nice team. And is the Manigandan brothers defensive partnership the best we have seen in YK Summer Edition? Richa Patel asks that question. According to me, the defensive partnership in the covers are the best, not on the corners, because cover defense I have not seen like a very, very good settled coordination what they have got. The reason for that also, Arshad, is because they have played in the same position for more than 2.5-3 months. Wherever they have gone in to play, whether maybe the trials, whether they may be for the Tamil Nadu Nationals, wherever they have gone in to play, they have been at the right cover, left cover. And both of them come in from the same academy of Kabaddi. Of course, Sami Appan being their main mentor, the main experienced coach. So that combination is good for the covers. I might not say the same thing for the corners as well, as Coach Rajaram will be having a discussion. And I'll also tell you what I had a discussion with him in the lunch plate. That was interesting.
अच्छा, बड़ा अच्छा प्रश्न था पर ऋचा पटेल की मैं तारीफ करूंगा। एक कुछ हटकर उन्होंने प्रश्न किया और दोनों कवर्स मेरे मुताबिक भी वहां पर कवर्स की जोड़ी में वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी वहां पर आपको नजर आती है। बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया। चंबल चैलेंजर्स 7 हार हैं, 4 टाई हैं। टाई ये ज्यादा खेलते हैं, 9 मुकाबले जीते हैं और चारों जो उन्होंने टाई खेले हैं ना उनमें बहुत सारे मुकाबले जीत सकते थे और जो मुकाबले कई हारे हैं उनमें भी जीत सकते थे। बट आइए इनके अगर आप करंट फॉर्म की देखते हैं तो 5 मुकाबलों में 3 जीत वहां पर है, 2 हार आपको मिली और पिछले से पिछला मैच जो हारा था वो एक अच्छा मैच था। अंत में जाते जाते कपिल गुर्जर की एक छोटी सी मिस्टेक थी जिसके चलते मुकाबला हारा। बट मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कौन सा वो एक और प्रश्न होगा चंबल चैलेंजर्स की टीम के लिए। ये प्रश्न है, आर चंबल चैलेंजर्स डूइंग बेटर इन द एब्सेंस ऑफ दुर्गेश कुमार? आशीष नेगी। No, I will go out and say the absence of Durgesh Kumar has hurt them. But this lad, number 11, Sanskar Naveen Mishra, has made sure Durgesh's absence is not being felt. Right? Ask the expert on our official Instagram page at Yuva Kabaddi Series. That's nice on a handle. But Ashish Negi, you will also try and see to that the second best raider is this man, number 11 of Sanskar Mishra. Yes, they are feeling the pinch of Durgesh Kumar not being there, but they can't be said that they're doing really better. They are definitely feeling the pinch. But when I was just speaking, Arshit, I think yesterday we spoke about that in the post show as well. Imagine if Durgesh comes in this lineup. Along with Sanskar. And imagine if Durgesh sitting right there cleaning his ears. Something is gone in there as Pradeep Yadav. Very nice, settled, calm and cool. And every time he comes in the morning to the jog, he always comes in a little late after the team. The team comes first and then Sir comes later a little. We'll also talk about that much more as we get into the countdown and get this match started. Toss was won by the Chambal Challengers and the first raid will happen from Marimuthu Selvam. Kajal Rana actually is there in the center. And today I was really shocked to listen to one official's name. The timekeeper, her name is Gudia. Yeah, Gudia. I was thinking, tell me your original name. She says, no, that is there in my Aadhaar card. I want to see that. I said, yeah, nice. You know, generally Gudia is a nickname, isn't it? So a doll, that's what it means. But Marimuthu Selvam, नवीन बिल्कुल वैसा ही उनका कार्य भी है और बड़ी वहाँ पर हंसमुख मिजाज है उनका और साथ ही साथ उनसे पूछा गया आप कौन से स्टेट से हैं, कहाँ से, तो उन्होंने बताया वो झारखंड से हैं और वो कभी कभार टीज बड़ा करती हैं और आपके बारे में उन्होंने कहा था कि नवीन शौरी को स्विमिंग पूल में बुलाइए और उनसे मैं कहूँगी कि आप अंडर वाटर मेरा इंटरव्यू लीजिए. Yeah, that will be interesting. That will be nice. I understand the naughty side of Gudia there. But Uday Kumar Parthe, he can't get naughty today at all. He has to be on top of his game. And now Yelumale Murthy will not be tested as Santosh Srinivasan right there. And the discussion that I had with Rajaram, I'll tell you that. And this is Vasant Murugan. First time in the Yuva Kabaddi series. He's making his presence felt. He's a Chennai lad. He and Santosh Srinivasan are very, very close friends. They know each other from 3.5-4 months. They've traveled together nicely. And I'll tell you what, Arshit, he comes in from a fisherman's family. Running at touch as he got the big fish of Sanskar. No, he's not. Goes back empty-handed. And he loves to go out there fishing with his parents to put that net across, get a lot of fish. And of course, being in that ECR zone of Chennai towards the, of course, the, the Arabian Sea side and even, the Bay of Bengal side, that gives in a lot of water. That's a mix-up. Sanskar Mishra, no mix-up here. The cover combination, see, this is why I said they are the best. It comes across right cover properly. And Nesamani's got him. वाह, क्या अटैक आया यहाँ पर, पूरी तरह से एक शानदार अटैक यहाँ पर आपको आता हुआ नजर आया. राइट कवर थे या फिर राइट कॉर्नर. एक बार फिर से देखते हैं मनी कंदन और नेसामनी वहां पर मौजूद थे. एक बहुत ही अच्छा टैकल और कल इन्होंने 6 टैकल पॉइंट अपनी टीम के लिए प्राप्त किए थे. इनकी जर्सी नंबर भी 66 का है. आज क्या शानदार शुरुआत की है यहाँ पर. नवीन तारीफ कर रही होगी संस्कार मिश्रा को, पहली बड़ी रेड में वहां पर शिकार बनाना, एक अच्छा कार्य यहाँ पर करना. बट अब 2 और टाई रेड है और सूर्या सेल्वम इस रेड पर होंगे. सूर्या सेल्वम अपना फुटवर्क अच्छा करते हैं, बॉक लाइन के आसपास अभी तक खेले, इंतजार करेंगे. चंबल चैलेंजर्स के डिफेंस उनके ऊपर टूट पड़े. एम को भी इस बार आए थे. दोनों ही टीमों के राइट कवर ने पहला अंक अपनी टीम के लिए निर्धारित किया है. हमें रेडर्स वर्सेस रेडर्स के मुकाबले की उम्मीद थी, बट ये कवर्स वर्सेस कवर्स का मुकाबला हो सकता है.
He wanted to turn towards that right side of the lobby, but the problem there was he turned into Gopi. That's been the problem. And before he could turn, Lakan came along there. Wonderful support. Yes, Gopi will get the point, but nice that the ankles were taken care by Lakan. But look at that. I really had that discussion with Rajaram today in the lunch, as Manikandan Sudalamani, Manikandan Nesamani, both are there in the covers combination, as they have to actually stand holding each other's hand. We have seen few Tamil teams, or rather every Tamil Nadu team, doing the same mistake. They hold the hands of a raider and stand there. And Rajamani today, Rajaram there today told me that I will try and see if there is no raider out there to be standing in the covers. I'll try and make sure that it happens, because even he's gone and seen all the visuals and all the videos for his reference. He's also actually understood that the raider will be tiring up when you're standing in a chain with the defender, as Vasant will go back after a second empty raid for himself. So I was asking him, why do you do that? They said, no, if there is a raider who's standing in the defender's position with the hands in the cover position, that allows the raider to actually go out there and support the defender. I said the support is not coming. When the support does not come, you're giving away points. Once Mudaliar comes in, kicks, does not get it. See, as a right cover now, Nesamani goes back so properly, isn't it? Nesamani, when you are standing with a raider, he does not go back and you give away a point. या बिल्कुल आपने सही कहा नवीन, और एक अच्छी चर्चाजनक विषय वहां पर आपने किया है। और यहां देखते हैं कि क्या पहला अंक एस मरिमुथु सेल्वम को रेड में मिलेगा। दोनों ही टीमों के कवर्स के चलते वहां पर पहला पॉइंट मिला है। अब आराम से शुरुआत की है यहां पर, और बिल्कुल नेक टू नेक फाइट की हम इस मुकाबले में उम्मीद करते हैं। सूर्य सेल्वम होंगे, रेहान शेख वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर हैं, हैंड टच करने का प्रयास, क्या किक लगा सकते हैं एस मरिमुथु सेल्वम रेहान शेख की तरफ, एंकल होल्ड टीज कीजिए रेहान शेख को लगातार। अभी तक मुझे लग रहा था कि पेशेंस होल्ड करके रखा है रेहान शेख ने, बट इस बार बहुत ही कमजोर एंकल होल्ड के लिए चले गए थे वहां पर। Pradeep Yadav also was not happy. He showed, what is happening there. All that initial moments of making sure Rehan Sheikh got confused completely. Same footwork, 2-3 times he was provoking Rehan Sheikh. There, once, twice, and thrice he goes for it. And that is why Marimuthu Selvam is such a thinking raider. Sanskar Mishra, he had to come in for a do-or-die raid. There was no other goal, no point yet for the top second raider. They give him the bonus. It's a very good strategy. They have seen the match against the Palani Tuskers, the Nilgiri Nats. They know Sanskar Mishra can take the bonus and go back. That's okay. We will not give you touch points. Wow, that's a wonderful, wonderful strategy. क्या तारीफ करनी होगी यहाँ पर, बहुत ही अच्छी तरह से डू और डायरेक्ट में सिर्फ बोनस दिया, टच पॉइंट वहाँ पर कोई भी डाई पर गए नहीं, क्योंकि संस्कार मिश्रा के अधिकतर पॉइंट्स जब भी आते हैं ना, जब आप उन पर अटैक करने जाते हैं और फिर वहां से एस्केप रूट को ढूंढ लेते हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। एक बार फिर से दुर्गेश साहू पता ही नहीं चला कि क्या करने जा रहे हैं। कवर्स अटैक कर सकता था, थोड़ा सा पीछे ज्यादा डिफेंसिव हुआ और इतनी देर में वसंत ने आके दुर्गेश साहू को टच किया। And also the next raid, of course, once Mudaliar, where he will be actually going ahead and making sure that the defense, now see, right cover, standing with Surya Selvam. I wonder why, because see, Manikandan Sudalamani is left out alone as a defender. Now when you are 7 on the mat, why should you stand with the raider in your hand? Rajaram also said, I completely agree that whatever points you have discussed with me is the right points, and I am also not big fan of that. But the problem the players have is they don't have the understanding. Now, if you don't have the understanding, you are here in the biggest stage of your Kabaddi series, and I don't want to see Manikandan combination covers breaking their chain and standing with the raider. I understand Surya Selvam can come in for the support, which is good, but you are tiring Surya Selvam. When he goes for the raid, is almost at only 60% of the energy. Now, still, watch this. Now, I don't understand this. Sudaramani is standing in the chain with the raider, with the Surya Selvam, and Nesamani is left alone. What is Nesamani's work? Nesamani's got all the time in the world to rest. That's it. He is just useless as a defender. Watch him. No position whatsoever. या बिल्कुल सही कहा नवीन आपने। और वहां पर मणिकंदन नेसामनी जैसा डिफेंडर वहां पर सिर्फ थोड़ी देर आराम करने के लिए खड़ा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, कोई उनका वहां पर यूज नहीं था। और रेडर क्यों वहां पर कवर पर हैं? यहाँ देखते हैं कि क्या एस्केप रूट ढूंढ पाएंगे। जी नहीं, अच्छा टैकल वहां पर आया, थोड़ा ज्यादा अंदर घुस गए थे। चक्रव्यूह सा उसके पश्चात बना, जो लोअर बॉडी का अच्छा टेक किया वहां पर एक डिफेंडर ने किया, उसके बाद ये शिकार बना।
Vansh Madaliar came in with the second line of defense. The only problem there for Marimuthu was he did not turn. He turned the pages on that defender who came in, but Vansh Madaliar and Gopi. Second and third line of defense to stop the captain of Nilgiri Knights. Sanskar Mishra, he needs points. He's not got a touch point yet. Only one bonus point in a do-or-die raid. And this defense is being intelligent. They are not playing a high line defense against the top second raider of the summer edition. I think this also will be an empty raid. He will go back empty-handed. तो आज संस्कार मिश्रा के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा एग्जामिनेशन उनके लिए होने वाला है कि कैसे वो अपनी स्किल्स का प्रॉपर यूज करेंगे। क्या वो अटैक करने जाएंगे राइट कवर पर हैंड स्ट्रेच करते हुए, क्योंकि आज नीलगिरी नाइट्स का डिफेंस उस पर अटैक करने के लिए नहीं देख रहा है। सिर्फ बोनस भी वहाँ पे हमने डू और डाई रेड में उन्हें चुराते हुए देखा है। तो आज इस सिचुएशन से कैसे उभर कर आएंगे, बट अभी 4-3 का स्कोर है। इस बार वसंत आएंगे, बोनस बड़ा आसान सा दिया, बहुत बड़ा गैप था नवीन अगर आप देखें तो कवर्स और कॉर्नर्स में। I think they wanted to set a trap, but because it was Gopi, he did not go in. And that's the first point for Vasant in this Yuva Kabaddi series' history as a bonus point. Vansh Mudaliar has been thrown into the grinder. He's a very good raider, but he has to get in deep now. There is a bonus opportunity. Elumalai Murthy has to watch out for the lobby, and kick comes in. Wow! Vansh Mudaliar has got 2 points. Wonderful escape. बहुत ही अच्छा, और लॉबी का भी उतना ही अच्छा उपयोग किया यहाँ पर। हाफ ए लैंड किया था उन्होंने लॉबी की तरफ और बहुत अच्छी किक लगाई। उसके बाद एलुमलई वहां पर गए थे पकड़ने, चौपर जाकर वो किक लगी। मणिकंदन वहां पर आए थे राइट कवर से अटैक करने, सूर्या उनके साथ थे। और नवीन फिर से वो पॉइंट समझ आता है ना, इस परफेक्ट फ्रेम में पता चला कि आपको वैसा सपोर्ट नहीं मिल सकता है। जब वो राइट इन से दौड़ते हुए अगर आएंगे तो वो सपोर्ट आपको कवर पर नहीं मिल सकता है, और सूर्या से आप एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हो सपोर्ट की। Because as a raider, he will not come in. See the same problem with the chain. But look at Chambal Challengers. They have 2 defenders in the chain and the covers. That is why they are good. And how did you get the first point, Nilgiri Knights? When you had your covers in the chain. When you had Manigandan combination in the chain, you got the point. After that, yeah, now I understand, because there is no another defender, you had to stand in the chain. But there, Surya Selvam attempts the ankle hold first. And then the support from Elumalai Murthy comes in. out. Brilliant. 1 point Nilgiri Knights. संतोष यहाँ पर देखिए, उदय कुमार ने शायद थोड़ा सा प्रयास किया था कि किक लगाने की कोशिश करें, बट वो आधी किक को वहां पर, ये देखिए अच्छा प्रयास। सूर्या सेल्वम वहां पर लेफ्ट इन से पहले अटैक करने गए, उसके बाद बहुत ही अच्छी दोनों एंकल्स पर टाइप लगाई इस मणिकंदन ने, और संतोष से तुरंत वहां पर साथ आता है। अच्छा असिस्ट करते हैं वहां पर है संतोष। 6-5 नवीन, तो जैसे नेक टू नेक मुकाबले की हमें उम्मीद थी वैसा ही मुकाबला शुरू हुआ, बट रेडर्स कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर। वंश ने पिछली रेड में जरूर 2 पॉइंट प्राप्त किए थे चंबल चैलेंजर्स के लिए, बट रेडर्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। डिफेंस दोनों ही टीमों का अच्छा खेला है। Vasant should watch out for Sanskar Mishra. Surprise attacks today. Gopi Mailapalli has been fabulous. Right cover dash. Brilliant. Gopi today has been a good defender. वाओ, ब्रिलियंट वहां पर राइट कवर से आके पूरी तरह से एंगल को उन्होंने कट किया, ये देखिएगा, और लॉबी का इस्तेमाल करने ही जा रहे थे और चेन में गए नवीन। दोनों जो कवर्स के टैकल आए ना, लखन लाल की मैं तारीफ करना चाहूंगा। इससे पहले शायद हमें वहां पर नजर आते थे और दूसरे डिफेंडर वो चेन नहीं बन पाती थी, और यहाँ पर लखन लाल जो है लोअर बॉडी का टेक केयर करने जा रहे हैं जब एम गोपी वहां पर जा रहे हैं। अनिकेत गायनंदे थे जो वहां खेला करते थे अमूमन। Yeah, instead of Aniket, Lakhan today has got a chance and he's utilized it nicely. See, again, I just go back and stress out my point once again. If you don't have the defender standing in the chain, you will not get the tackle points. But look at this. Gopi standing with the defender is getting points. Lakhan and Gopi, fabulous. Sanskar Mishra in the right end, and Vansh shifted his position as well. Now watch out, Marimuthu Selvam. There can be Gopi. Oh my God! 2 points. He overran the raider. He was good, but he was very, very good at this occasion. That's all. जी हाँ, और चेन की बात करें तो इस बार वो चेन टूटी थी, ज्यादा आगे की तरफ रन कर गए थे एम गोपी, और ओवर रन करते हुए लखन लाल भी उसके पश्चात अच्छी तरह से नहीं कर पाए थे कि चेन पहले छोड़ दी थी। दोनों ही टीमें वहां पर अच्छे क्रम के साथ जाना चाहते थे, बट एस मरीमुत्तु के सेल्वम की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने अपने अपर बॉडी को पहले नीचे किया, फिर पूरी तरह से ऊपर किया, जिससे कि एम गोपी उनके अपर बॉडी पर अटैक नहीं कर पाए। तो साथ साथ अब 6 गाउस यहाँ पर नीलगिरी नाइट्स के पक्ष में नजर आएगा। वन चैंप पिछली बार लेफ्ट कॉर्नर पर उन्होंने किक लगाई थी, क्या अब इस बार वंश एलुमलई की तरफ फिर से जाएंगे या फिर इंतजार करेंगे? I don't understand why is Elumalai Murthy not being tested by Sanskar Mishra or even Vansh Mudaliar. They need to understand that Velavan Muruganandan, the trusted left corner, is not around. Now, I want to understand how much energy Surya Selvam has.
He's had all that energy been burned out in the defensive lines. How much of energy does he's got to get the touch point? I wonder not. He's gone in deep, tries the toe touch on Sanskar. Sanskar is very intelligent. He will not let you touch his toes. He will track back and also holds on to Durgesh Kumar. Beautiful work. And again, there was a touch attempted on that left in. Does not get it. See, he's tired. He's tiring out. He's huffing and puffing out. या क्योंकि इस रेट में भी बहुत उनका फुटवर्क नजर आया और कवर पर आप जब अमूमन खेलते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर भी आपको आगे पीछे अटेंटिव रहना होता है और उसके पश्चात रेड लगाना। टू और टाई रेड है। क्या ये पावरफुल डैश यहां पर आया है या फिर थ्रू दी एयर बोनस प्लस 1 पॉइंट उधर लेकर जाएंगे? I think it's a 2-pointer raid. That's what Kajal says. No bonus. It was attempted by that very trusted right corner, Santosh Srinivasan. And the dash. Oh my God, Sudalamani. Manigandan Sudalamani, they could have revived something. They could have challenged that one if they had to. But no. They said, again, see, the dash was not proper because it was not a chain dash. Simple. Kicks. Lakan for the first time has been attacked by Marimuthu. बहुत अच्छी बैकिंग यहाँ पर, बहुत ही अच्छी किक यहाँ पर नजर आई। थोड़ा पीछे की तरफ गए, एक अच्छी बैकिंग लगाई। राइट कवर को लग रहा था कि क्या उनकी तरफ आ रहे हैं, पर ये देखिए अनप्रेडिक्टेबल मूव है यहाँ पर इस खिलाड़ी का और ये इनकी एक्सीलेंस है। बट नवीन अब तारीफ करनी पड़ेगी उदय कुमार पार्थे की 2 और टाई रेट की परसेंटेज पर। पिछली 2 और टाई रेट में 2 पॉइंट लेकर आए तो कहीं ना कहीं चंबल चैलेंजर्स के लिए पिछले कुछ मैचेस में ये 2 और टाई स्पेशलिस्ट बने हैं। Yeah, the first one, of course, once also getting 2 points, and now Uday Kumar Parthe. Once Mudaliar got it there from that left flank, and then Uday getting on that right flank of the defense. But yeah, very nice to see that Sanskar is allowing the youngsters to go out there and raid. Yeah, Santosh Subramani will be thinking of that ankle hold, the failed ankle attempt. Marimuthu Selvam today has been very cautious. He's not been that extravagant raider that he's always been. He's not gone in too deep. He's not tried too much because he knows the covers are working very, very well today. Especially Gopi Mailapalli. And he's got a running bonus. ये तो बोनस थोड़ा सा मुझे लगा चंबल चैलेंजर्स ने दिया है यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ। और कहाँ पर बोनस चुराया, बिल्कुल मुझे लगा सेंटर ऑफ द मैच, थोड़ा इनकी पोजीशन के आसपास वहाँ पर वो बोनस चुराया। तो कभी कभार ओवर डिफेंसिव भी होना, आज चंबल चैलेंजर्स चाहता है कि डिफेंस में वो गलती ना करे। तो ये साफ नजर आ रहा है और हम साफ रूबरू हो रहे हैं उनके इस प्लान से कि चंबल चैलेंजर्स की जो अनसक्सेसफुल टैकल्स थे वो बहुत ज्यादा थे और आज वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। बट संस्कार मिश्रा क्यों एल्लू मलई की तरफ नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा आज मेरे सोच के विपरीत है। We set that up contest nicely. Sanskar Mishra had a nice opportunity to go out there for the left corner. Inexperienced Elumalai Murthy. He's not going there. I wonder what is his plan. Maybe he's thinking of the second half to come out there and attack the left corner. But he's allowing Elumalai Murthy to settle down. The more number of time a defender spends on the mat, he will be growing in confidence. And that is what we did not want. Another do-or-die raid here for Uday Kumar. Now, the problem there is no proper right corner, but there is Manigandan Sulamani is there. He is generally the right cover, playing on that right corner. Defense of 5. Elumalai Murthy attempts this first ankle hold along with Surya Selvam, and that is a proper ankle hold on the tackle for Elumalai. जी हाँ, तो चंबल चैलेंजर्स के विरुद्ध बहुत अच्छा चैलेंज पेश किया नीलगिरी नाइट्स ने। बिल्कुल लोअर बॉडी पर अटैक किया, एंकल होल्ड किया, जैसे उन्होंने टर्न किया था और अच्छी ग्रिप वहां पर बनाई थी। और जब तक एक अच्छी शुरुआत के पश्चात एलुमलई भी वहां पर अटैक कर गए थे, डाइव लगा गए थे। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन इनकी पोजीशन से और ये अच्छा भी है ना, अगर आप रेडर को इन पर रखेंगे और अगर वो अच्छी भी है एंकल होल्ड की स्किल्स में, जैसे हमने दुर्गेश कुमार को ही देखा है, वो एंकल होल्ड की स्किल में अच्छे हैं, तो वहां पर वो रहते हैं और कोशिश करते हैं मौका भी जब मिलता है। यहाँ वो बैक किक लगाने का प्रयास था संस्कार मिश्रा पे, जरूर एक घुमंगस किक थी बट नहीं बचा पाए वहां पर और नहीं टच कर पाए। Watch out our support staff. Of course, I know it's raining here and that dripping of water will always be cleaned very, very quickly. So, but watch out when a raider is coming back. You need to be quick out there. It's raining from the morning here in the Chambal Vihar Indoor Stadium. I think it started around 8:30, 9 a.m. in the morning, and it has not taken any break, as I said. Now he's come back there. Santosh Srinivasan on that right corner once. Just checks everything and he'll have to go back. It's been a very cautious raiding unit for both the sides. This is one interesting way. Surya Selvam after a long time comes into raid and in a do-or-die raid.
जी आप देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो मैसूरू में ड्रिजल हो रहा है, क्या वो मूसलाधार प्रदर्शन यहाँ पर आपको नीलगिरी नाइट्स के लिए सूर्या सेल्वम की तरफ से नजर आएगा। दुर्गेश साहू अपने आप को पीछे नहीं रख पाए और बहुत अच्छी बात की सूर्या सेल्वम जो प्लान के साथ आए थे कि राइट कॉर्नर पर अटैक करना है, डीप गए थे, इंतजार नहीं किया था डिफेंस का और दुर्गेश साहू को बाहर करते हुए। जर्सी नंबर 4 आउट। रेड। Important point for Nilgiri Knights. Oh, Gopi Mailapalli is coming because of his confidence in the defense. He's got the opportunity there. Can he be intelligent and go back? Because he do not want to reduce men on the court. There is Sanskar Mishra. Yeah, nice. He will not try to get in too deep. It's good that he'll have to go back in time. That's very good thinking. But he's been impressive today as a defender for the first time. बहुत ही अच्छी यहाँ पर क्रम आज एम गोपी का रहा है, पर इस बार एज ए डिफेंडर 4 के हाउस में मौजूद रहेंगे। कोई चेन वहाँ पर है नहीं लेफ्ट फ्लैंक पर, अकेले वहाँ पर रेहान शेख खड़े हैं लेफ्ट कॉर्नर पर, अमूमन रेहान शेख खेला करते हैं। एम गोपी वहाँ पर है बट एसमर सेल्वम ज़्यादा अंदर जाने का प्रयास करेंगे नहीं और पहली मर्तबा नीलगिरी नाइट्स के पक्ष में आपको 2 पॉइंटर की लीड नजर आएगी। Tries a kick, he's got it against Sanskar Mishra. He was trying it from a couple of raids ago. This time he's successful. बहुत अच्छी किक यहाँ पर और संस्कार मिश्रा इस बार बिल्कुल एंड लाइन पर वहां पर खड़े थे, राइट एंड पर वो एक बहुत अच्छी किक थी। नवीन, रेड। I'm wondering why is Sanskar not going for the ankle holds, Rashid. He's forgotten that completely, not even a single attempt. And they are now in a big spot of bother. Gopi Mailapalli has to at least attempt a bonus. And this is a do-or-die raid where all the pressure will be on him. And the dash, has it been strong enough? No chain tackle from the cover defense. That's it. Single defender going for it. And the point is given away. वाह, तो आज एम गोपी क्या मैजिकल वहां पर अपनी टीम के लिए प्रदर्शन करें। कहीं ना कहीं लेफ्ट कवर फिर से अटैक करने गए। हम पार्टनरशिप की बात की थी, एक बहुत अच्छा प्रश्न था वहां पर ऋचा पटेल का, पर इस बार वो पार्टनरशिप में नहीं गए थे, सोलो वहां पर टैकल के लिए गए थे और पार्टनरशिप की हम बात करते हैं, यहाँ पर एक पार्टनरशिप दिखाई गई है। तो नवीन इस बार ठीक है ना, क्योंकि पिछली बार हमें दोनों ही डिफेंडर एक तरफ नजर आए थे, एम गोपी और रेहान शेख, और इधर संस्कार और वंश दोनों रेडर्स थे। Yeah, this is a nice chain because there is a raider, that's fine. Because and it's also a right raider. So being on the right corner and right in is very good. But what was that? Ankle hold attempted and Gopi today has come out like a man on a mission. Oh, out. Not even a single tackle has gone wrong. This time comes in for the support at the right time. जी हाँ, प्रदीप यादव साहब थोड़ा सा हाथ तो शहंशाह के अमिताभ बच्चन की तरह था, बट रेहान शेख अटैक करने गए और एसमरी मुत्तु सेल्वम ने उन्हें तो खींच लिया था, बट एम गोपी शुरुआत से आए और अच्छे बात वहां पर किया जो अपने की मिशन पर नजर आ रहे हैं कि आज कोई गलती मुझे नहीं करनी है, टैकल्स को यहाँ पर बरकरार रखना है। 12-11 नेक टू नेक ब्रेथलेस फिनिश की हम उम्मीद करते हैं। मैच नंबर 82 हाफ टाइम का स्कोर 9 रेड पॉइंट 7 रेड पॉइंट चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में, 3 टैकल पॉइंट 4 टैकल पॉइंट्स यहाँ चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में। छोटा सा ब्रेक, वापस मिलते हैं आप सभी के साथ। Welcome back on the high pointers. If you see Sanskar Mishra, he's yet to arrive in this match. But the man who's not arrived the entire survival and the booster run has arrived today. We didn't even speak about him in the pre-show, and Gopi Mailapalli has made sure we speak about him in the commentary. Wonderful works today in the defense. And I think the most number of defenses coming from it, as the Vansh Mudaliar got that do-or-die raid, couple of points. But the defense of Nilgiri Knights here and there were good. But the defense of the Chambal Challengers, especially the covers of Gopi Mailapalli and Lakan, been excellent today, Harshit.
जी हाँ, बहुत ही अच्छा आज क्रम यहाँ पर नजर आया। उदय कुमार पार्थे की 2 पॉइंट रेट थी और रेट में थोड़ा सा चंबल चैलेंजर्स संस्कार मिश्रा को अभी तक शांत रखा है टीम ने नीलगिरी नाइट्स के, बट कहीं ना कहीं उदय और वंश ने समय समय पर पॉइंट लिए रेट्स में। पर दोनों ही टीमों की डिफेंस में पॉइंट आपको कम नजर आते हैं, पर दोनों ही टीमों का डिफेंस ने गलतियां भी वहां पर कम की है। पहला हाफ बिल्कुल ऐसी ही कहानी रहा, 12-11 सिर्फ 1 पॉइंट की लीड नीलगिरी नाइट्स के पास है और पहला हाफ अब जैसे ही समाप्त हुआ है दूसरे हाफ के बहुत ही ज्यादा रोमांचकारी प्रदर्शन की तरफ हम सभी अग्रसर हो चुके हैं। Yes, Kajal Rana. She gives the go ahead. Uday has been very, very good. I really want to know if there is something wrong with Sanskar Mishra. He was seen holding his fingers, he was seen holding his toes, and also not attempting any ankle holds. He's been quiet. He's been very, very quiet. And I really wanted him to attack Elumalai Murthy. Never happened. Not even a single time he's attacked him. And he's not on the mat. He has to be revived because of that wonderful back kick of Surya Selvam. So they are starting the second half without their captain and without their lead raider. And you know what? See, Vasant Murugan Arshid, he's slowly coming. Not, achieved too many things in his first match. And he's not tried to do too many things out of his comfort zone. He's coming, he's smoothly trying to settle in with the team. बहुत ज्यादा ओवर ट्रैक करने का प्रयास वहां पर किया नहीं और ये अच्छी सोच यहाँ पर रही है और इसी मैच में यही आवश्यकता है यहाँ पर कि आप समय के अनुसार वहां पर प्रदर्शित करते हुए नजर आए और अच्छा किया है। 2 रेड पॉइंट्स उनके खाते में है और वंश वहां पर मौजूद मिलेंगे आपको। वंश ने भी उतना ही प्रयास किया नवीन, इसलिए मैंने शुरुआती शायद में बात की थी। अजय मारवी फिनिश्ड प्रोडक्ट नजर आते हैं मुझे और बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने कई सुपर 10s भी टीम के लिए बनाए। तो क्या वंश को मौका मिल रहा है, एक अच्छी बात है। या तो ये हो सकता है कि अजय मारवी को आप आने वाले राउंड्स के लिए तैयार कर रहे हैं, वंश को यहाँ मौका देना चाहते हैं क्योंकि आने वाले राउंड्स में आप मौका नहीं दे पाएंगे बाकी खिलाड़ियों को। Yeah, correct. That's also true. But as a raider, especially in Kabaddi, if you don't play and if you keep resting for a long time, you don't have the momentum. Do a raid. Uday Kumar should watch out not to step into the lobby without a touch on the defender. Santosh Srinivasan. Oh, wanted to go, but then got back. But the weak ankle hold attempt from the left end. Rajaram is angry. That's the first time I've seen him angry. 2 points. लकी मैस्कॉट मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर अब तो, क्योंकि सूर्य सेल्वम एक बार फिर से शायद इनकी पोजीशन से वो अटैक करने गए थे, हाफ हार्टेड अटैक, और तुरंत एलुमलाई ने भी वहां पर टाइम लगाई। उदय बिल्कुल इनका डुआ डायरेक्ट का जो स्पेशल डाटा है वो लगातार उदय यहाँ पर हो रहा है, पर जब एक और डुआ डायरेक्ट आई है अब देखते हैं वसंत होंगी इनकी कहीं ना कहीं परीक्षा है नवीन। Absolutely. This is his second duo direct. Anti-blocks Gopi and reaches the midline. Brilliant work. I think this is a super raid. 3 point. Oh yes. Oh, he's not hurt himself. I think it's a super raid. First super raid for Vasant in Yuva Kabaddi series. जी हाँ, 2 और टाई रेड। यहाँ पर प्रेशर वसंत पे था बट एम गोपी एक बार फिर से अटैक करने आए और अच्छा इस्तेमाल किया, एंटी ब्लॉक बहुत अच्छा किया और किसी की भी ग्रिप बनी नहीं थी वहां पर। और एम गोपी की एक आदत रहती है कि वो बड़ी जल्दी एंटी क्रॉस हो जाते हैं, ये हमने कल के मुकाबलों में भी देखा था नवीन। He's still rubbing on his left eye. Vasant, Surya Selvam asks, are you okay? He says, I'm fine. And Uday Kumar Parthe comes in again. Santosh Srinivasan. 2 raiders in the chain, which is okay. See, when you have 2 raiders, you should have probably sent in out a right raider there, probably, and I think he's complaining of that water dripping. We'll have to clean that out. Sanskar Mishra was there. Yeah. Why did he go to raid? I hope everything is okay with Sanskar Mishra. I really don't understand why he is not been there 100%. Back kick, right dash. Good work. Very good work. I think Durgesh Sahu's first point. 1 point. जी हाँ, इस बार दुर्गेश साहू ने प्रॉपर वर्क किया, पूरी तरह से कॉर्नर के तौर पर एंगल को कट करना नवीन टफ कार्य होता है, बट इस बार उन्होंने डबल हटेड नहीं गए, पूरी तरह से यहाँ पर गए और 2 खिलाड़ियों का साथ आने के बाद डैश कर दिया यहाँ पर। वंश का भी बहुत अच्छा साथ। Substitution. And the timing of the dash also was brilliant, because on a back kick you don't have that sort of a momentum when you're going in as a raider to substitute. Durgesh Sahu, just now you got a tackle point and have been substituted. Ah, that is not right. I wonder what is Pradeep Yadav thinking. Abhiram K, he comes in. Right, that is interesting. Why is Durgesh Sahu being taken off? I think if not a small injury or a niggle, he should be on the mat for me. As Vansh Mudaliar also supported him very nicely. Now, speaking about that back kick, when you are going for the back kick and
before that raid, already Vasant had a little bit of a scrape on his left eye, near his left eyes, on that eyelid. So he was still worrying about that. He went for the back kick against Sanskar, and then there was no momentum to go for it. But why is Durgesh taken off? या दुर्गेश क्यों बाहर गए हैं और अभिराम का क्या उपयोग है नवीन, ये भी थोड़ा समझना होगा क्योंकि राइट कॉर्नर भी नहीं खेल रहे हैं, वो राइट इन पर है, राइट कॉर्नर पर अभी एम गोपी वहां पर मौजूद है। तो ये यहाँ पर देखना होगा किस तरह से प्रदर्शन दिखला पाएंगे। 15-14 का स्कोर है, एक एक पॉइंट ले, बहुत कभी इस तरफ एक पॉइंट लीड बढ़ जाती है, कभी चंबल की तरफ बढ़ जाती है। उदय का अभी तक डू और डाई में प्रदर्शन अच्छा रहा है, क्या इस बार 4 या 5 क्या उसमें अच्छा कर पाएंगे? Looks tough. Looks tough. As I said, it looks tough because he was stagnant. There was no footwork, and his initial Get out. movements itself 1 point, suggested Nilgiri that it's going to be tough for Uday this time. नवीन क्या थोड़ी सी शायद रॉन्ग साइड में यहाँ पर टर्न भी कर लिया था, क्या लॉबी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उपयोग करना चाहिए था, क्योंकि वहां तो डिफेंडर ही डिफेंडर आपको मिलेंगे। इसका अर्थ तो ये कि वो चक्रव्यूह में बस फंस जाना और निकल ना पाना। Yeah, and wonderful work from Nesamani, isn't it? Once again, coming out there. And how many times you can keep relying on Surya Selvam? See, even now as a raider, he's come into support. But I don't understand what is there with the Nilgiri Knights. And I've also said to Rajaram that, listen, until it works, it's okay. But when you start giving away points, then you'll have to really think about it. He also agreed to the same point. He said, I will talk to my guys. Let's see if the defenders hold hands and stand. But it's not to be seen. It's not to be seen at all. Vansh Mudaliar has a big responsibility today. Once again, Manikandan, Nesamani and Sudalamani, yeah, now they are standing in the covers. Now they have the cover combination right. Hope they're listening to us because they need that covers of the defense to be together. Apart from anything else, that's the biggest factor. And see, that is why Vansh also does not have that running hand touch. Yeah. He knows that there is no raider in the chain. He goes back empty-handed. That's interesting. And now to order it. With all the energy that's spent on the defense, I was thinking Surya, it will be very difficult to get a touch point for him today. अच्छा, सूर्या सेल्वा बहुत ज्यादा रेड इन्होंने ऑलरेडी लगाई है, ज्यादा रेड में सक्सेसफुल होने। संस्कार मिश्रा की इस बार बहुत बड़ी चूक थी नवीन, डबल हार्टेडली गए और ऐसा लगा कि सिर्फ एक गिव अवे पॉइंट दे दिया। Why? If you needed a break, you should have just asked your coach to get you substituted. He wanted to go for the block, which never ever we have seen Sanskar Mishra blocking. Of course, he's got the very surprising double ankle holds. Never a block. And now I'll tell you what. Vansh Mudaliar will run towards the covers because there is Surya Selvam. See, Manikandan Sudarmani has been left alone. Only Nesamani in the covers. Vansh can run. He does run. See, look at that. Live example if Nilgiri Knights can go back and watch this match with our commentary. See, when there was the cover combination, he did not run. Yeah. When there was a raid, he's standing there. He ran, attempted a bonus. Of course, he didn't get a point, but he ran, at least made that try. See, that's what happens. जब वहां पर अतिरिक्त प्रयास किया था और इससे पहले जब मैं नजर आया था कोई भी रेडर वहां पर नहीं था, तो वो ज्यादा अंदर जाने का उन्होंने प्रयास किया ही नहीं। यहाँ देखते हैं डू और डाई तो नहीं है, बट सुपर टैकल का मौका जरूर होगा। एस मरिमुत्तु सेल्वम ज्यादा अंदर नहीं गए। वंश एक बार सुने, अब ये इन्हें डू और डाई रेड है, अब क्या राइट फ्लैंक की तरफ जाएंगे? इस बार फिर से वही कॉम्बिनेशन है। I am thinking Vansh will get a point. For sure, look at that. How much of a license he's got to go towards the covers. Because there are no two covers. As a left cover, you can turn your body around when a right raider is having a running hand touch. Wanted to jump over, no change, but still wrong route of escape. Raider out. 1 point, Nilgiri Knights. Previous time on a door raid, he used the lobby. He should have done that. या बिल्कुल इस बार वही क्रम हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, और आज ये देखिए उनके पास मौका था, पहले देख लिया था उन्होंने राइट कवर को आते हुए देखते हुए। और इसलिए नवीन हम बात करते हैं ना, रेडर के रिफ्लेक्स एक्शन बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ हमने पहले ही देखा वंश को कि उन्होंने देख लिया राइट कवर को आते हुए, बट वो स्लाइड पॉज की मुझे क्या स्किल की तरफ जाना चाहिए, वहां पर वो परेशान हुए। और जैसा कि हमने बताया कि मैसूर में लगातार वर्षा हो रही है, मूसलाधार, तो हल्के से आपको पैचेस भी नजर आ रहे हैं। बट यहाँ Raw. Nice jump on the back jump. Oh, watch out, Vasant. I think we will take a little bit of a breather and ask those guys to clean up that water marking. Gopi Mailipalli has been very, very good on the tackle points today. One raid point also for him. Tries the toe touch on Santosh Srinivasan. It's not easy. And can he run towards the cover? See, even Gopi can run towards the cover so easily because there is no two covers. And Manikandan Sudamani has left standing alone. Why a defender needs to rest in a tackle situation? या वहां पर
ये वही बात हुई कि हमारे पास सब कुछ है, बट हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। डू और डायरेक्ट इस बार होगी, वसंत मुर्गा ने यहाँ पर आएंगे और एम गोपी, और दूसरी तरफ यहाँ पर एक डिफेंडर शायद अभी राम है। यहाँ टैकल की पार की गई थी, दुर्गेश साहू को बाहर बुलाकर अभिराम को बुलाया गया था। ये अच्छा टैकल होता, पर ये जंप बहुत अच्छी थी नवीन। Marvelous jump. I really don't understand what has gone wrong with Durgesh Sahu. Only if he's not injured. Abhiram K did not do anything there. And Vasant, my God, his first arrival. Arshit, it's been impressive. He's been silent. He's been that sort of a silent killer, a fisherman who knows when to catch the fish. When there is silence in the sea, as Santosh Srinivasan once again is being foxed with the ankle hold. या नवीन, और एक दफे स्कोर जो था ना चंबल चैलेंजर्स के पक्ष में था, बोनस का भी अच्छा प्रयास किया था। क्या बोनस वहां पर चुराया था? दिया जरूर नहीं दिया गया है, क्योंकि हाथ शायद तुरंत वहां पर आ गया था संतोष का। पर नवीन 13-12 स्कोर था, चंबल चैलेंजर्स 1 पॉइंट के लीड में था। उसके बाद नीलगिरी नाइट्स को 10 अंक मिले हैं और सिर्फ 1 अंक मिला है ऑल आउट से पहले। अब ऑल आउट के बाद 1 अंक और टच पॉइंट मिला है, बट संस्कार मिश्रा का रेड पर न जाना नवीन थोड़ा सा चिंताजनक विषय है। Yeah, that is a bit of a big worry. But lovely running and touch on the right corner. He got that momentum to go towards Abhiram K once again. Where is Durgesh Sahu? After a dash, wonderful dash is being taken off by Pradeep Yadav, and look at that. He does not even go back in time, Abhiram. I think there should be an injury. Apart from an injury, I don't see anything that is taking off Durgesh Sahu. और चलिए, दुर्गेश साहू और एक जावेद खान के डिफेंडर हो सकते हैं जो अंदर आ सकते हैं। जरूर अभिराम को वहां पर ट्राई कराया जा रहा है। यहाँ पर उदय कुमार पाते ने पूरी तरह से लेफ्ट हैंड को अपने स्ट्रेच करने का प्रयास किया। एलोमलाई की तरफ फिर से गए हैं, पर दोनों बार सक्सेसफुल नहीं हुए नवीन। तीनों बार, I'll tell you why. Again, I'm still reiterating the same point. I might sound like a man who's always repeating the same point, but unless and until I get it right with the covers, yeah, it will not be a one that you need to believe on. See, the only problem there is the Raiders standing in their covers with Manikandan Nesamani. That is not what it has to be. That is why Uday's got so much opportunity to run. Imagine if there was two defenders standing in the cover chain. Will the Raider take that risk of running like that? No. And see, once directly goes to the covers. He just says hi. He just says, okay, hi Manikandan Nesamani, how are you? Because Sudalamani is standing there alone. And Sudalamani does not even bother to come around behind for the dash. See, it's so far. Right hand running at touch. Got Santosh Srinivasan. Over. This defense strategy is not working. जी नवीन, जिस लगातार रणनीति पर हम बात कर रहे हैं, इस बार वंश ने पूरी तरह से उस को कार्य किया। वो पीछे भय नहीं था उन्हें कि पीछे से कोई टैश आने वाला है 2 डिफेंडर्स का, और जब वो भय नहीं होता है तो जरूर हम फ्लॉलेस देखते हैं रेडर को, और अच्छा लॉबी का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा हैंड टच उन्होंने किया। No, to create that fear, there's nobody there to create that fear also, isn't it? Surya Selvam will not come for the dash. He's a Raider and he knows it. Brilliant work from Vansh. And now Surya Selvam, only 3 raid points. Now tell me, what is his work? He's a Raider, right? He's the third Raider of the team. What has he done? I know Nilgiri Knights are leading, but that's okay. But why are they leading? Because Sanskar Mishra is out of form. It's not because their Raiders or Nilgiri Knights have done really well. It's because Sanskar Mishra is not raiding, or something has been a little bit of a bother for that top second Raider of the series. That has been the problem. That is the only reason why Nilgiri Knights are leading. जी हाँ, इस बार जरूर राइट कॉर्नर से अटैक आता हुआ। इस बार मणिकंदन राइट कॉर्नर पर मौजूद थे, क्योंकि उदय कुमार बिल्कुल वहां पर स्टैचू जैसे खड़े हो गए थे, तो मणिकंदन ने उस अपॉर्चुनिटी को बनाया और क्रिएट किया अपने पक्ष में। ये देखिए, this is the second time, isn't it? Statue. Yeah, there we go. No movement, no footwork at all as we go into the strategic timeout. I really want to listen to what Pradeep Yadav is trying to say, and then we will also listen to Raja Ram. बाप का माँ का तू कैसे कर रहा है मेरे भाई? तू सुन, तू चेंज कर ले। Oh, Pradeep Yadav is unhappy. நீ தொடக்க சொல்லுடா. ஏய், அங்க தண்ணி விழுந்தா தொடக்க சொல்லு. மாதிரி நீ பண்ணல தொடக்க சொல்லுங்க. ப்ளே பண்ணுங்க. Okay. They are more concerned of the water dropping on that mat because of the rains. There's a little bit of openness in that roof. Yeah, there we go. Our support staff doing that. But Pradeep Yadav was totally unhappy. He wanted Sanskar Mishra to try out 1 or 2 raids. Sanskar Mishra was not happy, saying my shoulder is really hurting.
And Pradeep Yadav, the way he went back is like, okay, I've given up on this match. शायद कहा था कि या तो फिर बाहर आ जाइए, तो देखते हैं कि वो सब्स्टिट्यूशन क्या बड़ी जल्दी देखने को यहाँ पर मिल सकता है। बट 23-16 7 अंकों की लीड यहाँ पर है। बट नवीन, बिल्कुल हमने चंबल चैलेंजर्स की बात की, दूसरे हाफ में इनके पास सिर्फ एक टैकल पॉइंट आया, वो दुर्गेश साहू ने प्राप्त किया था, तो टैकल में भी पॉइंट्स यहाँ पर आए नहीं है। अब 2 और टाई रेड है, क्या अभिराम की तरफ फिर से जाने का प्रयास कर सकते हैं एस्मरुवुतु सेल्वम, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और एक अच्छा गेम प्लान वहां से हो सकता है। Yeah, and the substitution has happened. Sanskar Mishra is not on the mat. Ajay Maravi has come in and he's running out of time. 7, 6, 5. Gopi Mailapalli, come on! You were so good in the tackle. Why take the pressure when it's a do or die raid? This is consistency and experience. जी नवीन, और ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर एम गोपी, क्या टैकल था ये, ऐसा लगा कि वो फ्रॉक जंप की तरफ बिल्कुल आसानी के साथ उछलते हुए निकल गए बस। See, when you went back, stay back. When you are going back and then there is no momentum, why should you come forward to attack the raider? Gopi Mailapalli, unbelievable. After Ajay Maravi's raid, I think this is going to be an empty raid. If we can go back to that replay once again on that do-or-die raid, how Marimuthu got his point in the last 3 seconds of that raid. Quickly, if we can go back to that, unsuccessful tackle attempt. Previous operator Ram, I'm sure he's up and awake because he did not eat curd rice in the afternoon, so he will not be sleeping, and I'm sure it's raining a lot. But if you see what Gopi did, he just went back first. Of course, this is going to be an empty raid by Vasant Murugan. If we can line that replay up, and of course, we will see what the biggest error was. As a defender, when you try to go back, stay back. Why should you attempt and change your mind to come front again? That was not there. या नवीन, वंडरफुल पॉइंट, क्योंकि वहां पर एम गोपी पीछे गए और पीछे Time out. जाते ही वहां पर Chambal उन्होंने Challengers. अटैक करने के लिए चले गए। अभी यहाँ पर एक अच्छा टाइम आउट मांगा गया है। அது முடிச்சுட்டு இன்னும் 5 நிமிஷம் 9 பாயிண்ட் லீல் இருக்கோம். Substitution. ஒண்ணுமே ப்ராப்ளம் இல்லை. எப்படி ரேடு நீங்க தொடக்க சொல்லிக்க, உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா மேட்டே ப்ராப்ளம். ரைட் ரைட் சூர்யா நீ போனாலும் தான், ஏன்னா இங்க ஸ்லிப் ஆகுது. வசந்துக்கு இருந்தா என்னப்பா அதான் கண்டிப்பா அவனுக்கு ஸ்கோர் வேணும், கண்டிப்பா ரெடி ஆடுவான், நிச்சயமா அவன் வந்து ஆடுவான், நமக்கு ஆடுவான். அப்போ அதனால சூர்யா மணி மணி அண்டன். Right, that is what Rajaram said. Is go out there and keep raiding. If you can go out there and keep on raiding, that will be good. And we do not want additional points. Just don't stop the momentum. That's what he said. Very nice point. जी नवीन, क्योंकि यहाँ पे 9 पॉइंट्स के पीछे यहाँ पर चंबल चैलेंजर्स है, तो उन्हें कुछ काम करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तो देखिए, क्योंकि वंश की थोड़ी सी जो पेल थी वहां पर उस तरह काम नहीं आ पाई, इसलिए एक आसान सा टैकल वहां से लेफ्ट कवर से आते हुए उन्होंने कर लिया, सोलो टैकल। Yeah. Vansh was blinded. And he did not expect Elumalai Murthy to come in from that left corner, because he knew that there was no left cover, because it was Surya Selvam, a raider. So a raider will not come for the dash, okay, but you have allowed the left corner to come in for the dash. Right, Elumalai Murthy. But I think even here, the problem will be for the Chambal Challengers, as they will be losing a lot of men. See, this is the problem. When we were asked that question, is Chambal Challengers doing well without Durgesh Kumar? Yeah. Remember that question at the starting of the match. Substitution, Chambal Again, Challengers. Ashwin and Two in. Vikas having a nice chat out 7 there. out. And right, Javed Red. Khan comes in place of Rehan Sheikh. No, come on. Rehan Sheikh should have been there, and Javed Khan should have been on the right corner. I wonder, this is a forced change. Like in tennis, we have something called forced errors and unforced errors. I think Pradeep Yadav, the coach of Chambal Challengers, has been today forced to send Javed Khan on the raid, because Sanskar Mishra is completely not feeling okay. क्या नवीन, और जावेद खान को आते ही रेड कराना, मुझे लग रहा था कि अजय मारवी वहां पर मौजूद हैं। जावेद खान को एज ए डिफेंडर बुलाया गया है, अजय मारवी बिल्कुल उनके इनकी पोजीशन के पास खड़े थे, और जब उन्हें पता है कि आने वाली जो रेड 2 और डायरेक्ट है, तो क्यों जावेद खान ने अपने 20 सेकंड वहां वेस्ट किए हैं। सिर्फ 3 मिनट से कम का समय शेष बचा है, और अब तो शायद प्रदीप जी साहब ने जैसे गिव अवे कर दिया था ना मैच, मुझे लग रहा है कि यहाँ चंबल चैलेंजर्स ने गिव अवे कर दिया है मैच। अभी तक तीसरी बार बाहर गए हैं। Jersey number 33 I don't out. like this. I really don't like this sort of an attitude, especially from a team that has done so well, Arshid. Really. Now, when you know that you can put up that fight, why surrender to the defeat so early? It's still 3 minutes, around 2 minutes 30 seconds in the match. Anything can happen. At least try for 1 point. Ajay Maravi goes in. Elumalai Murthy has been good. And lucky for him, Elumalai, really, that Sanskar Mishra has not gone out there and attacked him. I wonder
which side of the bed he got upon. And you know what also? Oh, there you go. The Chola Virins are all set for their match later in the day. SP Raja looks very confident. जी मोहनदास वहाँ पर मौजूद थे, अय्यप्पन वहाँ पर मौजूद थे और अय्यप्पन हमेशा इनके चेहरे को जब भी हम देखेंगे ना मुस्कुरा देंगे, किसी को भी देखते ही कोई उत्तर दे ना दे आपको ये प्रश्न का, ये सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। बट आज मुस्कुराने का मौका चंबल चैलेंजर्स के दर्शकों को नहीं मिला है, क्योंकि दूसरे हाफ में नवीन पहले हाफ की समाप्ति में लगभग शायद 11 अंक थे चंबल चैलेंजर्स के, दूसरे हाफ में सिर्फ 5 पॉइंट मिले हैं और 15 अंक मिले हैं नीलगिरी नाइट्स को। तो पूरे मैच अच्छे से होल्ड करके रखा है जावेद खान, एक और लेफ्ट रेडर यहाँ पर 2 और टाई रेड के लिए आए हैं। I will call him a left corner defender. He's not a left raider. He's raiding from the left. And look at that. Even a defender can attack when you don't have a chain. And he's crossed it because there is no chain on the covers. Rajaram and Manikandan combination. Everybody, you may be winning this match. You are winning it because Sanskar Mishra is out of form. See, a raider and a defender in the chain. This is what happens. यार इसके चलते आप सूर्या का बेस्ट उपयोग ना रेड में ले पा रहे हैं और डिफेंस में मुझे लग रहा है कि हाँ आपने वेस्ट किया है। और मणिकंदन को वहां पर इस तरह से साइड में रखना जरूर उनका उपयोग है, नहीं इससे अच्छा आप एक और अतिरिक्त रेडर बुला सकते हैं और वहां ट्राई करा सकते हैं किसी से। Rajaram will not talk much about this match. ठीक है, और नहीं तो फिर उधर जाके मारना है बस, है ना, लेकिन प्रयास ये करना है कि फंसना नहीं है। Oh. Right, he's I think filling a little bit of a confidence to Javed Khan, saying you need to go attack there but don't get tackled down. Can the Chambal Challengers try for 1 point in this match? Yeah. They can really do this. If they can go out there and get at least 4 or 5 points or at least 3 points from here on in, the difference will be correct. At least 3 points. Just get it to 7. That's enough. And you can do it under 1 minute of the match in Kabaddi. That is possible. What are you trying to do, Javed Khan? यहाँ सिर्फ वहाँ पर डू और डायरेक्ट जो है इन्फ्लिक्ट करने के लिए वहाँ पर चंबल चैलेंजर्स के खिलाड़ी गए। जावेद बड़ी जल्दी के साथ वापस आया और इसलिए आज प्लानलेस लगे। और आज एक वो स्कीपर नवीन जो प्रश्न था ना कि दुर्गेश कुमार के एब्सेंस में क्या अच्छा करे, वो कोई प्रश्न वहाँ पर इसलिए भी मैटर नहीं करता क्योंकि दुर्गेश के साथ ये टीम गुड से बेटर बनेगी। और संस्कार मिश्रा आज एज ए कैप्टन भी नहीं चल पाए। यहाँ टैकल में दूसरे हाफ में सिर्फ दूसरा पॉइंट आया है चंबल चैलेंजर्स के लिए। Go quickly, raid. Get a point. Chambal Challengers, you will get 1 point out of this match. It's very, very important as one team will be eliminated at the end of the booster round. Try to gauge 1 point. You're on 19 now. Make it 20. Keep the difference to 7. 7 or under 7, you will definitely get that 1 point. It's really important. Go out there, get a touch point. Go for it, Uday Kumar Parthe. Go for the running hand touch on that left flank. Alumare Murthy is not being tested at all. And there is... of course, only 4 defenders. If he can stay out there, the entire raiding unit, that'll be nice. No, tries his best, comes back. I think they will not even get 1 point out of this match. That's the end of the match as Kajal gives the final whistle out. जी हाँ, यहाँ पर वो एक पॉइंट लिए जाना चाहिए था, एटलीस्ट वो प्रयास कर लेना चाहिए था उदय कुमार को। ज्यादा ये होता कि 8 पॉइंट से हारते, यहाँ पर 9 पॉइंट से हारते और यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास थी कि एक मुकाबला से आप 1 पॉइंट प्राप्त कर सकते थे। बट यही वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस नजर आया संस्कार मिश्रा का, न चलना, ज्यादा रेज उनकी न लगाना, शायद थोड़ा सा शोल्डर में दिक्कत वहां पर थी। बट ये मुकाबला नीलगिरी नाइट्स ने जीता है और इनकी तीसरी भिड़ंत में नीलगिरी नाइट्स ने कहा कि ठीक है, अभी तक 2 मुकाबले टाई रहेंगे बट इस बार चंबल चैलेंजर्स को हार का स्वाद चखना पड़ेगा। And in the second half, they've got only 7 points. Can you believe this? Sanskar Mishra, if is very much okay on the health-wise, I don't understand that something is bothering him for sure. Either the shoulder or either the ankle. Something was really off for Sanskar Mishra today, and that is why this weak performance from Chambal Challengers. Nobody expected this one. Yes, Uday did well, but Vasant was impressive. His first appearance in the Yuva Kabaddi series. He's slightly come out there and slowly got into the fold of things. Kesavan Raja had to give away his position. The man who's been so very good in the raiding department. Vansh Mudaliar and Uday, yeah, they tried, but they kept on trying. Nothing there on the achievement lines. Just trying does not work, and especially against a side which still remains unbeaten on the booster round. Nilgiri Knights have got 5 out of 5, and they will once again concrete their place in the points table of the top of the order.
पूरी तरह से यहाँ पर ठोस प्रदर्शन आज नजर आया नीलगिरी नाइट्स की तरफ से और 5 मुकाबले लगातार 5वीं जीत यहाँ पर आई है और यहाँ पर कहना चाहेंगे अगर सर्वाइवल टू को भी मिला है तो लगातार बहुत सारी जीतों के साथ आगे बढ़ रहा है नीलगिरी नाइट्स। 18 रेड पॉइंट्स और 18 रेड पॉइंट्स बता रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है। एक टैकल पॉइंट जरूर अतिरिक्त है नीलगिरी नाइट्स के पास। Arshit, exactly. Now see this, 18 on the raid points and 13, that's it. No Sanskar Mishra with Sanskar Mishra. That is a problem. If Sanskar Mishra would have been there, he himself would have got 13 raid points. Isn't it? The whole team of Chambal Challengers has got 13 raid points and Sanskar Mishra got only 1 bonus point today. That has been the major problem. That has been the major difference. Nothing to choose between the defenders there. It was all okay, but Sanskar Mishra absent on the match today generally, and that is why Chambal Challengers have given it away on this match. And Marimuthu Selvam once again gets the best raider. जी एक और बार मारीमुथु सेल्वम वहां पर रेड पॉइंट में 7 उन्होंने प्राप्त किए और बिल्कुल आपने सही कहा नवीन, क्योंकि पिछले 3-4 मैचेस का एवरेज संस्कार मिश्रा का 13 पॉइंट का है एक मैच में, इससे ज्यादा वो प्राप्त करते हैं। बट एस मारीमुथु सेल्वम ने आज 15 रेज लगाई, 7 रेड पॉइंट प्राप्त किए, 46% उनकी रेड स्ट्राइक रेट थी, बट अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर रहा है। All right, in the commentary box, you know, as Akshay Desai comes and tells us, well, with Mohan Gowda also, that this is that first match in the booster round without reviews. Right. So Rambir Singh is totally free for the match as Manikandan Nesamani gets the best defender only for 3 tackle points. So that shows the defenders, yeah, they played a very safe game. And if Sanskar Mishra would have been there, that would have been really nice. And as I said, concreted their place at the top of the points table, Nilgiri Knights. 5 victories out of 5 matches. But this match, they won because Sanskar Mishra was not there. Not because of their own skills or anything. Of course, Vasant was good. But yeah, we have that cover combination where they are not standing in the chain. But that has to be rectified. Hope they rectified very nicely. But going ahead, we have another match also coming up. Chambal Challengers, their second loss in the booster round. As the next match will be the Palani Tuskers against the Aravali Arrows at 5:30. We'll slip on a short break and come back for the post-match presentation. And then we'll see if Palani Tuskers can go out there and win their first match in the booster round. Stay tuned. I'm Navin Chaudhary. तो संस्कार मिश्रा को उस प्रकार से फॉर्म में रहना कहीं ना कहीं मददगार रहा है। नीलगिरी नाइट्स के लिए लगातार 5वीं जीत यहां पर बूस्टर राउंड में प्राप्त कर लिया और बूस्ट अप कर चुके हैं अपने प्रदर्शन को। आइए आप सभी का स्वागत करते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑफ मैच नंबर 82 ऑफ युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन 2023। इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे विद थैंकिंग ऑल आवर पार्टनर्स, आवर ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैनकोड, फैंटेसी पार्टनर ड्रीम 11, आवर फिजियो पार्टनर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटलिटी पार्टनर जिंजर होटल और हेल्थ केयर पार्टनर रामा कृष्णा स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और आज हमारे साथ
प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं गुड़िया जी, टेक्निकल ऑफिशियल ऑफ YKS। आपका स्वागत करते हैं द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। आइए बात करें इस मुकाबले के। तो नीलगिरी नाइट्स और चंबल चैलेंजर्स, इनके जब जब मुकाबले हुए दोनों बार पहले टाई पर समाप्त हुए, बट इस बार नीलगिरी ने कहा कि चलिए अपर हैंड उनका रहेगा और इस बार मुकाबले को जीतेंगे। और संस्कार का न उस प्रकार के फॉर्म में रहना कहीं ना कहीं मदद कर रहा है नीलगिरी नाइट्स के लिए। आइए सीधा चलेंगे अवार्ड्स की तरफ। शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रेडर ऑफ द मैच के साथ, जो रहेंगे नीलगिरी नाइट्स के साथ एक बार पुनः द बैकबोन एस्मरी मुत्तु सेल्वम, जिनके खाते में आज 7 रेड पॉइंट्स थे। Now the time for the best defender of the match, और वो रहेंगे नीलगिरी नाइट्स के one more time the consecutive performer and the very consistent performer Manikandan Nisamani for his brilliant 3 tackle points. Let's have a look. And now the time for the Kabaddi कमाल of the match। और जब लग रहा था कि क्या ड्रॉ और डाई रेड में चंबल चैलेंजर्स का डिफेंस पूरी तरह से यहां पर धर लेगा इस रेडर को, वहां से इन्होंने लीड की शुरुआत कराई और ये पाएंगे शानदार सुपर रेड के चलते ये अवार्ड वो हैं वसंत मुर्गन। So that's all from the post match presentation of match number 82. Thank you so much for joining us.
Hello. Yeah, it is right. Yuva Series Kabaddi in 2022, 2023 select. Good evening. Match number 83, Palni Tuskers will be locking horns with Aravali Arrows. Both of them are on the 6th and the 7th points of the points table. A warm welcome, good evening, welcome back on Fan Code. Match number 83, Palni Tuskers, who haven't won even a match in the booster round, will be locking horns with Aravali Arrows, who just won a match in this booster round. So let's get back to Harshit, who will be waiting for the teams to be entered onto the mat. Over to you, Harshit.
या दोनों ही टीमें यहां पर एक हार के सशक्त प्रदर्शन से परेशान होकर जीत ढूंढ रही हैं। तो आइए सबसे पहले उस टीम को बुलाएंगे जिनका कोहराम मचा था सर्वाइवल 1 और सर्वाइवल 2 में। क्या बूस्टर राउंड में इस मैच में पहली प्राप्त कर पाएंगी वो विक्ट्री? बुलाने जा रहे हैं द टीम ऑफ टस्कर्स पालनी टस्कर्स। After yesterday's win performance, will Aravali be seen in their best game? Here we are inviting Aravali Arrows. Yeah, match 83 is all set to rule the match here. Both the teams, they are looking for a consistent performance in the booster round. Palni Tuskers and Aravali Arrows. The referees are marching in. So they are the key persons on the match to give the verdict on time. And this is the starting 7 of Palni Tuskers here. Jai Surya Nagarajan, who has been a phenomenal raider, raiding from both the sides. And Ram Kumar will be supporting him along with Stuart Singh. In the cupboards, we have Ayanathan and also Manikandan on the left cover. On the right corner, we have Purushothaman and left corner is Ajay Mutaya. And Mukesh Kannan, Viduthalai and Tamilarasan, Naveen and Purushothaman. Will they get a chance to get onto the mat if they have a substitution round? जी राधिका, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे इन सभी खिलाड़ियों को थोड़ा सा मौका मिलेगा ये जरूर आपको आते हुए नजर आएंगे। बट मुकेश कन्नन को आज शुरुआती 7 में नहीं रखा गया है। राम कुमार को यहाँ पर अंदर बुलाया गया है। अरावली एरोज की बात करते हैं, राजेंद्र भाकर अभी लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पर नजर आ रहे हैं। क्या आज प्रॉपर लेफ्ट कॉर्नर खेलेंगे? इन पे हम बहुत सारी बात करेंगे। रोहित बेनीवाल, प्रेम बड़ू, ब्रजपाल सिंह गौड़, चेतन चौधरी, साहिल बागड़ा और अंकित जाट यहाँ पर ये पोजीशंस पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। हरिओम चौधरी, प्रदीप सिंह, रोहित पंचोली, देव गुजर और नवप्रीत सिंह। नवप्रीत सिंह बहुत दिनों से खेल नहीं रहे। राधिका, नवप्रीत सिंह अच्छे रेडर हैं और रेड में जरूर अरावली एरोज बहुत लैग कर रहा है। पिछले मैच में तो सिर्फ वहां पर 14 पॉइंट्स कुल मिलाकर टीम को मिले थे, पर टॉप 3 रेडर्स में आज संस्कार मिश्रा को सिर्फ 1 बोनस पॉइंट मिला है, उसके अलावा कुछ नहीं। राधिका Absolutely, but then he's been consistent, just one match here and there, but then he's been taking the lead raider position for the squad. Top 3 defenders here we see is Lokesh Gosalia still sticking on to the first spot with 56 tackle and Ankit Jat with 52 and Rajendra Baka with 42. So 2 of them will be shining on the mat now, Harshit. जी आज ये दोनों नजर आएंगे और राजेंद्र भाकर से आप अपना शानदार खेल का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। और राधिका, शायद हम दोनों ही वहां पर कॉम्बॉक्स में थे पिछले अरावली वाले मैच में, जहां पर राजेंद्र भाकर कवर वहां पर खेल रहे थे। और चलिए अब बात करते हैं राम कुमार आज यहाँ पर टीम में मौजूद हुए। जय सूर्या नागराजन भी होंगे। चेतन चौधरी ने टॉस जीता है, अरावली एरोज के पक्ष में गिरा है और टॉस जीतकर लेफ्ट हैंड साइड की कोर्ट पर वो नजर आएंगे। तो पहली रेड या तो जय सूर्या नागराजन या फिर राम कुमार लगाएंगे। राधिका, I think it should be Jai Surya because he is very calm and composed. So he knows this is the raider we are talking about, Jai Surya Nagarajan. 13 matches, 121 raid points. 84.6 is the raid strike rate. That speaks big volumes about this raider. जी और इनका 6 और 7 में, जब 6 और 7 का हाउस होता है तब इनकी और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं और भी ज्यादा इफिशिएंट इनका प्रदर्शन हो जाता है। बट आज एफओएसएन प्रदर्शन इस खिलाड़ी को दिखाना पड़ेगा। अंकित जाट 19 मुकाबलों में यहाँ पर 52 टैकल पॉइंट्स है और आज जयसूर्य नागराजन बनाम अंकित जाट डाइव्स बहुत अच्छा करते हैं। राधिका, हो सकता है कि इनकी डाइव जयसूर्य नागराजन पर क्या आज भारी पड़े, बट इन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत जरूरी है एज ए डिफेंडर। Absolutely, that's what we have seen it missing yesterday, but then today is a new day, new game, and Palni Tuskers so far, let's see their journey. 17 matches played, 11 wins, 3 losses, 3 ties. 64% is the win strike rate, but they haven't got best of the booster round.
जी हाँ, पलनी टस्कर्स बूस्टर राउंड थोड़ा सा अपोजिट वहां पर गया है। सर्वाइवल 1 सर्वाइवल 2 में तो इनके लिए बड़ी हार आई ही नहीं थी और यहाँ पर वो जीत नहीं आ रही है। तो कुछ टाई आए हैं, कुछ हार आई है। पिछले 5 मैच राधिका, पिछले 4 मैचेस तो ऐसे गए हैं जिसे भुला देने लायक रहे हैं पूरे। उससे पहले एक सर्वाइवल 2 में वहां पर जीत प्राप्त की थी, पर आज के अपने 5वें मैच में बूस्टर राउंड में जीत प्राप्त करेंगी, ये भी देखना अहम होगा। जयसूर्य नागराजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और मैं इंतजार कर रहा हूं कब वो प्रश्न आएगा राधिका। तो ये प्रश्न मैं पढ़ देता हूं जिसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। ब्रजपाल सिंह गौड़ हैज स्कोर्ड ओनली 8 points in the last 3 games, being the team's best raider and the 5th best raider of YK Summer Edition. Why are other raiders in Aravali give more chances to raid than him? बहुत अच्छा प्रश्न है राधिका, अभिनंदन ने पूछा है, आप इसका उत्तर दीजिए। Absolutely, they need to rotate. That was the right question. You have given, ample opportunities. You have been inconsistent in the last 3 matches. That means that there is a scope for new players to step in his place. यार राधिका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और हम इस प्रश्न का उत्तर कोशिश करेंगे कि थ्रू आउट द मैच लगातार देते रहें। बताइए अरावली एरोज की बात करते हैं। 20 मुकाबले 7 जीत उन्होंने प्राप्त की, 12 हार वहां पर आई है इनके लिए। एक टाई भी वहां पर खेला है, विन प्रतिशत 35 की है। और एक अच्छा प्रश्न था कि क्यों ब्रजपाल सिंह गौड़ को वहां पर रोटेशन जरूर कराया जा रहा है, बट राधिका शुरू में जैसे वो रेड लगाते हैं ना, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उस पूरे मैच में वो रेड ज्यादा लगाते नहीं है। और अरावली के लिए इसी के चलते पिछले 5 मैच की फॉर्म में सिर्फ एक जीत आई है। That's what, initial momentum is what drives that raider. In that case, do not send him in the initial phases. Send him only after the team sets in. Once the team gets a better score or they are in contact with the other team, then only you can initiate that raider. और एक और अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, has the coach change in Palani affected their team's performance in the booster round, or is it Sanjeevi's absence as he was the leader and main raider? Can Palani get their first win in the booster round today? मेरा आंसर जो तीसरा प्रश्न है उसके लिए हाँ है। It is both of them. Sanjeevi is a big name, and once he is in the match, it gives lot more confidence in the team as well. And also getting accompanied to the new coach, his strategies, his frame of mind would be a little difficult, but then I'm sure they will set back soon. And I'm sure they're facing Aravali Arrows. I think this is the day that they should get back. या तो चलिए अब सीधा चलते हैं काउंटडाउन की तरफ, उसके बाद बहुत सारे प्रश्नों के बहुत सारे उत्तर निकालेंगे हम इस मैच से। ओके, सो मैच नंबर 83 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पलनी टस्कर्स बनाम अरावली एरोज, और यहाँ पर हमारे साथ एम्पायर 2 मौजूद है, उनका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे हमारे लीडिंग रेफरी, और कोशिश करेंगे एक बार वो जर्सी वापस वो ऑन फ्रेम नजर आए। राधिका, क्या आप नेम पढ़ पाई थी? क्योंकि मुझे लगा कि मैं जब तक स्क्रीन पर देखता शायद वो नाम जा चुका था। No, I couldn't actually. And this is the right raider. And we speak about, maybe we thought, Jayasuri Nagarajan would come, but this is Stuart Singh who stepped in. या स्टुअर्ट सिंह से पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर भरोसा जताया गया है टीम की तरफ से। हमने कल भी इन्हें देखा, अब साहिल बागड़ा यहाँ पर होंगे। और राधिका, वो जो प्रश्न था ना अरावली एरोज ये पूछा गया था कि ब्रजपाल सिंह गौड़ टीम के बेस्ट रेडर हैं और युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन के टॉप 5 रेडर्स में इनका नाम आता है, तो क्यों उनसे ज्यादा रेड्स नहीं कराई जा रही है? साहिल बागड़ा के अंदर आना जरूर एक ये वजह है, और ब्रजपाल सिंह गौड़ भी थोड़े से डाउन इन कॉन्फिडेंस नजर आए, जैसा कि स्टैट्स भी वहां पर लिखा गया बहुत ही क्लियरली कि 3 मैच में सिर्फ 8 रेड पॉइंट्स मिले हैं उन्हें। तो ब्रजपाल सिंह गौड़ मुझे लगता है खुद ही खुद को रोक रहे हैं, अन्यथा अगर वो जाएं तो अपना एक रेड गेम दर्शा सकते हैं। Absolutely, he needs to play fearless, and this is the raider we're talking about. Jayasuri Nagarajan very silently does his job, and he can raid from both sides. And who has he taken? Rajendra Bakar. जी हाँ, बहुत अच्छी किक, और जयसूर्य नागराजन से बेहतर मैंने 6 या 7 क्या उसमें रेडर इस पूरे समर एडिशन में देखा नहीं। राधिका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत ही हार्ड किक्स वहां पर लगाते हैं, कुछ अच्छे स्विफ्ट टो टचेस करते हैं, हैंड टचेस करते हैं, और इनके पास आर्मरी में सब कुछ है। बट क्या ब्रजपाल सिंह गौड़ जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और इनके बारे में जब हमने एक फन इंटरव्यू किया था इनके साथ राधिका,
तो पता चला था इनके साथियों ने बताया कि बहुत ज़्यादा खेलते हैं, लगभग 365 दिन कबड्डी का होते हैं, तो ये मैचेस लगभग 340 दिन खेला करते हैं राधिका, यानी कि बहुत ही फिट है, ये पता चलता है। चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, गांव कस्बे गली, हर टूर्नामेंट में खेलना पसंद करते हैं। और क्या कभी कभी उनका ट्रक लोड ऑफ वर्क होता है, उससे आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते राधिका? It might not be because just a 40-minute match, Harshit, and they are used to playing such matches as well. You know, high intensity matches are definitely here we see at Yuva Kabaddi series. You know, that could be just a mental blockage for him. You know, he should just play free of mind. Then he will be able to play to his potential. तो राधिका ये जो थोड़ा सा चर्चा चल रहा है ना, क्योंकि आज हमने उसमें भी देखा ना, ग्राफिक्स में जब टीम लिस्ट आई थी, राम कुमार की वहां फोटो नहीं थी, और जो जर्सी नंबर हमें दिया गया है वो राम कुमार का जर्सी नंबर 14 है। अभी मैं देखता हूं कि क्या उनका उस जर्सी पर जर्सी नंबर 14 था, शायद नहीं था राधिका। I think, you know, all these things will come under the disciplinary actions. You know, wrong name or the wrong jersey number will also count. So that's the reason there's a small delay. You know, everything is being checked. जी हाँ, क्योंकि राम कुमार अरुमुगम यहाँ पर नाम टीम शीट में दिया गया था और वो जर्सी नंबर 14 था, और इसलिए वो कप्तान जब उनकी फोटो नहीं देखी तो मैं शायद सोचा था कि क्या ये कोई दूसरे राम कुमार है, पर जब हमें देखने मिला तो जी नहीं, ये वही राम कुमार है। तो इनका जर्सी नंबर 7 है, वो जरूर 14 लिखा गया था। इसे एक बार रेक्टिफाई करते हम, शायद यही रेफरी ने पूछा वहां पर कि आपका जर्सी नंबर हमें 14 दिया गया है, बट क्या आपने 7 लिखा है? तो क्या और कोई भी राम कुमार करके खिलाड़ी हैं राधिका पलनी की टीम में? I don't think so because no. When we look at the full team squad, there's nothing with a similar name. You know, talking about these kind of disciplinary things, Ayush, Harshit, you know, just concluded the Asian Championship. You know, there is one player called Sunil Kumar who did not get his visa on time. He just arrived to the Korean country a day late than the other team members, so he was not allowed to play though he was there full time. यार राधिका, और कप्तान के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया था। शायद मुझे लगता है सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उस खिलाड़ी के लिए वहां पर थी कि एज अ कैप्टन टीम इंडिया को लीड करना था। इतना पेनफुल होगा ना for his life. It would be one big lesson. You know, it's not his mistake though, but then that will be remembered by him, and seeing the team win a gold medal and he not being a part of it, it will be such painful situation. एब्सोल्युटली राधिका, बिल्कुल करेक्ट। पर चाहिए अगर हम टॉप पोजीशन पर कौन मौजूद है, तो पिछला मैच जीतकर नीलगिरी नाइट्स पांचों की पांचों जीत के साथ टॉप पर बिल्कुल मौजूद है। 28 पॉइंट्स हैं। पेरियार पैंथर्स आपको और नजर आएंगे, पर वो जीतेंगे तो भी कोई खतरा वहां पर नीलगिरी नाइट्स को अपनी टॉप पोजीशन से होगा नहीं। चंबल चैलेंजर्स पिछला मैच हारा राधिका, इससे पहले 2 टाई ऑलरेडी वो एक दूसरे के विरुद्ध खेल चुके थे, बट क्योंकि संस्कार मिश्रा नहीं खेले अच्छा और ज्यादा खेले ही नहीं, क्योंकि शोल्डर इंजरी थी और कोच चाहते थे कि आप ज्यादा ट्राई मत करो, तो वहां पर कहीं ना कहीं चंबल चैलेंजर्स हारा इस वजह से। Absolutely, but then Sanskar Mishra is a different raider altogether now, and this raider, you name it, he has a skill. He brings in so much variation in his attack, Harish. राधिका, इतना इजी मुझे लगा। जयसूर्या नागराजन को बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेफ्ट कवर पर क्या ब्रजपाल सिंह गौड़ मौजूद थे, यहाँ पर क्या कर रहे थे रोहित बेनीवाल, शायद वो भी मेरी समझ के परे था। और प्रेम भड़ू राधिका, सर्वाइवल 1 के बाद से मुझे वो प्रेम भड़ू नजर आए ही नहीं है। कल भी हमने देखा कि कितने सारे एरर्स उन्होंने किए, क्योंकि हम प्रेम भड़ू को जानते हैं एज अ लीथल डिफेंडर, एज अ पावर हाउस, बट पावर हाउस वर्सेस पावर हाउस में जयसूर्या नागराजन की पिछली बार जीत थी। Now only what happened, we have seen this with Gautam as well, Harshit. Once you lose the momentum, you lose your confidence as well. Please come. Especially for the defense, it's a very big task to come back in the right frame of mind. Palni Tusker challenge, no bonus. Our decision, bonus point. Please review. और क्योंकि वो शायद एक डू और टाई रही थी, पलनी टस्कर्स ने तुरंत कहा कि ये बोनस नहीं है। देखते हैं कि साहिल बागड़ा ने क्या पर बोनस चुराया, क्या बोनस लाइन कट रही थी, और जयसूर्या नागराजन की आंखें कहाँ हैं राधिका, ये भी देखिए। Absolutely, he was checking it. That's the reason he went for the review. He did cross the bonus line after the landing of the rear foot. या तो साहिल बागड़ा यहाँ पर, क्योंकि वैसे ही देखिए तंगी थोड़ी सी है ना, क्योंकि पॉइंट्स वहाँ पर आ नहीं रहे, और यहाँ पर भी अगर आपसे वो चूक हो जाए तो वो बड़ी गलती हो सकती है। सिर्फ 2 खिलाड़ी अरावली एरोज के पक्ष में रह जाएंगे। राधिका, क्या वो पक्का डू और डायरेक्ट थी? It should be, otherwise why would they review for a bonus, Harshit, at this point in time, just in 3 minutes of the match? Yeah. Yesterday as well, they have taken a review. No bonus. Review.
very early, and they had to face it big time after that. तो यही निर्णय आया है वहां पर। साहिल बागड़ा बाहर जा रहे हैं, इसका अर्थ यही था कि वो डू और टाई रेट थी। पलनी टेस्ट के खाते में रिव्यू भी गया है। अक्षय देसाई फिर से चेक ऑन करेंगे। Review successful, no bonus point. You have written your review. रिटेन और रिव्यू, और क्या एक और पॉइंट भी पलनी Raider टेस्ट के out. खाते में जाएगा? Raider out. रेडर आउट है Two जी, out है. बिल्कुल। Palni रेडर आउट, Tuskers. 1 पॉइंट पलनी टस्कर्स। Yeah, because it's a do or die raid. He did not get a point either by bonus or a touch. He had to warm the bench for a while, and no points whatsoever. Super tackle opportunity, and we thought about Jay Surya will play in 5 and 6. Now let's see if he will crack this defense in 2. जो आप देखते हैं एक तरफ चेतन चौधरी है, दूसरी तरफ अंकित जाट है। क्या अंकित जाट की डाइव आ सकती है इस कॉन्टेस्ट की? हमने वहां पर प्री शो में भी बात की थी और इस मैच की बड़ी शुरुआती क्षणों में भी बात की थी। जयसूर्या नागराजन मुझे लगता है कि एम्प्टी हैंडेड वहां पर वापस जाना चाहेंगे, और सोच भी अच्छी है क्योंकि दोनों डिफेंडर्स अभी अरावली एरोज के पक्ष में है, और दो डिफेंडर्स के विरुद्ध एक रेडर ज्यादा जाकर अटैक करने की कोशिश नहीं की। चाहेंगे ज्यादा एज अ रेडर उन्हें अटैक करने दे, और पहली 2 और डायरेक्ट पलनी टस्कर्स की आएगी, ये तय है। Absolutely. And I think, just before this raid, Jay Surya, he was doing a similar moment just, before Ankit Jat. One more moment, maybe Ankit Jat would have gone for a tackle. या बिल्कुल आपने सही करा दिया कि वो अंकित जाट के विरुद्ध बिल्कुल सेम तरीके से जा रहे थे। इस बार क्या अंकित जाट की दोनों neck hold Harshit. Neck hold Harshit. Let me have a check one more time. Aravali The replay. अधिक एक्सप्लेन कीजिएगा। Yeah, look at that. The momentum was broken by, Ankit Jat. But look at the support defender who went in. That was a proper, neck hold. या तो वो कहीं न कहीं वो थोड़ा सा अपने आप को चेतन चौधरी ने बचाया है रेफरीज की आंखों से। मैंने था नेक होल्ड जिस प्रकार का था, हो सकता था ग्रीन कार्ड बड़ी जल्दी उनकी तरफ आता, बट राजेंद्र बाकर का इंक्लूजन हुआ है और सुपर टैकल के साथ अरावली एरोज की शुरुआत हुई है। अब अंकित जाट कह रहे हैं कि बल्कि सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए क्योंकि 2 और टाई रेड होगी। क्या कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है? राधिका सब्स्टिट्यूशन नहीं है। राजेंद्र भाकर 2 और टाई रेड पर गए, अभी अंदर आए थे। Absolutely, that's what they are not in the right frame of mind. They are not even counting. What is the situation here? He's struggling to cross the box line here, and look at that. The moment he crossed the bonus line, the left cover came in with a block. Bonus Aravali Rose 1 point ये Palni देखिए Tuskers. बिल्कुल यहाँ पर वो जो अटैक्स हम देख रहे थे, यहाँ पर पलनी टस्कर्स पूरी तरह से राजेंद्र बाकर पे वो अटैक। And Jayasuriya Nagarajan do not do the similar footwork. This is a sweep out. यह एक अच्छी किक थी अंकित जाट पर। पिछली बार वहां पर आसपास फुटवर्क दिखाया था, इस बार अंकित जाट को किक किया। चेतन चौधरी वेज पर गए, बट वो थोड़ा सा कमजोर प्रयास था चेतन चौधरी का, क्योंकि जयसूर्या नागराजन जैसे रेडर के अगर आप डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं करेंगे तो वो रेडर बड़ी आसानी के साथ निकल जाएंगे। अंकित जाट ने फिर भी ठीक प्रयास किया, बट चेतन से और थोड़ा सा अटैकिंग मैं असिस्ट देखना चाह रहा था। पर 10-3 राधिका रावली एरोज के रेडर्स एक भी पॉइंट नहीं, और वाई ब्रजपाल सिंह गौड़ एज अ फर्स्ट रेडर नहीं खेल रहे हैं राधिका। I think he need to be given much more match pace because he is one of the top 5 raiders in the summer edition. You cannot break his confidence just like that. He is one among the top 5. That means he has the caliber or to be a full-time raider. Give him that space, give him more opportunity, because anyways the other raiders also have not been doing a great job. और रेडर्स देखिए वैसे बहुत अगर नहीं कर रहे हैं तो नवप्रीत नाम के एक और रेडर वहां पर मौजूद हैं आपकी टीम में जो एज सब्स्टिट्यूट बैठे हैं, तो उनका इंक्लूजन वहां पर हो सकता है। अब देखिए ब्रजपाल सिंह गौड़ खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा राधिका। यहाँ पर इन्हें वो खुद दिखाना पड़ेगा और खुद करना पड़ेगा कि मेरे अंदर वो स्किल्स है कि मैं बड़े से बड़े डिफेंस को बेट कर आ सकता हूँ। पैकिंग लगाने का प्रयास, और उसके लिए थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, डेयरिंग दिखानी पड़ेगी, थोड़े से 1-2 बोनस फेक अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। Now, if you look at his approach, Harshit, he is looking for some failed attempt from Palni Tuskers. He's not been in the attacking mode. He's just waiting for the opposite to attack him so that he escapes. और कल पलनी टस्कर्स ने यही डिफेंस में गलती संस्कार मिश्रा के विरुद्ध की थी और आज अच्छी नजर आ रही है, बट एटलीस्ट संस्कार मिश्रा वहां जा रहे थे, कभी कभार फेक बोनस का अटेम्प्ट कर रहे थे, कभी कभार बोनस चुरा कर ला रहे थे, तो वो अटैक करने पड़ेंगे। इस बार राम कुमार ने राजेंद्र भाकर के नाक के नीचे से बोनस चुरा लिया है। Exactly. What swift bonus that was, Harshit. Lovely one. And it's a do or die. Will they be able to get a first rate point here?
Finally he gets one. जी हाँ, साहिल वागड़ा आखिरकार वो पहला point, रेड Aravali पॉइंट Arrows। अरावली एरोज के लिए 8 मिनट के इंतजार के बाद Second आता हुआ number 2 अजय मुथैया इस बार टैकल इनिशिएट करने गए। ये देखिए एंकल होल्ड पर गए। राधिका कब गए? जब साहिल वागड़ा ने एटलीस्ट अंदर जाकर प्रयास किया। और पल्ली टस्कर्स का डिफेंस पिछले कई मैचेस में एरर प्रोन रहा है राधिका। And also the Raiders partly did not do in front of the left corner. He did in between the corner and the in position. That's why the angle wasn't there for the left corner. बिल्कुल, पर क्या परफेक्ट अटैक जय सूर्या नागराजन। ऐसा लगता है कि इन्हें एक्स्ट्रा सेकंड्स इनके पास है। कितना रूथलेस अंदाज में, कितने इजी अंदाज में यहाँ पर जाते हैं और अटैक करते हैं डिफेंडर्स को। किसे अटैक किया? ब्रजपाल सिंह गौड़ को अटैक किया। ब्रजपाल ने माना और ब्रजपाल अब इस बार बाहर जाएंगे। What a consistent player he is. You know, just small leaps and then an extension of the arm. And that's where, you know, you get the targeted points. और थोड़ा सा यहाँ पर कैजुअल भी मुझे ब्रजपाल नजर आए थे। साहिल वागड़ा होंगे इस बार। राइट कवर का अटैक, राइट कवर का अटैक, लेफ्ट कवर लोअर बॉडी पर गया। परफेक्ट कवर अटैक यहाँ पर। Yeah, this is what the Palni Tuskers we know of. So they are coming back in their true colors today. Lovely frontal block and the follow-through action by the support was phenomenal. Stuart Singh in a defensive fight, he doesn't need to do much, but then the defense was not good in retrieving back on time. तो आज ये जद्दोजहद यहाँ से जारी है, बट ये जद्दोजहद पूरी तरह से पलनी के पक्ष में जा रहे। स्टुअर्ट सिंह बहुत अच्छा रश किया, अंकित जाट की तरफ गए, अच्छा अटैक किया। राधिका अरावली एरोज, हम अगर टॉप 7-8 डिफेंडर्स में देखते हैं ना, तो पेरियार अरावली के डिफेंडर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। और अरावली के तो टॉप 3 में 2 डिफेंडर्स है ना, एक प्रेम बडू भी वहां पर आपको टॉप 10 में नजर आ जाएंगे। पर फिर क्यों बार बार इनका डिफेंस इतना वीक हो रहा है? Now this is what it is, you know, it's all about the combination, Harshit. It's just not about the defense. If the defense is not performing, it could be the reason that, you know, Raiders are not been performing as well. You know, once the Raiders get some point, the team would be able to defend the other team. But if the Raiders are not getting the points, then the defense will want to get those points, and in that case, you know, they might get and do those mistakes as well. या तो चलिए, रेडर्स तो पूरी तरह से यहाँ पर विपक्ष में गए। इस बार चेतन चौधरी का अटैक आया, बहुत लेट क्या, शायद थोड़े से यहाँ पर प्रेम बड़ू सपोर्ट के लिए गए थे। या तो पहले सपोर्ट के लिए जाना चाहिए था, या फिर वो पूरी तरह से चेतन को बाहर जाने देना चाहिए था। It's too casually they are playing Aravali Arrows here. You know, it's a super tackle opportunity. Just you would have cashed on that opportunity here. You know, just being too casual, and again, no substitution. Again, Rajendra Bakar comes in as a Raider. ये तो बड़ी मिस्टेक है। राजेश गुर्जर साहब एक खुद बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। हरियाणा फ्रेंचाइजी से हमने उन्हें फ्रेंचाइजी लीग में खेलते हुए देखा है। अभी भी स्वयं एक प्लेयर के तौर पर अच्छा करते हैं। वाई राजेंद्र भाकर सरेंडर रेड में वहां पर जा रहे हैं? क्यों नवप्रीत नहीं है राधिका? क्यों और कोई रेडर नहीं है? मुझे तो लगता है इस बार राजेंद्र भाकर ने बोनस का भी प्रयास नहीं किया। जय मुथैया दोनों थाइस पर गए। ये तो सेक्रीफाइस किया गया है राजेंद्र भाकर का। Absolutely, second all out in a row for Palni Tuskers, and that came in like 11.5 minutes of the game. And brilliant thigh hold. He was just waiting for the Raider to march into his wings. ये तो बाहों में जाना था राजेंद्र भाकर, और हम उनसे उम्मीदें भी यही लगाते हैं ना, क्योंकि वो डिफेंडर हैं। इस बार राम कुमार वहां पर होंगे, अटैक करने जाएंगे। बहुत बड़ा वहां पर गैप था राइट इन और लेफ्ट कवर, राइट कवर के बीच का, उसमें बिल्कुल आसानी के साथ राम कुमार ने बोनस चुराया। अब देखिए, राधिका इतनी बड़ी लीड पलनी टस्कर्स ने बना ली कि उन्हें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। Now I'll tell you, you know, yesterday me and Naveen has an you know, point to discuss where, you know, why, you know, one of the Raider is standing out and one of the defender is, you know, in the chain in the middle. So that's what we say. Normally, if it's a 3-member defense, you know, the centerman and the right cover and the left cover, if they stand in a row, the gaps would not be given, you know, available for the opponent Raiders for the bonus. Bonus point, please. TV umpire, Aravali Arrows challenge, bonus point. Our decision, no bonus. Please review. चलिए, वैसे ही दिन अभी तक उतना बेहतर गया नहीं। क्या बोनस में वहां पर मांग की है अरावली एरोज ने, उसमें क्या दिन बेहतर जाएगा? रेफरी यहाँ पर अक्षय देसाई नजर आए हैं। यहाँ देखते हैं क्या बोनस मिला है। फिर से बोनस लाइन कट रही है राधिका। सेम शायद जो मैं पहले नजर आया था। Exactly.
He did not, by the time he crossed the bonus line, the rear foot was already landed onto the mat. Review unsuccessful, no bonus point. Aravali Arrows, your use or no more use. ओके तो यहाँ पर अरावली एरोज ने वहाँ पर रिव्यू भी गवा दिया है। थोड़ा सा पूरी तरह समझ के बाहर रहा है प्रदर्शन अरावली एरोज का, जिस प्रकार से चोला वीरन्स के लिए भी सेम फेज गया था राधिका। चोला वीरन्स भी क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी शायद उनके सबके समझ के परे था। राम कुमार आएंगे राजेंद्र वाकर के नीचे, फिर से बोनस चुराने का प्रयास करेंगे, राइट कवर अटैक करने गए चेतन चौधरी, चलिए बाल बाल बचे हैं राम कुमार से यहाँ पर। Absolutely. Now, they need to have a shorter range, Aravali Arrows. They can't kill a maximum time on the opponent court without getting a point. Just crossing the balk line doesn't help at all. Do some quick raids and go back. Yeah, planless. यहाँ पर प्लानलेस रेड देखिए, बॉक लाइन के बाहर तो एक डिफेंडर राजेंद्र भाकर ने भी पैर रखा था। साहिल बागड़ा आप रेडर हैं और पल्ली टस्कर्स का जो लेफ्ट फ्लैंक है वो कमजोर है। तमिल रसन गलतियां करते हैं। ओह कितनी आसानी के साथ स्टुअर्ट सिंह गए हैं। मुझे लगता है क्या साहिल बागड़ा को वहां पर बड़ा आसान सा टच किया है साहिल ने, उसके बाद हाँ भी किया। And now that was a do or die raid. Why aren't they alert on the mat? Just being physically present doesn't help. ये सभी पॉइंट्स रेखांकित किए जा रहे हैं कि अरावली एरोज के हुआ क्या है यहाँ पर। ये एक ऐसी जो एक स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती थी, क्यों ये ऐसे विम्ड हो गई है, अचानक से सिकुड़ जाती है ना, जैसे बिल्कुल वैसा प्रदर्शन रहा है। और अब डू और डाई रेड देखिए, रोहित बेनीवाल क्या कुछ कमाल कर पाएंगे। एक लेफ्ट रेडर है, बड़ी आराम से गए हैं, यहाँ बोनस चुराने का क्या प्रयास करेंगे, टो टच करने का प्रयास करेंगे। गो एंड अटैक एटलीस्ट द लेफ्ट कवर वंस। लेफ्ट कवर पर जाकर हैंड टच का प्रयास कीजिए। क्या आप सिर्फ टू और डाई रेड में बोनस के ऊपर लगातार भरोसा जताएंगे? राधिका एक और टू और डाई रेड, किसी में भी हैंड टच का प्रयास नहीं, सिर्फ बोनस। इस बार चलिए खुशकिस्मती थी कि बोनस मिल गया। Absolutely, that is definitely not a wise, strategy in a play. But then Jayasuriya Nagaraj, look at his stance. His build is like a defender. He looks so strong, but then he is very agile as well, Harshit. The way he, breaks in between, he does not attack corner to corner. He just turns in between, gives that pause, turn and attack. He has lovely variation in his skills, Harshit. यार राधिका वेरिएशन, उनके पास जो मिश्रण है ना हर एक स्किल का, वो बहुत अच्छा है और बहुत ही यहाँ पर कामली, बहुत ही डिलीगेंट लगते हैं जब ये इस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं। अब ब्रजपाल सिंह गौर देखिए, राधिका अरावली एरोज के रेडर्स में वो डर है, वो अंदर जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। टच पॉइंट मुझे नहीं लगता आया है। ब्रजपाल सिंह गौर टर्निंग द पेजेस अराउंड करने की कोशिश थी, बट ब्रजपाल सिंह गौर बिल्कुल यहाँ पर इनका फॉर्म बहुत बड़े दुश्मन की तरह कार्य कर रहा है इनके लिए। It was a defensive error from Palni Tuskers, but then, look at the way, he took the wrong route to escape, Harshit. या हम बात करते हैं राइट रेडर, ऑलवेज उन्हें अपने राइट टर्न करना चाहिए लॉबी का इस्तेमाल करने के लिए। एक लेफ्ट रेडर को अपने लेफ्ट हैंड से वहां पर चूज करना चाहिए डायरेक्शन को, रूट को, क्योंकि वहां पर आप डिफेंडर नहीं पाते हैं। अगर आप इस तरह जाएंगे तो आप डिफेंडर्स का गुच्छा पाएंगे। और पलनी टस्कर्स का डिफेंस, राधिका पिछले मैच में डिफेंस में पॉइंट मिले ही नहीं थे, बहुत कम पॉइंट्स मिले थे। पशुपति को दूसरे हाफ में तो सिर्फ एक सुपर टैकल के चलते पॉइंट मिला था, और कुल मिलाकर उस मैच में शायद 4 या 5 टैकल पॉइंट्स पलनी टस्कर्स को मिले थे। तो अरावली एरोज के रेडर्स पलनी का जो वीक फ्लैंक है उसका आज पूरा फायदा नहीं उठा पाया, बल्कि अपनी वीकनेस को एक्सपोज किया है। लेफ्ट कवर से अटैक डैश, रोहित बेनीवाल के स्टीयरिंग लुक था, बट उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। 1 point, Palni Tuskers. Absolutely, when you talk about Palni Tuskers not performing well yesterday, but then, they are not even giving away those unsuccessful tackle points as well. They are going in for tackles only when they are confident, so that is what is required. चलिए, तो वो जो प्रश्न था ना कि क्या आज पलनी टस्कर्स के लिए जीत आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और एक अच्छा प्रश्न था कि एलेवरसन साहब आए हैं, दिवाकरन साहब गए, तो जरूर जब वो चेंज होता है थोड़ा सा बदलाव आता है। टू और डाई रेड थी, अंकित ने कहा कि चलिए टाटा बाय बाय, गिव अवे पॉइंट्स, आप ले जाइए हमारे खाते से। Number 3 out. Stuart Singh has also been phenomenal. This is what we say, right raider turn right. That is how you execute, and lovely backtracking skills. Now they're just waiting, I don't even think, the Aravali Arrows Raiders are willing to go in for raid, Harshit. Yeah, exactly, Radhika.
मुझे लग रहा है कि सिर्फ बॉक लाइन जो है वो बोनस लाइन बन चुकी है वहां पर। बिल्कुल बॉक लाइन के आसपास खेले, एटलीस्ट बोनस लाइन के पीछे जाने का प्रयास भी नहीं किया है। इस बार अजय मुतैया ने यहाँ पर परसूट किया है। क्या एक सुपर टैकल आ सकता है, क्योंकि अजय मुतैया वहां पर रेड पड़ते चेतन चौधरी ने चली आखिरकार वो 5 नंबर के प्लेटफॉर्म पर बहुत देर से गाड़ी खड़ी थी, चलिए वो थोड़ा सा आगे बढ़ी है, एक सुपर टैकल मिलेगा। अजय मुतैया का जो परसूट का प्लान था वो थोड़ा सा उन्हीं के ऊपर बैकफायर किया है। Exactly, the second super tackle for Aravali Arrows. You know, the stance of the frontal block was good and the back hold came in very, very strong. Look at that pain in the rib cage for the Raider. Yeah, but then that was a smart move only from the from the defense to go in for the pursuit when the Raider goes blind. You know, that's a good one, but maybe you would have just gone for an empty raid. जी राजेश, क्योंकि अजय मुतैया ने वहाँ पर कोई भी टर्न ट्विस्ट करने की कोशिश की नहीं थी, इतनी देर में तुरंत वहाँ से सपोर्ट आ गया था। अब राम कुमार को क्या टैकल कर सकता है यहाँ पर, देखिए वो कोशिश करेंगे राजेंद्र बाकर की तरफ जाने का, कोशिश कर सकते हैं वो। ये देखिए क्या राजेंद्र बाकर ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं। You know, that's what it is. You know, he's just trying to escape from the Raider. 1 point. You know, show that aggressive posture in your standing, that you are in an attacking mode, not in an escaping mode. Red. सिर्फ बचने जा रहे राजेंद्र बाकर जैसा डिफेंडर राधिका। मैं उन्हें उनकी टैकल सिखाना चाहता हूँ। वो सुधाकर जैसे खिलाड़ी को एक ही जना रोक पाया है, वो पॉकेट डायनामो रहा है पुडुचेरी के एडिशन में। इस बार अयनाथन रंगनाथन की थोड़ी सी गलती थी, सोडे से सोलो टैकल के लिए वहां पर चले गए थे। और जो आप बात कर रहे थे वहां पर कवर के खिलाड़ी से कैसे मिस्टेक होती है, यहाँ पर वही गलती हुई। पुरुषोत्तमना का भी वहां पर साथ आया, तो साहिल बागड़ा ने एटलीस्ट इस बार कोशिश की हाफ वे डुबकी लगाने की राधिका। Absolutely, that was way too advanced a tackle for the Palni Tuskers there. And you know, the Rajendra Bakar we're talking about, the way he sleeps on the mat, you know, half sleeping on the mat when he wants to escape from the Raider. You know, how soon will he get up if a defense, you know, attempts for a tackle on the other side? He should be able to be there in within second for the support. And Naveen, we could see him, he's alone today. जी हाँ, नवीन वहाँ बैठे हैं और शायद अरावली एरोज के परफॉर्मेंस को बहुत ही क्लोजली वहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। राजेंद्र बाकर, मुझे लगता है ना राधिका, देखिए नवीन और मैंने जब से राजेंद्र बाकर के साथ इंटरव्यू किया है ना और राजेंद्र बाकर के विरुद्ध कुछ प्रश्न पूछे गए, तब से राजेंद्र बड़े वहाँ पर विम्ड नजर आए हैं। बल्कि उस मैच में उन्होंने 6 टैकल पॉइंट्स प्राप्त किए थे। Exactly, you know, I think it's the same, you know, it's just the mind block of the defense. Just play your real game. That is what is required. You know, how many would get this opportunity? You know, this is one big platform that you need to be yourself here. जी हाँ, यहाँ देखिए फिर से वो गलती हुई ना पलनी टस्कर्स के डिफेंस से, और वो होगी अगर यहाँ पर अरावली एरोज के लीडर्स प्रयास करेंगे तो वो पलनी टस्कर्स के डिफेंस से गलती होना बिल्कुल हम लाजमी समझते हैं। बट 25-11 यहाँ पर पलनी टस्कर्स के पक्ष में यहाँ पर स्कोर जाता हुआ नजर आया है। अब देखते हैं कि क्या ये 25-11 का जो स्कोर है यहाँ से बढ़ पाएंगे आगे की तरफ। 14 रेड पॉइंट्स है, 6 टैकल पॉइंट्स है और 4 जो टैकल पॉइंट्स मिले वो दोनों के दोनों सुपर टैकल्स में मिले हैं पॉइंट। ऑल आउट पॉइंट्स पलनी टस्कर्स ने 2 बार ऑल आउट पे किया है अरावली एरोज को। तो राधिका क्या अरावली एरोज से पूरी उम्मीदें करते हैं कि दूसरे हाफ में बच्चा करेंगे, बट अभी समय है फैन कोर्ट पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का। तो मैच नंबर 83 एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। फैन कोर्ट पर दूसरा हाफ पलनी टस्कर बनाम अरावली एरोज, दोनों ही टीमें कई सारे हार के पश्चात आ रही है, बट एक और हार की तरफ अरावली एरोज को भेज दिया है पलनी टस्कर ने। पहले हाफ की कहानी में बहुत ही अच्छे 2 सुपर टैकल सिर्फ नजर आए हैं, दोनों चाहे चेतन चौधरी जिसमें भागीदारी रही थी, बट जयसूर्य नागराजन बहुत ही फिर से वर्सेटाइल परफॉर्मर विद वेरिएशंस वहां पर जा रहे हैं और अपना जंबो परफॉर्मेंस लगातार दिखला रहे हैं अपनी टीम की जीत की तरफ। साहिल बागड़ा ने थोड़ी बहुत रेड में कोशिश की है, बट वो कोशिश उतनी बेहतर नहीं रही है कि अरावली एरोज को जीत की भूमिका निभाने में प्रदर्शित कर पाए।
थोड़ा सा डिफेंस अरावली एरोज को और बेहतर करना पड़ेगा और अटैकिंग होना पड़ेगा। वो जब कॉम्बिनेशन में जाते हैं, दे आर द वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन टैकल उनमें कर रखने की क्षमता है। और ब्रजपाल सिंह गौड़ को और अच्छा करना पड़ेगा। मेरे साथ कॉम्बक्स में है राधिका, आपका स्वागत है। Thank you so much. You know, slowly they are coming back, Aravali Arrows, but then the variation is so big among the scores of both the teams. You know, initially they broke the complete confidence of Aravali Arrows here, Palni Tuskers. I'm sure this would be the day that they would be looking for that first victory in the booster round. या तो पहली विक्ट्री की तरफ पलनी टस्कर्स दौड़ चली और वो हाईवे पे पहुंच चली। अब प्रकाशित मिन्स जी यहाँ पर कहेंगे कि चलिए इस मुकाबले के दूसरे हाफ को एक बार फिर से शुरू किया जाए। यूट्यूब की भूमिका में अभी वो मौजूद है। अक्षय देसाई इस मुकाबले के रेफरी हैं। आइए साहिल बागड़ा, क्या कोर्ट बदलने से फॉर्चून में बदलाव हो पाएगा? क्या मानसिकता में बदलाव हो पाएगा? यही फर्क है ना मशीन और ह्यूमंस में कि स्विच ऑफ स्विच ऑन का मोड सिर्फ मशीन में होता है। साहिल बागड़ा एक बार फिर से थोड़ा सा रूट उनका रॉन्ग हो गया था। अजय मुतैया, मणिकंदन शायद वहां पर मौजूद थे। मणिकंदन आए, अटैक किया। It's an aggressive defense there. Palli Tusker, just number 5. Yellow card. Yeah, Dangerous maybe play. yellow card. Yeah, because he went very aggressive, Harshit. You know, 2 minute suspension for the defense. You know, this is okay, but the back hole that the defender came in, you know, he was quite aggressive there. So that's the reason. You know, yeah, look at that. Look at that. दिस इज द वेरी रॉन्ग स्पिरिट राधिका। और लगातार हमने देखा कि वहाँ पर किस तरह से उन्होंने, जरूर उनका इंटेंशन ये नहीं होगा, बट यहाँ पर बड़ा थोड़ा सा पेनफुल हो सकता था साहिल बागड़ा के लिए। और जरूर बहुत अच्छा येलो कार्ड वहाँ पर दिखाया गया है। पिछला मैच भी जब था पल्ली और अरावली का, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटेंशन वहाँ पर थे, बट अरावली की तरफ से आज ऐसा कोई इंटेंशन नजर नहीं आया। जयसूर्य नागराजन ने तुरंत कहा कि चलिए हम हमारी गलती को मानते हैं। पर 26-11 साहिल बागड़ा वहां पर थे और मणिकंदन को शायद वहां पर येलो कार्ड मिला है 2 मिनट का सस्पेंशन के साथ। Exactly. Now in a defense of 5, Rohit Pancholi. But then this defense, you know, wow. Yet again a double thigh hold, and look at the way the support came in right in a second. 1 point Palli Tusker. विद्युत थलाई वहां पर मौजूद है। दोनों थाइस पर गए रोहित पंचोली। जरूर मैं उनसे और स्ट्रगल थोड़ा सा देखना चाहता था वहां पर, दोनों थाइस पर। और शायद राजेश गुजर भी साहब ये कह रहे हैं कि देखिए सिर्फ खड़े खड़े वहां पर वो कोशिश कर रहे थे कि चलिए मैं मिड लाइन की तरफ चले जाऊंगा, तो वो ऐसे आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आपको आपकी एस्केपिंग स्किल्स दिखानी पड़ेगी। जंप दिखाइए या फिर आप कुछ और प्रयास कीजिए, एटलीस्ट मिड लाइन की तरफ रश कीजिए, भागिए, दौड़िए, कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे क्योंकि कबड्डी है जनाब। और ये युवा कबड्डी सीरीज का समर एडिशन है। यहाँ पर आपको कुछ भी देखिए आसानी से मिलता नहीं है ना, कुछ भी गिव अवे आपके लिए यहाँ पर है नहीं। आप जब मेहनत करेंगे तब आपको हो सकता है गिव अवे कुछ मिल जाए। Absolutely, and wow, nice, you know, dash came in. Finally, after that, those two super tackles, this is one brilliant tackle coming in from the right corner. जी हाँ, इस बार कॉम्बिनेशन में गए। वहां पर अंकित जाट आए थे, अंकित जाट ने पूरी तरह से एंगल को कट किया, तो कोई भी मौका लॉबी से होते हुए निकलने के लिए स्टुअर्ट सिंह को नहीं दिया और स्टुअर्ट सिंह को वहां पर डैश किया गया। नवप्रीत अंदर आए, जिनके बारे में हमने राधिका बहुत सारी वार्तालाप की थी। अब 4 का हाउस है, क्या अरावली एरोज पलनी टस्कर्स को ऑल आउट दे सकता है? क्या नवप्रीत की वो जो साइडवेज डुबकी है वो यहाँ पर काम आ सकती है? क्या उनकी फ्लाइज काम आ सकती है? देखना होगा। नवप्रीत एक अच्छे रेडर हैं और इनमें वो जज्बा और इनमें वो कैलिबर है कि कभी भी गेम को अकेले दम पे पलट सकते हैं। Absolutely, but the other side is such a silent killer. He knows when to attack and when to stay calm. So it's Jayasuriya Nagarajan for us. Initially gave all the momentum required for Palni Tuskers today, and when the team is, you know, just falling short, he wanted to take control of the team. जयसूर्य नागराजन राधिका, और शायद एक बार भी जयसूर्य नागराजन को बाहर नहीं कर पाई है अरावली एरोज उन्हें रेड करते हुए। जयसूर्य नागराजन को सबसे पहले बाहर करना पड़ेगा अगर अरावली एरोज पलनी टस्कर्स को ऑल आउट करना चाहती है। क्या था हरिओम चौधरी, ऐसा लगा कि मणिकंदन का आते ही येलो कार्ड के पश्चात स्वागत करना चाहते थे और उनकी बाहों में जाकर टूटना चाहते थे। Now let's see, you know, right anticipation by the defender. You know, he understands what the skill the raider would use, so he had that technique to stop the raider. Brilliant one from the defender. और कोच के पास राधिका क्या वो सब्स्टिट्यूट की बेंच थी? और अगर सब्स्टिट्यूट की बेंच थी तो वहां पर आपको राजेंद्र भाकर नजर आ रहे थे।
और या फिर बिल्कुल प्रेम भड़ू भी बाहर हो जाएंगे। उन जयसूर्य नागराजन, जैसा कि हमने बात ऑलरेडी की है कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और प्रेम भड़ू अपने आप को पीछे नहीं धकेल पाए। Exactly, in a defense of 4, we always say, it's a tough task for a raider. But then, having a prominent defender on the left corner as well, look at the way he extends his arm. Smart move. The acceleration is very good, Harshit, of his. जी हाँ, बिल्कुल ब्रेकलेस रहते हैं जयसूर्य नागराजन, एक्सेलरेट बहुत अच्छा करते हैं, बट राधिका इतना बड़ा टच वहाँ पर, चलिए वो फिंगर टिप्स के टच होते हैं तो हमें समझ आता है, प्रेम भड़ू पर इतना बड़ा टच किया गया है, यानी कि प्रेम भड़ू वहाँ पर पीछे जाने के लिए बहुत उन्होंने सोची ही नहीं थी। और अब नवप्रीत सिंह वहाँ पर फिर से हैं। नवप्रीत सिंह साथ का हाउस है, क्या इसमें कुछ कमाल कर सकते हैं? राइट फ्लैंक के ऊपर से उनकी डाइव्स कभी कभी आती हैं, वो फ्लाइज कभी कभी आती हैं हाई फ्लायर की तरह, बट इस बार बोनस भी नहीं मिला। स्टुअर्ट सिंह फिर से होंगे, पिछली बार अंकित जाट ने उनका शिकार बनाया था। 2 सुपर टैकल कर चुके हैं, तीसरे सुपर टैकल का मौका है क्या यहाँ पर अरावली एरोज के लिए? कुछ नहीं तो सुपर टैकल ही सही जा सकते हैं आज। Absolutely, but then knowing the strength of Aravali Arrows, they are good at those super tackles. Stuart Singh should not go initiate anything because you have 2 more leisure raids for yourself. तो विस्तार में अगर इस मैच की बात की जाए तो फिर से आज हमने पलनी के एक्सीलेंस से ज्यादा राधिका अरावली का खराब प्रदर्शन के बारे में बात की है, क्योंकि पलनी टस्कर्स अच्छी दिखी है, जरूर उनके डिफेंस ने कई बार गलतियां भी की है, कई बार अच्छा टैकल्स भी किया है। जयसूर्य नागराजन बहुत अच्छा खेले, उसमें यहाँ पर कोई भी दोहराए है नहीं। इस बार एक बार पुनः देखते हैं कि क्या नवप्रीत कुछ एक्स्ट्रा ट्रायल करेंगे, बट तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर मेहनत की। और आज पलनी टस्कर्स की राम कुमार ने क्या अपने आप को फॉक किया है थोड़ा सा क्या, और कोई खिलाड़ी अंदर आया है, बट जयसूर्य नागराजन लगातार रेड लगा रहे हैं अपनी टीम के लिए। Yeah, it would be an empty raid only. Yeah, he want to kill that 30 seconds raid clock because the next raid would be do or die raid, but then you can't be napping here Aravali Arrows. He might attack any time. Just be cautious on the mat. या सुपर टैकल का मौका है जयसूर्य नागराजन, जैसा कि हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि एक एम्प्टी रेड यहाँ पर हो सकती है। 2 और टाई रेड पर यहाँ पर खेलने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं अरावली एरोज, इनकी 2 और टाई रेड है, क्या इसमें नवप्रीत कुछ और एक्स्ट्रा ट्राई कर सकते हैं? नवप्रीत श्रीगंगानगर के खिलाड़ी हैं, राजस्थान के पंजाबी बॉर्डर के पास के गांव से काफी समय से कबड्डी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेला करते हैं। इस बार पॉज लिया था, डुबकी लगाने का प्रयास था, राइट कवर का अच्छा टैकल, चेन में गए थे और दोनों कवर्स के डिफेंडर्स ने आज कोई भी गलती करने की सोची ही नहीं है राधिका। Absolutely, and the raider himself is not even aggressive. The left corner, look at the grip on the ankle from Ajay, very very tough that one, and it's a 2 or die raid. Who steps up? Jayasuriya. जी ये I'm sure this time around he will break this defense, Harshit. He will break it. क्या टच पॉइंट ले जाएंगे वो बड़ी आसानी के साथ, ना अटैक करेंगे ना अटैक करवाएंगे डिफेंडर से। हम क्रिकेट में कभी कभी देखते हैं कि रोहित शर्मा के पास पुल मारने के लिए अतिरिक्त समय है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस खिलाड़ी के पास ऐसा एक्स्ट्रा सेकंड लगता है। बहुत अच्छा एक्सीलरेट करते हैं, बट क्या इनके विरुद्ध राधिका डिफेंडर्स अपने आप को पीछे ही नहीं खींच पा रहे हैं? Exactly, because that's a kind of variation he's getting in his skills, Harshit. So he's become an unpredictable player. That's how every raider need to be. You need to channelize your own skills in every single match. Try and play with the weakness of the other team. ब्रजपाल सिंह गौड़ ने भी कहा कि चलिए अच्छा डिफेंस किया है, उसे अप्रिशिएट किया और तुरंत वहां पर अपने खेल में जाएंगे। पहले टस्कर्स ने एक और बार ऑल आउट कर दिया है, पहले हाफ में 3 बार ऑल आउट किया था शायद, या फिर 2 बार किया था, अब एक और बार ऑल आउट कर देंगे यहाँ पर अरावली एरोज को। तो स्कोर जो है वो बहुत ही कम रहा है। अजय मुत्तुए का अच्छा डबल थाई पर अटैक यहाँ पर आया, और जब राधिका अर्ली मोमेंटम की हम बात करते हैं, आज पलनी टस्कर्स के लिए जैसे अर्ली मोमेंटम इनके पक्ष में गया है, जो डिफेंस इनका अक्सर अमूमन चूक करता था, यहाँ आज उनका डिफेंस ऑन फायर खेल रहा है। जयसूर्य नागराजन को बाहर बुलाना बिल्कुल सही सोच है, रामकुमार को अंदर भेजा गया है, जेट पशुपति को भी बुला लीजिए अंदर, अब उन्हें भी कराने दीजिए उनकी बेस्ट रेड्स। आओ आ गए हैं राधिका, जेट पशुपति भी अंदर आ गए, बात करते। I know he's such a swift turn and lovely escape from the lobbies, this raider. Given a chance, running bonus attempt, and I think he executed a toe touch in the process. Wow, just marvelous, just marvelous. प्रेम बड़ू एक बार पुनः जाते हुए यहाँ पर बाहर बोनस का प्रयास किया था,
बिल्कुल बोनस लाइन के आगे और एक अच्छे बोनस के साथ साथ वहां पर क्या कोशिश की उन्होंने कि प्रेम बड़ू पर टो टच किया जाए। मुझे लगा कि प्रेम जहाँ तो जेट पशुपति बोनस ले रहे थे, प्रेम बड़ू का शायद पैर बीच में आ गया राधिका। Exactly, he went for the running bonus attempt, but they were too close. The defense was too close that one of them had to touch his feet. Anyways, now this is Sahil Bagara. राधिका एज एक्सपर्ट डिफेंडर, क्या उसमें प्रेम बड़ू की भी थोड़ी सी गलती थी कि वो अपने पैर को पीछे नहीं कर पाए? Exactly, because when a new raider comes in, or you might have seen him playing already in several matches. He is also one speedy raider who is good at bonus as well. To guard the bonus line, you need to be very cautious on that line as well. या और चलिए बाहर बैठे हैं थोड़ी देर के लिए। राम कुमार इस बार चलिए एक बार रिप्ले में हम पुनः देखेंगे कि क्या क्या घटित हुआ है पिछली बार। नवप्रीत सिंह का लेफ्ट इन की तरफ से वो टैकल आया था, राइट कवर का साथ आया देव गुज्जर, उसके पश्चात एक अच्छा पैर को खींचा नवप्रीत ने पीछे। एटलीस्ट ट्राई। राधिका मैं थोड़ा सा हाश होऊंगा शायद कहते कहते, बट काजीरंगा राइनोज में अंत में जैसा स्पार्क चाहिए था ना, जो हमें देखने को मिला वो बरावले रोज ऐसे खेलेगा गुज्जर उसे भेड़ना चाहेंगे। अंकित तू एक्स्ट्रा मार, तू मारेगा मेरे को पता है। ओ भाई एटलीस्ट ट्राई कीजिए, मारिए। चाहे आप कितने पॉइंट्स के मार्जिन से हार रहे हो, एटलीस्ट डू योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट। सिर्फ एक टीम यहाँ पर बाहर होगी बूस्टर राउंड में, वो शायद 8वें पायदान की टीम होगी राधिका, और सिंध सोने की भी मैच अभी तक जीती नहीं है। Exactly, same is the case with Palni Tuskers, but they had one tie, and I'm sure this will convert into a win. So they will be at lower risk than the other teams, and this time around the Raider has been what a multiple layer of defense that have come in. They have worked in combination here, Harshit. जी हाँ, बहुत ही अच्छा इन कॉम्बिनेशन वहाँ पर है। और राजस्थान के बाकी दूसरे खिलाड़ी देखते हुए वहाँ पर एक तरफ अनुज सैनी नजर आ रहे थे, दूसरी तरफ वहाँ पर और भी बाकी खिलाड़ी मौजूद थे। क्या गलती अरावली एरोज कर रहा है उसे शायद समझ रहे हैं, और वो गलती पेरियार पैंथर्स नहीं दोहराना चाहेगा। पर 36-14 और राधिका चलिए, क्योंकि समय मुकाबला एक तरफा जा रहा है और हम कोशिश करेंगे लगातार आप सभी को ये मुकाबले को बताने के लिए। राधिका क्या आप कभी मैसूर आए हैं? Yeah, I've been in 2010. It's been 13 years. I've been in Mysuru. Radar out. 1 point. Aravali Arrows. इस बार चलिए अरावली एरोज के डिफेंस को भी वहां पर मोटिवेशन मिला कि कैसे वहां पर टैकल्स के लिए जा सकते हैं। अच्छा टैकल इनिशिएट फिर से किसने किया? राइट लेफ्ट इन ने वहां पर लेफ्ट इन गए शुरुआत में टैकल करने। नवप्रीत अच्छा किया कार्य, और यही जरूरी है। एटलीस्ट गो एंड ट्राई योर बेस्ट, अटैक कीजिए, एफर्ट दिखाइए। और अगले मैच की कहीं ना कहीं वहाँ पर बाकी टीम्स तैयारियां करते हुए शायद आपको नजर आ रही है। जो आने वाले जो मैचेस हैं उसमें आपको चूला वीरेंस नजर आएगी, सिंसोनिक नजर आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो मैचेस होंगे। बट राधिका आज हमने प्री शो में और भी कुछ अच्छे यहाँ पर स्टैट्स पर गए थे, और वो स्टैट्स अगर मैं शेयर करूँ आपके साथ तो अरावली एरोज की अगर मैं रेट्स देखूँ तो उनकी 246 सक्सेसफुल रेड्स है और अनसक्सेसफुल रेड 184 है, और ये एम्प्टी रेट बहुत ज्यादा लगाती है। सबसे बड़े नंबर्स में यहाँ पर एम्प्टी रेट्स लगाती है राधिका, 212 एम्प्टी रेट इनके पक्ष में है। When you do lot many empty raids, that means you are risking in a do or die raid. 1 point. Palni Tuskers. और स्टुअर्ट सिंह, पल्ली टस्कर्स का रेडर्स में ये बात बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छा उन्होंने राइट हैंड साइड में टच किया है। या फ्रस्ट्रेशन मुझे राधिका नजर आया, राजेंद्र बाकर ने कुछ फेंका वहां पर, वो फ्रस्ट्रेशन नजर आए। वो फ्रस्ट्रेशन, व्हाई आर यू नॉट शोइंग इन द मैट? राजेंद्र बाकर, गो ट्राई, यू आर द वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर। मैं जो पहले बात कर रहा था सुधाकर, मैं अश्विन, अगर हम हमारे को प्रोड्यूसर मोहित की बात करें जो पॉन्डिचेरी एडिशन में थे, राधिका आपने भी शायद कॉम बॉक्स में साथ थी, जो उन्होंने सुधाकर पे अटैक किए, कोई और डिफेंडर काम नहीं कर पाता था अगेंस्ट, या सोलो टैकल्स अगेंस्ट दिस टॉमी सुधाकर। Exactly. Momentum is one thing in sports, Harshit. Once he gains that confidence, I think he should be back in his own. But then when does he gain confidence? It should not be too late that he will be vanished from here. Yeah, but Radhika, confidence घुमा क्यों? 6 टैकल पॉइंट। उसके बाद पिछले मैच आप कमेंट्री में थे, आपने वहां देखा कि क्या परिस्थितियां थी। आज भी आप कॉम बॉक्स में आज आप देख रहे हैं अरावली एरोज पर क्या परिस्थितियां हैं। पर अभी चलिए स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय है राधिका, और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की तरफ चलते हैं। और आप सभी मत भूलिए सीरीज को डाउनलोड करना। वो गया ही नहीं, वो रेडर कुछ करा ही नहीं, चेन का मारेगा, अब हम थोड़ी मारेगा। साहिल पूरा मैच निकल गया, तेरे को पता है कितनी 5 मिनट 6-7 मिनट बच रही होगी, एक हाथ नहीं खोला तूने पूरे मैच। क्यों सेट कर रहा भाई साहब, मूवमेंट क्यों डिफेंस को सेट कर रहा तू अटैक ही नहीं खोल रहा।
अटैक खोलना, तेरे को पॉइंट मिलेंगे, बोनस मिलने लग रहा है, अच्छी बात है, लेकिन तू अटैक तो खोल तेरा। वो कॉर्नर के भर के मार, तेरे बैठे तो कूद जाना, उसके भर के मार तो सही। चलिए तो राजेंद्र यहाँ पर राजेश गुजर साहब ने रिटॉर्टेड किया है, कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहा है पलनी टस्कर्स को, और साहिल बागड़ा तुरंत यहाँ पर रेड पर भी आए हैं। कहा है कि कॉर्नर पर जाइए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए और अटैक कीजिए, अपने हैंड्स को स्ट्रेच कीजिए। राधिका बिल्कुल सही कहना है राजेश गुजर साहब का, और हैंड स्ट्रेच करेंगे तो ये मिलेगा आपको। राइट कवर पर अटैक किया राधिका, इन द फर्स्ट टाइम यहाँ पर मुझे वो अटैक करते हुए नजर आए साहिल बागड़ा, और अयनाथन को बाहर किया उन्होंने। Absolutely, that is what is required, and lovely that coach has let him know what he's falling short of. He's executed it, and 20 points is the score difference. Harshit, it would be very very tough, and I'm sure Aravali Arrows is on -14 with the score difference. This positive score will definitely add to them. ये अरावली एरोज के पास कैलिबर है, इसीलिए हम वहां पर बात करें। जरूर बहुत आसान होता है कभी कभी कॉम्बॉक्स में बैठकर बात करना, और कभी कभी बहुत सारे दर्शक सोचते होंगे क्यों हम इनके इतने अगेंस्ट बात कर रहे हैं, बट हम सिर्फ उनके बारे में इसलिए इतना कह रहे हैं क्योंकि इनके पास वो कैलिबर है, कैप्टिवेटिंग उनके पास परफॉर्मेंस है, पाइवोटल रोल निभा सकते हैं। एक बार फिर से बहुत अच्छा कॉर्नर या अटैक आया, और वहीं पर बहुत ही मजेदार मौसम के साथ साथ राधिका मैसूरू में अश्विन बड़ा एंजॉय करते हुए, उनके पास अभिषेक वहां मौजूद थे, वो केरला से हैं। Lovely, they're having nice time on, witnessing all these players personally there. तो क्या पहले एक खिलाड़ी शायद पहले वहां पर लॉबी में चले गए थे, इसकी यहाँ पर डिमांड है। पास में अपर्णा वहां पर मौजूद है, और राधिका मैंने जब पहली बार एलिवेट टीम के साथ जुड़ा था ना, तो पहली बार मैंने जब कॉम्बॉक्स के साथ शेयर किया था तो अपर्णा थी। Oh, is it? Oh, nice. Each one point is. जी हाँ, क्योंकि लॉबी में शायद कोई खिलाड़ी चले गए थे। Session. Exactly. या फिर कोई बाहर चले गए, ये देखते हैं। हरिओम का यहाँ पर, जी हरिओम वहां पर पहले क्या लॉबी में चले गए राधिका। He stepped into the lobby and then he initiated the ankle hold. और राधिका जी, मैं उस इंटरेस्टिंग स्टोरी पर था जहाँ अपर्णा के साथ मैंने पहली बार वो कॉम्बॉक्स शेयर किया था, और बड़ा अच्छा वो मेरी शुरुआत जो जर्नी की हुई थी कबड्डी में, उससे पहले मैं वहाँ पर लगातार सिर्फ बड़े बड़े टूर्नामेंट जैसे कि नॉर्मल कॉर्पोरेट लेवल पे या फिर प्राइवेट लेवल पे थे। जब इनके साथ पहली जर्नी थी तो अपर्णा वहां पर पहली माय को पार्टनर थी द कॉम्बॉक्स। इसी के बीच में पलनी टस्कर रिव्यू चाहता है। पलनी टस्कर चैलेंज, नो बोनस पॉइंट, आर डिसीजन, बोनस पॉइंट, प्लीज रिव्यू। तो रिव्यू राधिका मांगा गया पलनी टस्कर्स की तरफ से। यहाँ पर पहले जब उन्होंने पहले हाफ में रिव्यू मांगा था, सेम यही था। उस समय भी जयसूर्या नागराजन ने कहा था कि शायद वो बोनस नहीं है, बोनस लाइन बाद में पूरी तरह से नहीं कट रही थी। एक बार फिर से देखते हैं क्या उस समय पर उनका पैर हवा में था। राधिका, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहता है? Looks like Palni Tuskers, it's just a tricky one. Review successful, no bonus. Palni Tuskers, you have written your review. ओके, तो पलनी टस्कर्स दूसरी बार इन्होंने बोनस पर रिव्यू मांगा। पहली बार जब इन्होंने शायद शुरुआती 2 या 3 मिनट थी, और पहली 2 और डायरेक्ट जो थी ना अरावली पर, उसी पर उन्होंने बोनस मांगा था। और अब यहाँ पर एक और खिलाड़ी जो है बाहर जाएंगे, शायद सब्स्टिट्यूट क्या किया गया है। अंकित जाट बाहर गए हैं, प्रदीप सिंह। अंकित जाट ने शोल्डर से थोड़ा सा हाथ लगाया था, क्या थोड़ी सी इंजरी का मैटर है, बट यहाँ पर जट पशुपति अंदर आए हैं। पिछली बार जट पशुपति ने रनिंग बोनस का प्रयास किया था, रनिंग बोनस में उन्हें प्रेम बडू का शिकार बनाया था। अब यहाँ पर एम्प्टी रेड के साथ वापस क्या जाने की कोशिश करेंगे, अब बोनस का प्रयास करेंगे। This is what it is, Harshit. When you go for one attack, come to the midline and then plan your next attack. That's what it is, and Pashupati has done it well. He just cleared his bonus, and the way he hopped it to the midline, that was good. और राधिका जी, हम हमारे फर्स्ट एक्सपीरियंस कॉम्बॉक्स की बात करें तो आइए मैं आपसे जानता हूँ, खिलाड़ी से कमेंटेटर तक का सफर वो कैसा रहा है? कब आप किसके साथ पहली बार कॉम्बॉक्स में थी? राइट कॉर्नर से अटैक, इनकी पोजीशन से भी अटैक आया। राधिका, मुझे लगता है आपकी स्टोरी सुनने के लिए पलनी टस्कर्स भी बेकरार हैं। पलनी टस्कर्स, lovely bit of a tackle from Palni Tuskers here. Look at that, the way he went in, the moment he entered for a bonus, and the corners just pounced onto the defense. And my first commentary experience was season 3 of the Professional Kabaddi League, where we had the regional commentary. I was doing it in Telugu, and the only thing I was worried is the transition from being a
player to a commentator, that's a difficult one. Because, you know, normally when you sit in a gallery, you say, hey, kya khel rahe re? Something like this, play well. So I was like, on the mic, I should not be saying something like that. That was the very cautious thing I made sure. तो राधिका, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कभी एज अ प्लेयर आपने फ्रॉम द कमेंट्री बॉक्स कहा कि अरे ये क्या है भाई, ऐसे थोड़ी ना डिफेंस करते हैं, यहाँ देखिए ऐसे ही डिफेंस करते हैं। एक बार फिर से मणिकंदन का आर्च अंदर आना। कल मैं और नवीन इनके बारे में बात कर रहे थे कि वाई मणिकंदन जब इतना अच्छा करते हैं तो क्यों उनका इंक्लूजन नहीं है। यहाँ पर मणिकंदन आज आपको अंदर नजर आया और बहुत अच्छा प्रदर्शन इन डिफेंस दिखा रहे हैं मणिकंदन। Yeah, I think they thought the right corner went for the initiation, but the left cover came in right on time. That was good. Yeah, you know, luckily we have that mute button. No, that was luckily we have that mute button, Harshit. Otherwise, you know, I would be thrown out of the commentary box. क्या वो नर्वसनेस के बारे में चले जानते हैं, कितनी नर्वसनेस थी, किस तरह का एटमॉस्फेयर था, कि आपने वो एंजॉय किया या नहीं किया? जिस प्रकार से यहाँ जेट पशुपति ने बहुत ही आसान सा एंजॉय किया, नवप्रीत डैश के लिए गए थे हाफ हार्टेडली, शायद ऐसा लगा छूकर निकल गए, चारों खाने निश्चित कर दिया नवप्रीत को जेट पशुपति ने। Exactly, look at that, he was escaping and he has eyes behind his head as well, the way he looked at it. Yes, the nervousness was there and is still there, Harshit, even today. You know, I think it's still there. यही वो enjoying part होता है ना, जब आप सबसे पहले कुछ करते हैं या फिर लगातार कुछ आप नया करते हैं तो बहुत ही alluring रहता है, बहुत ही alluring रहता है और आकर्षक वहाँ पर बहुत ही आपको अच्छी अप्रोचेस नजर आती हैं। राधिका, कैसी रही है फिर जर्नी, यानी कि अगर आप थर्ड सीजन की बात करते हैं प्रोफेशनल लीग की? And also, you know, it was just not about commentary, but I was also in the pre and post shows. You know, that was me facing the camera for the first time and giving the, you know, my expert advice on the, you know, matches played or the matches that would be happening. You know, that was a deadly task for me, but we have lovely producers who have given me a lot of confidence. वाओ, और मुझे तो लग रहा था यार WWE के खेल चल रहा है, देव गुलजार जो है टैप करने वाले हैं, 1 2 3 कोई रेफरी आएंगे वहां पर कहेंगे। पर चलिए, सुपर टैकल आज का शायद तीसरा या चौथा सुपर टैकल आया और प्रेम बड़ू के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आए यहाँ पर। अच्छा फेस था, फिर से थोड़ा सा रिस्की टैकल था, रिस्की टैकल के पश्चात वहां पर जरूर पलनी टस्कर्स के इस बार खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ेगा। जी राधिका, तो वो प्री शो पोस्ट शो जिस तरह से आपने शुरुआत में किए हैं, और राधिका जरूर आपने भी शायद हमारे प्री शो पोस्ट शो देखे होंगे, क्या और हम बेहतर कर सकते हैं और कैसे आपके रिव्यूज इस पर? Harshit, the only thing I'm worried for you is you should not lose your voice by the end of the tournament. I love everything about the way you guys are doing it, but then, you know, just a cause of concern is just save your voice. फॉर्च्यून हम यही कहना चाहेंगे कि हम बचा कर रखें उस वॉइस को। राधिका, हम उस टेंट पर और काम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक वो प्रश्न था जिस पर आइए, क्योंकि अभी तो सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं तो मैं आपको वार्न कर देता हूं पहले ही, आप अपनी बेस्ट वाईकेएस एवर स्टार्टिंग 7 के साथ तैयार रहेगा। आने वाले बहुत जल्दी हम उस पर बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं, पैनल डिस्कशन। Exactly, I think I have you know, jotted down my list and sent it to Mohit as well, so let's see if he could match in any of them. थोड़ा सा एक ही रेडर को डिस्क्लोज कर दीजिए कि एक खिलाड़ी तो है ही आपकी शुरुआत। सुधाकर बात है, और मैं भी वही गेस करने वाला था। कैन वी हैव वन डिफेंडर, क्या एक डिफेंडर के बारे में जान सकते हैं हम? गोसलिया। ओह, लोकेश गोसलिया, वाह वाह राधिका, तो मजा आने वाला है जब हम उस पैनल डिस्कशन करेंगे। बस यहाँ पर ये मुकाबला समाप्त हुआ है, मजा पलनी टस्कर्स के लिए रहा है। 43 अंक उन्होंने प्राप्त किए, पहली जीत यहाँ पर आई है। अरावली एरोज 14 से 21 तक बढ़ी है। पिछले मैच में उन्होंने 14 अंक प्राप्त किए थे अपनी टीम अगेंस्ट टीम को, वहाँ पर 50 अंक दिए थे। थोड़ा सा पिछले परफॉर्मेंस के तो अनुसार अच्छा किया है, 14 से 21 गए हैं, बट ये वो कोई टीम नहीं है जो बिल्कुल बेसिक शुरुआत करी। ये वो टीम है जो अनुभव भी है, चेतन चौधरी जैसा डिफेंस है, राजेंद्र भाकर, प्रेम बड़ू, अंकित जाट, कहीं न कहीं रेडर्स ना होना मुझे लगता है राधिका डिफेंस में भी उन्हें डाउन कर रहा है। Absolutely, you know, the initial momentum what Palani Tuskers have broken the confidence of Aravali Arrows and they did not give them enough time to recover. Yeah, but आज परीक्षित जी ने बहुत अच्छा कार्य किया एज ए U2 और राधिका बहुत अच्छा लगता है। और बताऊं एक और डाटा मैं आपको कि जब हमारी लेडी ऑफिशियल वहां पर U2 पर होती है ना, जब उनके बोल्ड कॉन्फिडेंस भरे निर्णय आते हैं
तो लोग सोशल मीडिया पे बड़ा पसंद करते हैं, मिलियन व्यूज वहां पर जाते हैं, खासकर राखी कुमारी की रील्स पर अक्सर बहुत सारे चैनल ने डाला है, हर रील पर मिलियन व्यूज हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब लेडी एम्पावरमेंट वहां पर देखने को मिलता है। और राधिका इन एग्जीबिशन मैचेस से ही वी वांट टू यू आल्सो कि कभी आप जरूर हमें यहाँ ज्वाइन करें। When it happens in Hyderabad, I'm sure I would be able to meet you all personally, Harshit. वाह राधिका, और आप बुलाई कभी हैदराबाद, हम ऐसे ही चले आएंगे युवा के बहाने के साथ ही चाहिए। Anytime, you know, everybody from Yuva Kabaddi is most welcome. Hyderabad is a lovely place to be. And these 3 super tackles have been one, you know, eye-catching moment for Aravali Arrows. जी एक बार फिर से रेट पॉइंट्स, चलिए आज डबल डिजिट्स में गए, अच्छी बात है, अन्यथा कल वहां पर रेट पॉइंट सिंगल डिजिट में थे। टैकल पॉइंट्स भी वहां पर डबल डिजिट में गए हैं, 20 रेट पॉइंट्स वहां पर पलनी टस्कर्स को मिले, 15 टैकल पॉइंट्स मिले। ये बहुत ही अच्छे दृश्य, 3 बार ऑल आउट किया अरावली एरोज को। ये जरूर पलनी टस्कर्स के डिफेंस को कहीं ना कहीं मार्ग प्रदर्शित करेगा और उन्हें रोबस्ट परफॉर्मेंस यानी कि मजबूत प्रदर्शन आने वाले समय के लिए वहां पर एक मोमेंटम दे गया है। राधिका, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? अब पलनी टस्कर्स जीत की पटरी पर वापस बढ़ रही है। Absolutely, they have gained a lot of confidence after this match, which is much required. Jayasuriya Nagarajan, he started off well and he knew when to stay calm. 11 raid attempts, 9 raid points, 1 super raid that killed the whole confidence of the opponent. 81% is the raid strike rate. That is phenomenal. तो चलिए एक बार फिर से बेंचमार्क्स देते हुए अपनी टीम के लिए बेंचमार्क सेट किया इस खिलाड़ी ने, जयसूर्य नागराजन। 9 पॉइंट्स वहां पर आए। एस मणिकंदन सुब्रमण्य, ये डिफेंडर बहुत अच्छे हैं। कल हमने बहुत ज्यादा बात की थी इस खिलाड़ी के ऊपर क्योंकि पलनी टस्कर्स को वहां पर डिफेंस में कल पॉइंट मिले ही नहीं थे, तो आज उन्होंने बहुत अच्छी वापसी की, अपने आप को देखा क्या उन्हें बेहतर करने की आवश्यकता है और 6 टैकल पॉइंट्स, कमाल की वापसी इन्होंने की है और 100% रही है राधिका उनकी इस टैकल सक्सेस रेट आज। And the way the Palni Tuskers have moved up the chart, they were on the 7th spot. They've, you know, climbed up to the 5th spot here after just that one, and also the score difference went into a positive note. या पलनी टस्कर्स, क्या बात है। और राधिका सिर्फ एक जीत है और एक टाई है और बाकी मैचेस से एक पॉइंट। इससे पता चलता है कि एक पॉइंट भी कम से कम मैच से प्राप्त करना कितना जरूरी है। नीलगिरी नाइट्स टॉप ऑफ द टेबल मौजूद है। सिंसोनिक अभी आने वाले मैचेस में शेष बचेगा, वो खेलता हुआ आपको नजर आएगा। हम्पी हीरोज भी नजर आएगा आपको, पेरियार पैंथर्स भी नजर आएगा, चोला वीरन्स भी नजर आएगा। तो इन 4 टीमों के आज के मुकाबले शेष बचे, पर ये पॉइंट टेबल बता रहे कि कैसे एक ही जीत के साथ पलनी टस्कर्स 7वें से 5वें पायदान पर आ चुकी है और अरावली एरोज अगर कहीं सिंसोनिक मुकाबले अब जीतने लगे तो उनके लिए मुश्किलात हो जाएगी। बट अगला मैच राधिका बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हम्पी हीरोज बनाम चोला वीरन्स, देखते हैं कौन जीतता है आज की ये बड़ी भिड़ंत को। चलिए यहां पर अभी आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, मिलते हैं आप सभी के साथ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ही कॉम्बॉक्स में राधिका।
finally, Palni Tuskers got their first win in the booster round. Welcome to the post-match presentation of match number 83 of Yuva Kabaddi Series Summer Edition 2023. आइए शुरुआत करते हैं इस post-match presentation के with thanking all our partners first. Our broadcast partner, FanCode, Fantasy partner, Dream 11, Physio partner, Department of Sports Science, JSS College of Physiotherapy, Hospitality partner, Chambal Hotel, Early Arrows और Ravel Arrows का win performance एक बार फिर से मददगार रहा था पलनी टस्कर्स के और इस मुकाबले में जीत के साथ-साथ पलनी टस्कर्स ने बताया कि they are back in the game. 43-21 is the end score. अब सीधा चलेंगे यहाँ पर प्रस्थान करते हैं अवार्ड्स की तरफ. शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रीडर ऑफ द मैच के साथ जो रहेंगे पलनी टस्कर्स के जय सूर्या नागराजन 9 पॉइंट्स और उन्होंने नींव रखी थी अपनी टीम की जीत की. Now the time for the best defender of the match और पलनी टस्कर्स के लिए इन्होंने शुरुआती 7 में आते ही वहां पर एक दमदार वापसी की और दर्शाया है अपना नाम. He is none other than S. Manikandan Subramani. 6 tackle points in his kit today. What a fabulous performance. Let's have a look. और नाउ द टाइम फॉर द कबड्डी कमाल ऑफ द मैच. तो पलनी टस्कर्स के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने आज टैकल्स में एग्जीबिशन लगाया और अपनी टीम के लिए गेम को मेक किया वो एक बार पुनः है एस मणिकंदन सुब्रमणी. और इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के लिए टैकल पॉइंट्स में एग्जीबिशन था बट रावली एरोज रीड में और बेहतर करना चाहेगा अगर उन्हें जीत की पटरी पर लौटना है. बट इतना ही यहां पर इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन से. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस.
Check, Mohit. I'm hoping I'm audible. I see the. Awesome. Match number 84 as the Kannada team, the Hampi Heroes, will all be gearing up against the Chola Veerans. Yesterday, Hampi Heroes won their first match in the booster round and Chola Veerans lost their first match in the booster round. So it's going to be a nice contest. If Hampi Heroes win this match, they can be feeling a little safe to go to the next round. So everything for the taking, as I'll be joined by Ryan James in a very short while. But Harshit, can we have the Hampi Heroes and the Chola Veerans on the mat, please? Yes, it is the time to invite both the teams on the mat. So let's invite first none other than the home team, जिन्हें मिल रहा है बहुत सारा सपोर्ट. क्या सपोर्ट के साथ साथ तोहफा दे पाएंगे जीत का? Let's invite with all your energy, Hampi Heroes. Karnataka people, are you happy with Hampi performance? Because against them, now they are coming. Chola Veerans!
Yesterday, just a major mishap in the last raid of the match where they lost 2 points, the Chola Virens, and they had to lose almost the match as well. And the coach was really unhappy. He shared his unhappiness in the post-match show as well, as P. Raja spoke why that extra 2 points was given off, and he was really feeling bad about it. But the Hampi Heroes, they are back on the mat with a nice victory. Big victory yesterday against the Sin Sonics, and today Sukesh Kulal, Narsimhamurthy will be there, tested once again on the corners. Madhu Kaverappa, the captain, yesterday got 22 raid points. He becomes the first raider in the summer edition of the Yuva Kabaddi Series year 2023 to get 22 raid points. None of the raiders yet achieved that feat. Alongside with him, of course, there will be that glorious raider Gagan Gowda, and of course Kiran BS is now strapped upon all his right knee. It's a injured right knee there, so it's there on the strapping. Krishna Kumar, Teja Nayak and Devanathan and Sudarshan will be in the substitution lines along with coach, of course, Narsimha. And along with me this evening is Ryan James. Ryan, good evening. Good evening, Naveen. And to introduce the starting 7 for the Chola Virens, in the corners, we have Praveen Kumar and Mahindra Prasad. The insides doing the raiding duties, we have Ranjit and Vignesh. In the covers, we have Gautam Murugan, the captain, and Monoghar. And not to forget, from the middle, Mohandas Vishwamohan coming in. The substitutes, Iyappan, Tamiravan, Inian, and Vignesh Babu. Yeah, Iniavan, and that is that Y on his t-shirt also is a problem on the spelling. He says the mistake is there everywhere, as Hampi Heroes have not lost to the Chola Virens at all in the history of the Yuva Kabaddi Series, and also in the summer edition. 3 wins, and the Chola Virens will have to go out there and get a revenge match. That is very interesting. Yeah, Gagan Glorious Gowda, first raider to reach 100 raid points, first raider to reach 150 raid points also. And Sanskar Naveen Mishra today did not raid at all. Just 1 bonus point, and that's why the Chambal Challengers lost. And Durgesh Kumar, yes, of course, he is still injured. But this is a very nice opportunity for Gagan to go out there and get some nice points and take a massive lead. As Ryan, we have the defenders, where all the corner defenders again. Rightly said, the corner defenders, not to forget Lokesh Gosalia, the man himself, leading the charts here. Played 1 match less and he's in front of Ankit Jatt, who's just 4 tackle points behind him. And in the 3rd place, we have Rajendra Bhakar, 42 tackle points of 18 matches. So the competition seems to be narrowed down to between Lokesh and Ankit here, Naveen. Yeah, very much, as Raki flips the coin over. As Madhu Kaverappa, I think, has lost the toss. As Gautam has won the toss, and he will not be able to go out there and say, listen, I'll need the opposite side of the court. That is what Madhu always does. When he wins the toss, he says, I will need the opposite side of the court where we are standing. But today, no opposition will be ready is what Gagan Gowda will be thinking to stop him. 151 raid points yesterday. He was just used very sparingly because Madhu Kaverappa had to go out there and perform and prove himself as a raider. So 22 raid points for the captain yesterday because Gagan Gowda was being substituted out and was being made to sit out there. But today he will not be able to do that is what we feel. But to oppose him, yeah, Mohandas, Ryan. Yep, Mohandas Vishwamohan from the side. 11 matches total and 39 raid points, a raid strike rate of 39.79. I'm sure he would love to work on it, and he would require a much better raid strike rate in this match if he has to put out a strong performance against a team like the Hampi Heroes. Yeah, no doubt about that. And 7 losses, a few came in the survival round, couple of them here in the booster round, and 2 ties, all the 2 ties against the Palani Tuskers. And very interesting that we will have all those questions that's been shooted out right before the start of the match. That's a very, very interesting point to actually go out there and discuss about the question the entire match. Right, the question is from Ram Kumar. Why has Gagan Gowda not been raiding more in the last 2 matches? Was he rested or the other raiders were given opportunities? Very good question, Ram Kumar. I will tell you that as Gagan Gowda was rested. Yes, as I said, while he was running in, he was being rested because the coach wants him to, of course, save his energies and save his bones and muscles. And alongside with that, he wanted Madhu Kaverappa to get some match practice and raiding practice. Much needed because the captain was looking out of shape. He was looking out of form. And Narsimha, every time he strikes a conversation with me, either in the breakfast or the lunch table, we always discuss about the Kabaddi stuffs that's going in and around. As Chola Virens ran, they've lost 11 matches, but they've been good in the booster round.
Yeah, they've been very impressive. Their first loss came only yesterday, and they would want to come back and resume those winning ways. No ties for them, but yeah, they're definitely a team to look out for. Look at that, just couple of losses across their last 5 games, so they've been in a good form compared to the Humpy Heroes when you look at the previous games. But it's going to be a cracker, as you said, because one team won the previous game and the other team lost the previous game. Yeah, as Aparna, Aparna Jana there. Right. Speaking all about Tamil names, I just saw that Aparna Jana 22 asks, why is Gautam not doing well in the survival rounds? What has happened to his form? Yeah, I understand. Even I have been asking him the same questions there, Aparna. But yesterday he's got a high five. That's good. Where they went out there and they put up a almost winning performance, but they did not win it. But good to see Gautam back in form. He got 6 tackle points yesterday against the Periyar Panthers. So that was good that Gautam is striking to come back into form. That is what P. Raja will be thinking. Panir Selvam Raja. That's what his full name is all about. And without Arun Kumar Anjapuli, their original captain, Chola Virans again have a big task in their hands. Can they make sure the Raiders do their job? Let's find out as we get into the countdown and get this match started. The toss was won by the Chola Virans, and the first raid, of course, will happen from Madhu Kavirappa. That is what the normal proceedings of any match is. Yeah, the confident captain goes in, and look at the spring in his steps. That's what form can do. And his first point has come in like as if that's a cream on the cake. That has been just saved away from that left cover. Wow, Manogar, what was he thinking? Rand, that's a very, very hasty advanced tackle as Ranganathan will be there in the center today as a referee. Right. Yeah, a very interesting way to start things off, and Mohandas here will look to do the same because, you know, a good start is very, very important. And Humpy Heroes yesterday, that's what they got, the very good start in the raiding front. And here Mohandas will not get the good start in the raiding front. Suhas there with a very good block and the crowd gets going. Oh, I think his neck caught in the chest of Suhas Nagraj. Let's see that replay. What just happened? He's holding the, I think, a little bit of a behind. Rider out, one defender out. On that 1 neck. point Oh, each. each 1 point. How did this happen? I don't think so. Did Suhas Nagraj go out? Oh, there, bang on his head into the chest of Suhas Nagraj. Did he lost contact? Yes, he did. Yes, he did. He was in the air. And not right. Mohan Das, Vishnu Mohan. Without Arun Kumar Anjapuli, that does not look good. There will be a lot of ice packing, of course, on his neck. And the stadium erupts. This Chamundi Vihar Indoor Stadium because of this man. The glorious Raider, Gagan Glorious Gowda. And he will just test some waters and come back as Rand. Arun Kumar Anjapuli, the real, or rather the original captain, has gone in for some university works. What was that? Oh my God. It looked like as if he's going to go back on an empty raid. He says, hi Gautam, on a very stretched out hand on the right cover. Yeah, that's a good way to put it. He said hi to Gautam and Gautam said hi back there by showing that 1 point and agreeing to the point being given as Ranjit comes in for the Chola Virans. Chola Virans tries the tight touch but not yet. And Ranjit here, apologies, it's Vignesh who's come in for the Chola Virans, the second raider. After Mohan Das, we saw Mohan Das leave due to an injury. We all do hope he will come back because he's a key player for them in this match. Right. I'll tell you what, it's not just a key. There's a place called Dindigul in Tamil Nadu, which makes India's strongest locks. Wow, what a toe touch! He's got it on Mahendra Prasad on that left corner. Today, Gagan Gowda is looking that he's very, very hungry for points. And you know what, Ryan, I want to use this word. I'm sure whether it's there very right on the commentary or no, but it's that youngster lingo
That is actually very good to use that word. We were actually roasting Gagan Gowda in the post-match ceremonies, and even with a little bit of talk with Narasimha. Shivkumar once again does not understand. Yeah, Narasimha is completely unhappy. Left cover. What was he trying to do? Madhu Kavirappa also would have been very, very disappointed with that. As Kiran comes in with an injured right knee, he's strapped it up completely. I saw the strapping before that knee protector. Under that knee protector, it's a big, big strapping that has got in. So he'll have to understand that he has to safeguard that right knee. But nevertheless, going back to Gagan Gowda, you know, we were saying he does not have good escape routes. He does not have an anti-block. He does not have a turn that he has to utilize the lobby. And even Madhu Kavirappa, who joined us in the post show. Oh my God! Ranjit Devaranga. Sukesh Kulal gets his first point. So, 1 point. You okay with that Heroes. word, Ryan? Roasted. Can I go ahead and use that again? Yeah, definitely. Roasted is a very, very valid word, and it is often used. And take a look at this. Not the right way to attack a corner. You often get punished if you go in that way. And yes, I mean, roasted is, I love using that word. You can use it, and I'm sure. I think because of his roastingness. Look at that. He's changed flanks. He wants to be a left raider also. He's thinking about it. I'm sure he's heard a lot of us talk to him. And also he wants to bring in that variety, which is good. Which is very, very good. Goes in, gets the hand touch, confuses the defense. He's got 2 points. That's what he claims. Right, Praveen Kumar Ayanar. 2 points. And along with him, Heroes. his colleague also has to go out. Vignesh Babu. 7. My God. Yeah, the roasting has worked. Oh. Yeah, the roasting is worth, and I'm sure the two of them will get roasted when they go back on the bench as well. So will the Chola Veerans by their coach. However, Mohandas is back. It's good to see him back here. Can he change the fortune of the team right now, especially in regards to this match, because they've not had the ideal start, especially in terms of the raiding front. They've not been able to get those good raid points coming in. And Mohandas here trying on the left side. He has less than 10 seconds. He needs to get back. Can he get back successfully? No, he cannot. And the Humpy Heroes will knock him out once again. Lovely on that right corner for the ankle hold that went in once again. He's not very okay today, Mohandas. Once again, he's down on the mat, holding his ears now. First, it was the neck. Nice diving ankle hold by Narasimha Murthy, and nice for Sukesh Kulal. He went out there and took care of the dangling hand. He told me that he himself came up and told that, and I heard your commentary. You were actually telling me to stop clapping hands and help my colleagues out while the defender goes out of the lobby. I will really go ahead and utilize that sort of piece of advice that you give, as the all-out has been inflicted. So good that these guys are getting a video reference with our commentary also to learn the game, which might not be happening in any of the other arenas. So that is why Yuva Kabaddi series is so special. And everybody getting into the arena or into the platform of Yuva Kabaddi series, they need to understand that this is what is real Kabaddi means. This is what real grooming of talent means. As we have a substitution because Mohandas can't come back in time. Ayappan Veerapandiyan. Okay, I'll tell you what, it's not Veeradandiyan. Hang on, guys. With all the spellings that is going wrong, it's Veerapandiyan. Sorry on that graphics. It's Veerapandiyan. And Veerapandiyan has been caught mid-air from that right corner. Oh my goodness, Humpy Heroes coming out strong in the defense. Chola Veeran have sent 3, maybe 4 raiders so far, and all have had the same fate. And take a look at that, he is indeed caught mid-air, and there was no way he was going to propel himself back to the midline. And the Humpy Heroes off to a very good, strong start here, especially in regards to raiding and defending. And this is good to see the Humpy Heroes slowly coming back into the form, especially after that start they had to the booster round. Yesterday we saw them come with a win, and it's good to see the true nature, true colors of the Humpy Heroes. And Gagan Gowda here doing what he does best. No, that is not what he does best, Ryan. I'll tell you what, he does not turn at all on the right side. We've been asking him to turn right, escape through the lobbies, right raider, turn right, and for all the 10 times we have told him, he's now gone ahead and utilized it for the first time, Ryan.
First time I'm watching reverse angle hold by Sukesh Kulal. Will get a point. Rider safe. Bonus Vignesh plus wants 1 a point. point Chola as Viran. well. Bonus plus 1. Yeah, Vignesh there. Oh man, the bonus could be disputed. However, I'm sure the referees are the better experts and they gave it rightfully as Gagan Gowda comes in. And yes, the previous raid, yes, I mean, the factor I was referring to is the fact that he scores points. However, it's good to see him executing a move that he often doesn't do, and that shows that, you know, he is improving his overall skill set, and that's where the talent meets opportunity. Rider out. And an opportunity 1 to point. stop Gagan Chola Gowda's Viran. exercise nicely as the Chola Virans will send Gagan back to the bench. My God. Manogar Marimuthu. Timeout. Generally, Chola Viran. a left cover defender on that right corner now gets it. As the timeout has been taken, can we go back to Gagan Gowda's escape route? Just before this tackle, you know, he turned right. That's what I mentioned. Of course, Ram, our EVS operator, is completely away. என்ன சொல்ல அவசரப்படக்கூடாது யாரு அது மாதிரி அட்வான்ஸ் லாக்ல யாரும் பண்ணாதே அவனை வெளிய வச்சு ஒரு லானா போட அப்புறம் மேட்ச் செட் ஆகும் Okay. ஆடு சூப்பரா இருக்கு Raja says அவனை வெளியே வச்சு விளையாடுங்க. Now, அவனை வெளியே வைக்க முடியல இந்த ரேடில், ஆனா போன ரேடில் முடிஞ்சிச்சு. That is what I'm trying to say, where he wants Gagan Gowda to be outside. But that wonderful turn did not come in when he was tackled. He forgot. See, just that one initial move of turning right. Couldn't he have done the same thing when he was being blocked, frontal block from Manogar? Of course, was nice. And this frontal block from Narasimhamurthy is even 1 better. point. Ambi Heroes. Oh, what is here? What is happening? Oh, Suhas Nagaraj is bleeding from his nose. How did he get into the fold, by the way? I think, the elbow of Narasimhamurthy rubbing on the nose of Suhas Nagaraj. Oh, what has Hampi Heroes have got themselves into? They're not being injured by the opponents. They're getting injured by themselves. You know why? Narasimhamurthy once fell on Sukesh Kulal's left knee and he had a concussion. He had to be taken to the hospital. And now, Suhas Nagaraj has gone and crashed in with Narasimhamurthy. Ryan, you've got some expert opinions on this? Oh man, I mean, I usually, my expert opinion in regards to this is always the opponent doing something. But yes, I think he did the right thing by laying down and putting his head on the mat, because that's often what you have to do when you have a when you have your nose bleeding. Right. And I'm sure he should be okay, honestly, because the nosebleeds usually stop quickly. We all do hope he is fine, as the Hampi Heroes have a very very good lead right now. And speaking of injuries, Naveen, what do you do usually when you come across such injuries? Do you prefer to chill and have some water, or you want immediate treatment? Until that, Official as they're timeout. going in for an official timeout now. Once again, just there's a confusion that has to be sorted out as Hrithik has been substituted in. Because let's go back and see that injury. As we are speaking about the injury, let's go back and see how Suhas Nagaraj got his nose ruptured or rubbed from Narasimha's elbow. Now watch this. The attack was nice from Narasimhamurthy. There, the right elbow bang on Suhas Nagaraj's nose. I'll tell you something. I have been prone to injuries as a sportsman myself. The first important thing I need to do is catch some breath. I don't want people surrounding me. I don't want even the physios or anybody coming straight at me. You know why I say that? Because, Ran, even you are a sportsman and you know how that is. The injury does not affect you the moment it is affected, or rather, the moment it has been induced, isn't it? It affects you much later. Generally, when you sleep, generally when you go back and rest, because your adrenaline is pumping, your blood is warm, everything is good, right? True. So then your injury will not be affected so much as Hrithik. I'll tell you something, Hrithik's name is not here in the substitution lines. Oh, that is such a blunder from Narasimha, the coach and the manager of Hampi Heroes. Hrithik's name, that's what I was wondering. Hrithik's name is not there in the substitution list, and that is why he's been sent out. Oh, he has to go outside the arena. He should not be even sitting here. So there has to be another defender who goes in. I think it's our Dudpeda Digant who goes in. Krishna. Yeah, I call him Digant. Ryan, I'm sure you know Digant, right? The Kannada actor. Sorry? What? Ryan, you're sleeping. I mean...
Ran. You need to quickly go out there. And you know what? Not your fault. Not your fault. Even Krishna Kumar, because he is from a little bit of a Rajasthan clan, even he did not know our Doodh Peda Digant. Immediately he took out his mobile and he searched. He just typed Digant and he saw his own image on the internet. He said, wow, when did I give a photo shoot? I said, listen, that's not you. That's the Kannada hero. All right. I mean, you can't blame me, Naveen. I'm a student. I need to focus on studies and sport, both. So when it comes to movies, I'm not very much, into it. Madhu Kaverappa steps in as we enter into the last 9 minutes. Madhu Kaverappa will find the defense of Chola Veerans, and Madhu can join this team in the Chola Veerans. Yeah, wonderful tackle. Wonderful diving back hold there on that right corner. Wonderful work from Praveen Ayanar. I'll ask you something, Ran. The way you answered, നീ എന്തടോ അവളോ നല്ലവണ്ണായിട്ട് ഇവിടെ ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കോമന്ററി ബോക്സിൽ എന്തിനാ മൈ ഗോഡ് so good you are, right? Oh, come on. Yeah, but I just did. You can answer back. I just did what was done. No, it's okay. It's okay. I just did what I googled Digant, and I do see. I think he's played the Celebrity Cricket League as well, so I think that familiarity is there. So I've seen him before, Yeah, of course. And doesn't Krishna look like him? Alright, I'm going to scrutinize Krishna's face a lot more in this do or die raid. I already spotted him there, right there in the middle. Can he be the one to stop Eopen or lure Eopen in, trying the running hand touch? They do need a point here, the Chola Veerans. There's no bonus available. A touch point is what's needed, and he will find the defense. Rider out. 1 point. Look at Kiran's reaction on Sukesh Kulal. He was wondering, what are you catching? A guy is from Mangalore, I know, and Mangalore is known for fish catching. Look at that. A fish just ran away. He just swam away from his hands. And look at Kiran BS. He was asking, what are you doing? Hello, where are you going to fall off? That was nice. So now did you see Krishna on the frame, right? Oh, this is a marvelous escape. Single tackles, single defenders going to tackle. Can't stop Gagan Gowda. Oh, he's not crossed the midline. He's got another opportunity. He will not be greedy. He will not be greedy. Rider safe. Yep. 1 point. Good to see Gagan Gowda showing, the 100% presence of mind that he had. He knew he still had time. He went back for the raid, and at the same time, he showcased his maturity in terms of, not forcing himself into going and getting a point. And it's good to see a player come up in the Yuva Kabaddi series where, talent meets opportunity, and he's making use of this opportunity. And I can already see a full-grown sports person mentality in him. Hang on. Rider safe. Oh, Sukesh 1 Kulal. point. Chola Veerans. Generally, a left corner defender can't Number go 4 for out. the dash, and generally it will be an unsuccessful tackle. Yeah, bang it more harder on your head, Sukesh. Time out. Ambi Heroes. Yeah, see, no angle, no power, nothing. As Humpy Heroes has taken a timeout, Ryan is all yours now. కాంబినేషన్ ఆడి ఆరు లెఫ్ట్ నీ ఆడి మాట్లాడు Ryan? Right. Honestly, I know. dude, both you and I know that nothing I was know heard it's not there. your The fault. one thing I heard is combination. That's one thing the coach said before we switched on to the Chola Veerans coach. So I'm sure it was in regards to ensuring that they have a good combination, especially while defending there and waiting for the Chola Veeran Raiders to come in. That's what I could interpret. I could be wrong. No. Generally, you're always Bonus right. point. As Ambi Heroes gets that bonus point. The hockey team, the Mysuru University hockey team standing right there. And Madhu Kaverappa has been hand-touched by Rider Ranjit. safe. 1 point. But what Chola Veerans. Jersey number actually 7 out. Narsimha told to Narsimha Murthy was the right corner defender, you play cool. Neen nintkondaadu. Neen beelak hogbada. That's all he said. And that's what Narsimha also did. He did not go for the attack. He wants the right corner as the defender to go out there and be there on the mat. That's good one. But Ryan, I'll agree to whatever you said. But when you only said
I will only do my studies and sport. And the outward turn is brilliant. He is utilizing this against Gautam, and it's not right. Pujita, the captain, right there in the middle of Mysuru University, the hockey team, the captain, she is happy. Oh, yes, Gagan Gowda raids. I'm sure anybody watching, it's a joy for them. And right now, speaking of the university team, yeah, it's good to see a university team there watching. And I'm sure, you know, it must be a good experience for you, Naveen, to interact with all of them. And Ranjit Devagra will find the defense of the Humpy Heroes. And another defensive point for them. Right, Adira right there is celebrating her birthday today. With the short hair girl we just saw. She's the main striker of Mysuru University. If we can go back to that frame, the same frame just previously to this, Adira is celebrating her birthday. I know them very well because I was there in the Khelo India University games. Rather, I'm always there for the hockey and the Kabaddi matches, right? So I've been very blessed to keep calling those matches on the commentary box. Because yes, of course, Kabaddi being my learned sport, hockey being my played sport after cricket. So there, Adira with the short hair. Happy birthday, Adira. She's sitting right to the left of Kavya, who's wearing a blue jacket, blue jersey. So she's the main striker for Mysuru University of the hockey team. And good that, you know, almost the goalkeeper, I should say, Shravya, she's the more experienced one. They've already gone in for, I can't take the bank's name because they have not sponsored us, right? I'm sorry to say that. Right. They have gone in for a selection for to play for a team which is a very good bank in India. So if that bank selects them, they get a job, they get to play. So it's very good. Because see, they've all come in only from the Khelo India University games. And that is such a wonderful initiation from our government of India, the central government, and of course, Sports Authority of India. Whoa, 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 Vignesh! Your midline was that side. Bonus point, Chola. You forgot where was the midline and end line? What was that? Oh, you wanted to take the bonus. Oh, that is intelligent. That's very, very intelligent. What's that? When he saw the right corner or the right cover defense come towards him, it was a smart move. I'm sure that guy eats a lot of fish. Oh man, that was a very smart move indeed. You know, he knew he was going to lose the point and he got that point right now. Kiran has to go in and get a touch point because it's a do-or-die raid. There's no bonus available. He needs to touch the players and the players will just send him out of the mat. And the Humpy Heroes falling short in this do-or-die raid. I think she was telling bye to Kiran, maybe for a little while. She was just saying Kiran, and that was not a very good raid. Wonderful tackle though. They came across, they surrounded him. They did not have any move to get the escape route through. So that is nice. Krishna now needs to understand Suhas Nagaraj is not there. And because of some confusions there with the manager and everybody, Rutik's name was not added in the team bonus list. Bonus point, Cholaviran. And Gautam gets a bonus point. How rare that is. Oh my God. Yeah, I know it's raining heavily in Mysuru and she can feel the cold. All gloves and all gullas coming out. Oh man, the rainy season, honestly, as a sports person, I hate the rainy season. What about you, Naveen? Yeah, same here. Seriously, you know why I hate it? I can't get my morning jog. If I can't run 4.5, 5 kilometers in the morning, the day does not start to me also. I mean, 4 kilometers for sure. He was not ready. He was not ready, Shivkumar. He was napping there. Yeah, I know it's raining outside. It's a nice nap in the morning that you need, but not on the Kabaddi mat, Shivkumar. Yeah, take a look at that. Oh, wow. Very nicely done. He had the opportunity to do it and he did it very quickly. And Gagan Gowda steps into the last minute of this exciting first half where the Chola Veerans have slowly crawled themselves back into this game. It's not very close, but they're still in it pretty much. But they cannot stay in it if Gagan Gowda comes in and keeps scoring points like this. Jersey number 2 out. Why was the necessary for the left-in defender to go for the ankle hold? Ranjit, you're a raider. Come on, you know Gagan was just provoking you for the ankle hold to come in. Mahindra Prasad does not attempt. And as a raider, see, when Mohan Das Vishwamohan is injured,
and when there is no Arun Kumar Anjapuli. It depends on Ayappan Veerapandiyan, and of course it depends on Ranjit to go out there and get points. Narasimha Murthy, I think he wanted to just take a break. Chola Viran, jersey And number Narasimha, the coach, won't be happy with that effort. You could have taken the break after this Off raid, isn't it? time. Change the court. Unnecessary and unplanned block there by Narasimha Murthy, not resulting in anything but Hampi Heroes. Very, very good on the first half. 21 points for them and only 13 because the Chola Veerans are struggling without Raiders. No Arun Kumar Anjapuli and Mohandas Vishwamohan is injured. Yeah, see, that shows, very clearly shows. The Hampi Heroes are much, much higher in the raid points, and of course in the tackle as well. They've done very good today because the corners are firing, and all corners, as me and Ryan will come back soon after a short little break. Stick with us. As we are heading to the next 20 minutes where the Hampi Heroes will want to hold on to this lead, and if they win this match, they can be safe. I won't say they will be guaranteed a position in the next round, but they can be safe. That's what it looks like. As we were speaking about roasting, roasting has worked for Gagan Gowda. We were actually going ahead and actually teasing him, saying, why are you not blocking? Why are you not turning? Why are you not turning right? There you go. He's done well. He's attacked the right flank even more than the left flank. It's all very good today with Gagan Gowda, and the Raiders are struggling for the Chola Veerans because Arun Kumar Anjapuli is going to write a bit of an exam at SRM University. His university there, and he's got some university work to be attending to. So he'll be back in a couple of days, but until then, Chola Veerans need to figure a way out, and Mohandas as well has been injured a couple of times. He's just holding his neck and holding his ears as well, and Madhu Kavirappa today can be taking a little breather because Gagan Gowda is all there with the raid points, and the defense have also done well apart from few errors as well. But also, you know what, more importantly, Ryan, roasting is worked for everybody, and yeah, it has worked for Ryan, and this was a brilliant move from Vignesh, and it has also worked for our EVS operator Ram, because a little bit of roasting, entire replays, whatever we spoke of, was very much alive and kicking. And of course with Deva, who's got his health back in line. As Ryan, we were speaking about how athletes have been very well supported by the university games. I'm sure you will also need to throw some light on that. Yes, Ayappan starts proceeding the second half for the Chola Veerans as they look to come back into this game. And the corner there almost gave away that point, and he was vigilant enough. Doesn't look like a point will come here for Ayappan. And yes, Naveen, it's very important. You know, I personally feel in regards to universities supporting their athletes, because I've seen so many athletes whom I know of personally also, you know, they've had to give up on their dreams because of how the universities don't support them in the right way. And supporting in the right way, good support in the right way done by the players of the Chola Veerans to ensure that Gagan couldn't get back to the midline. And I like the defense where they help him to get up. And this is that old bad habits. They say, right? You know, bad habits die later. This is what it is. This is what we did not want Gagan to do. Turning the pages around on the defender is a long gone technique, Gagan, because there are second line of defenses that they are coming against you. How you escaped in that first raid of turning towards the right, should have done that. Should have done that again. Let's go back to that tackle once again, as this is going to be an empty raid very quickly. Ram, I'm sure, will roll us that one very quickly. Now watch this. Right cover. Gautam comes in.
And look at that. Second line of defense right behind him. Manogar Marimuthu. When two defenders come in, turning the pages does not work, Gagan Gowda. I'm sure you will go back and listen to this match with the commentary also. Old habits die hard, Ryan. I think he needs to burn that habit down very quickly. Yeah, he would have to right now. Ayyappan is the man who has to get a touch point. Did he get through or was he dashed out? The crowd reaction suggests that he dashed out. And yes, he is dashed out. A very good dash to deny Ayyappan in that do-or-die raid. Yeah, Sukesh Kulal, he can't contain himself down, isn't it? There was no touch, but luckily, his left leg stays inside. Ayyappan Veerapandiyan coming into a do-or-die raid, had all the pressure in the world. He had to take that pressure down. And you know what? Until this second half has begun, Hampi Heroes and the Chola Virens had actually got each 1 point just before that acrobatic move there from Madhu Kavirappa on the hand touch. Rider save, 1 point, Hampi Heroes. Jersey number 1 out. Yes, Madhu Kavirappa, the man there. It was all about him yesterday when he got 22 points in that game. Surprising all of us, especially in terms of the scoring. He was unstoppable. And today he's not had a similar day. But I'm sure he's going to relish those days and have some more days like that. And this is not the day for Ranjit because he's been caught by the Hampi Heroes defense once again. Those are the track runners, the athletes. I saw them in the morning in my jog or the run, just trying to interact with them. I never knew they'll come to watch the match. And she is the hurdle runner out there, the hurdle racing. She's sitting right up there on the top rack of the stands. But yeah, just going back to the Raiders, what they are trying to do. Again, turning pages around. This time gets lucky. This time just gets lucky because the right cover was turned around. Jersey number 11 and 9 there was no wait, left cover. See, Manogar. Get back. On that occasion. There. Back kick, turn the pages, old habits dying hard, and he just utilizes his height to reach that midline. Of course, it's a good 2 points, but I will say that it is not a very intelligent one, Ryan. As Mahendra Prasad, he has to come into raid because there are no raiders there for the Chola Virens. And Narasimha Murthy, very easily, frontal block, double thigh hold, gone. And that is another problematic area for the Chola Virens today. Yeah, a problematic area throughout this entire match is when they're raiding, and it will be another point given and another all-out inflicted on the Chola Virens. And Hampi Heroes starting the second half so very strong. Chola Virens with no answer to that, Naveen. Very much. There's no answer for sure. Gagan Gowda, he's got 12 raid points. So Super 10 for the glorious Raider. And I'm still not happy that he's not using the lobby like this. Like this. Brilliant work there from Vignesh. Vignesh Murugesan does well for the couple of points. First, Sukesh Kulal. Eagerness of Sukesh. There. And then Krishna is not a cover defender, and he's a corner defender. He does not know to dash. So left corner and right cover, both gone. Can we have that graphics of Gagan Gowda to see how many bonus points? That is his 13th raid point for sure. Easy hand touch on that right corner, Praveen Kumar Ayanar. Yeah, and if my calculation's right, that's his 164th point. He was 151 coming into this match, and that's plus another 13 points for him. So I'm sure he can finish on a high, and I would like to see how many points he gets all together. We could see if he can try to compete for the all-time points in a particular season. I think it was Lokesh Dahya as 1 point for the Chola Virens. Sukesh has to get back. He was just revived. He was just revived from the bench. Sukesh Kulal. Okay, you know what? In Tulu, Kulal means, I've been telling that every time. It's Kumbhara in Kannada, the guys who make pots. And for the people who making pot, there has to be so much patience. Praveen Kumar Ayanar 1 point, Chola Virens. now shows a lot of patience on the diving ankle hold. And Kiran BS has to go back for a while to join Sukesh Kulal, the pottery maker. And this was a blind raid. No footwork there. I know his right knee is injured, but Praveen Kumar timing on the ankle hold was brilliant.
Chola Veerans, Ayyappan coming in once again in this moment. Can he make use of the situation? The pressure seems to be on the Humpy Heroes right now because the past few raids have not gone their way. Chola Veerans trying to turn things around in this match, and it doesn't look like Ayyappan is going to do anything in this raid. He will wait for the clock to count down, and yes, Gagan Gowda will come in once again. Now watch this. This is what I wanted. Only one bonus point. That means the defense has gone in and tried to pounce on him. He got his Super 10 in the first half itself. He got his Super 10 in the first half. And then it was that journey that came in. I think there's another bonus attempt, but he will not get it. Ryan, only one bonus point. That suggests he's given away unnecessary points. He's got 3 tackle points, yes. But Narsimurthy on the right corner has got his high five. Wonderful work. Shivkumar, solo tackle, dashes out Ranjit. 1 point. That's his first tackle point of the day. Yep, and the gesture of the coach suggests a timeout will be taken, which means we will get to listen to what the coaches have to say to their players. Yeah, Paneer Selvam, let's listen to him. Chola Veerans are trailing big time. Has he been mic'd? No audio came through from Paneer Selvam. Has he been mic'd? I have my doubts. Right. First of all, he speaks very softly. Paneer Raja. And out of all that, I don't know whether its mic is working. Right, Gagan Gowda, wonderful to see him change flanks. See that? I like this. When he changes his variety of raiding. And the back hold, weak attempt. Very weak attempt from Mahendra Prasad. 1 point. He was going towards the covers and going towards the right corner, changing in as a left raider. That was good. Mahindra should have just held back. Wait. Yeah, and I think the idea behind going to the left could possibly be so that he can turn towards the right and find his way back. Anyways, he went to the right and got the point quite comfortably. And Ayyappan here for the Chola Veerans gets the point. Yes. Yeah. Has he gotten it? Yes, he has. Using his legs. Ayyappan stepping in for his team. Jersey number 7 out. Yeah, lovely kick on Madhu Kaverappa. He did not retract back in time. Narsimurthy was playing the highline defense. Madhu had to go back. It was Madhu's error. Does not go back in time. And Ayyappan realized that. Nice kick on the captain. So good that Madhu is now given the responsibility to Gagan. He tries another bonus point. I don't think so he's got it. See, he always goes out there and provokes the right in or the left corner defenders to come in for the ankle hold. And because of his lazy elegance, he does not come out as a very strong offensive raider. Because of that lazy elegance, Rand, the defenders actually get foxed, thinking that he might not kick them out, thinking that he might not oppose their tackle. But they tend to forget that he is 6.3, almost my height. Yep, he is quite tall, and that lazy elegance factor, I'm sure he's like one of those guys who you see on a team who's just always, so lanky. You don't expect them to be such a player, and the moment they step on court and start performing, they're a different beast altogether. Yeah. And the beast is what Gagan Gowda has been throughout this entire season, scoring points, being so dominant. Already 15 points with an entire 10 minutes remaining. You think he could eye that 22-point mark set by Kaverappa yesterday, Naveen? I'll tell you what, I just don't simply call him a glorious raider. He's one man who's not behind numbers. Very correlating to, of course, our one great batter, Mahendra Singh Dhoni. Of course, he's wearing 777, so double Dhoni inside him. Right. He's cool, he's calm. Of course, not as Dhoni, of course, never ever lazy like Gagan. That lazy elegance. 777. So one man, Dhoni, was not behind numbers at all, and that's why he's respected so much by everybody. And that's why we call him Tala Dhoni, and that is what Gagan is. He's not behind numbers, Rand. I generally ask him, do you know what's your raid numbers? Does he turn right? No, does not turn right, but still gets lucky because of his height. Ryan, that was a very good tackle by Gautam, I'll tell you that. But without turning right, old habits die hard. Gagan, you cannot escape with others by this. Now just imagine if the left cover defender could have gone for his legs.
10 out. Isn't it? That could have been a nice tackle. 16 in, 14 out. Yes, as substitutions 16, 14 take out. place. That was the right point there, Naveen. Right. If the left side came in, the point could have gone the Chola Virans' way and Gagan Gowda could have been stopped. But now we have a do-or-die raid. Vignesh coming in, 5 8 points for him. Right of save. Can he add on to 1 the point. 5? Yes, Chola he can. The dash was not good enough and the Chola Virans will get another point. No. Shiv Kumar again from that right cover. Madhu wants a review. Madhu Kavirappa is insisting for a review. Yes, they will go for the review. They think the raider is out. On a do-or-die raid. TV Ayappan umpire, Veerapandiyan, Humpy Raki Heroes asks for the challenge is review. raider out. Our decision, raider save 1 point. Please review. Sagar Panchal has trained her very nicely. He was training everybody to speak on the mic. That's Sagar Panchal's training as well for Raki. But here, Ayappan. Has he gone outside the lobby? Yeah, I think looks like he's gone outside the lobby and come in from the outside of the lobby. What a lovely review here by the Humpy Heroes. But I'll tell you something. This is just my perception. The decision remains with Rambir Singh. Whatever Rambir Singh says, that's final. Right? Here's the only way that I can't have my say. Yes, very true. But that's a good perspective there, Naveen, because it is very true what you said. And I'm sure the TV umpire will be smart enough. There we go, Naveen. What you said is what's taken place. A very good review taken by the Humpy Heroes and Madhu Kavirappa there sanctioning the decision, calling for that review, and that is brilliant captaincy also right there, Naveen. He is a very, very thinking captain. As Teja Nayak was being substituted in, and after Gagan Gowda, if somebody else gets a huge cheer, it's Teja Nayak. And he needs to just respond with a nice raid points. He's got a good fan following. Ankle hold attempt. No, Praveen Kumar Ayanar. What is happening today? Raider save. The defense is 1 completely point. shattered. Humpy And the track Jersey number 14 runners love it. Yeah, enjoy that as well. See, you have your own advantages to the going to the gym, isn't it, Ryan? See? Right. Hello, I'm talking about raiding skills, huh? Don't get me wrong. All those cheers, I can relate to that. I didn't get anybody wrong. It depends on how people interpret it, but yes, I'm sure we all know what you mean. Bonus plus 1 point, here Chola once Virans. again, bonus plus 1 taken Jersey by the number Chola 1 out. Virans. Very important point there because they were down to just 2 men, and here Ranjit has stepped up to the occasion to revive one more. Yeah, Narasimha Murthy first failed tackle. They need what? He says no bonus. TV umpire, Humpy Heroes challenge is no bonus point. Our decision, bonus point. Please review. Yeah, see? No bonus point. I think Madhu Kavirappa saw that very nicely. No, this time he's going to lose it. It's a clear bonus point. Your landing foot is crossed the bonus line and your trailing foot is in the air, and then the defender goes for the ankle hold. If Narasimha Murthy could have gone for the ankle hold the moment the bonus was being done, then the bonus couldn't have been given. But it was bonus Review plus 1. Humpy Heroes will lose their bonus plus review. 1 point, Chola Virans. Yeah, Captain, bonus plus 1. No more reviews. Yeah, Madhu Kavirappa. Right, this time not getting it right. But look at that. All the labor work is being done by the defender. Narasimha Murthy, who's got his tackle points high-fi. He's got none of the girls cheer for him. Yeah, such a cruel game, this cricket and kabaddi. Every time, batters, raiders, only they get the cheer. Look at the labor work that we bowlers do. And I will support the bowlers like, what, 60, no, wait, hang on, 55%? Because I'm an all-rounder. So I will also support the defenders. Right. It's a defenders game also. Why the girls don't cheer for defenders? Come on. Even they go to gym, girls. Come on. As there's a strategic timeout. Now Ryan will listen to Narasimha. I will listen to, I think, Raja. தேவையில்லாத பாயிண்ட் போகக்கூடாது. என்ன பண்ண நீ ஸ்கோர் பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும்னா செகண்ட் மேனு தேர்ட் மேனுக்கு ஆடி ஃபர்ஸ்ட் மேனுக்கு போ. அவன் என்ன பண்ண நேராக ஃபர்ஸ்ட் மேனில் ஆடினா அவனை அடிஷனல் லாபி வெளியே சூப்பராக இருக்கும். ஒரு ஆள் நமக்கு ஒன்று நீ ரிசல்ட் ஆகும். ஒரு ஆள் எனக்கு வேணும். யாராவது ஒரு ஆள் ஸ்கோர் பண்ணணும். புரியுதா நான் சொல்ல பார்த்தேன். ஏன்னா 2 டிஃபென்ஸ் எனக்கு கௌதம் வெளியே வரான் உள்ளே வந்துடும். புரியுதா எனக்கு ஒரு ஆள் தொட்டணும் அழகாக நேக்கா உள்ளே வந்தாலும் இங்கே அடித்தா இண்டிவிஜுவல் டிஃபென்ஸ் இதெல்லாம் போகக்கூடாது. இது ஆடும் மேட்ச் ஈக்குவலாக ஏற்றணும். ஒன்றும் மேட்ச் ஈக்குவலாக ஏற்றணும்னா மேட்ச் மாற வாய்ப்பு இருக்குது. புரியுதா சொல்ல வரது பாயிண்ட் போகக்கூடாது. லோனா போகக்கூடாது. Brilliant point. Brilliant point from Raja. What is Narasimha saying? யோசிச்சு பாடா இப்போ மேலே விடும். What is Narasimha saying? Quickly. Deva? Oh, Deva's dozed off.
Deva, my good friend. Yeah. Right, we really wanted to listen to what Narasimha also was trying to say. I think Deva, yeah, we'll speak to him later. But nevertheless, what did Paneerselvam Raja say was to Ranjit, I need a touch point. You go out there and attack the right in or the left in position. And the defender was trying to say, no coach, we will go ahead and attempt in the super tackle. But he says no, never, ever. And that is the hockey team enjoying the proceedings. And see, Teja Nayak gets all the cheer in the world. Come on, girls, cheer for the defenders also. And Teja Nayak has hardly got 15-20 points in the entire summer edition. And do the girls know that, Ryan? I don't think so. I really don't think so. Yeah, well. I think one defender stepped out of the lobby. 1 point. Yep. Oh, that's an extra Jersey point given number away. 19 Mahindra out. Prasad. He stepped into the lobby without a touch. This is... and Mahindra Prasad was the one, seconding and questioning the coach's thoughts in that timeout. I'm sure he'll have a good conversation with his coach once he meets him now. And Ranjit here has the duty now to revive a man and make things even more easier for them. He will not be able to make things easier for them because a very good ankle hold comes in. And the 40th point for the Humpy Heroes here. They hit 50 yesterday. It looks like they're aiming for another 50 today, Naveen. And what was I really impressed of is the left corner and the right cover combination. Sudarshan comes in as Krishna was taken off because Suhas Nagaraj still with the bleeding nose. I think he will not probably come back into the match. And this is the third all-out. Right, Chola Virins. 1+2, 3 points. Raja said, all out. the all-out nambalukku varakudadu. That's what he said. I don't want this all-out, he said. And the defenders have not understood it. I think Raja kicked the barricade in anger. Time out. Humpy Heroes. It's a very sweet coach, I'll tell you that. But the Humpy Heroes' audio is having a disturbance. That's what Simbu, our audio engineer, told me. That's why we have to listen to Raja. அந்த இடத்துல ஆனா எப்படி நீ டச் பண்ணுவ எதற்காக வராங்களா போனஸ் ஓபன் தான் விடுவானே போறவங்களுக்கு சொல்றது புரியுதா நான் நீ ஆடு செகண்ட் மேன் இழுத்து அடிக்க வச்சு எனக்கு ரிலீஸ் வா ஸ்ட்ரகிள் உருவாணும் He still wants the Raiders to get points and he is very much clear on Ranjit Devaranga to go out there and get points. Stay back, Sudarshan, on the right cover. Sukesh Kulal on the ankle hold. He gets a high five. 1 point. And look at that. Oh, thank you, girls, for cheering for a defender. Thank you so much. Oh yeah, we can see the crowd going wild for the defender, and I honestly believe, Naveen, in any sport where there's offense and defense, I'd say the true elegance does lie in defense, and I'm sure any sports person will agree with me on that. Totally. I don't second your point. I actually first your point. Yeah, no, I think every good coach has also said this, good defense always leads to good offense, and Gagan Gowda here, I'm sure also a Raider also would, if we speak to a Raider, I'm sure they might also talk about how whenever their team makes a defensive play, how much of confidence it gives to a Raider to step in for the next play. Totally. No doubt at all about what you said. He's on 18 raid points, Gagan Gowda and Ranjit Devaranga. The coach needs him to get points. He is asking the Raider to go out there and attack the in-defenders. And Sukesh Kulal, once again, third time successful on the diving ankle hold. Along with the cheer, they're also whistling for him. He's got his 6th tackle point. The pottery maker is making a mockery of this raiding here. Yeah, I mean, Sukesh Kulal is going to definitely get a lot of extra followers on Instagram today because he's putting it out there. A very good performance from him on the defensive end, back to back. And the Humpy Heroes have gone 2 times up the Chola Virins right now. Teja Nayak comes in, just a single raid point for him. It's not a do-or-die raid, so I don't think he's going to force himself into getting a point. Yeah. Tell that loudly, Ryan. Let the girls listen to that. 1 raid point. And I will next time ask Teja Nayak to wear full pants. I think then the cheers will go down a little. What do you think, Ryan? Yeah, well, the fact that you mentioned his legs, I did see a I didn't say legs, I just said full pants. Hello, don't interrupt me wrong. No, I'll also agree, he has
really good legs, honestly, because Right, you know sir. it's one of the 1 most. point. You know, people Chola don't Viran. train legs. You know, and it's Jersey very number important 4. to train legs. Yeah. You do need Yeah, to have take me for strong that. calves. You know, that's. I honestly flex my calf muscles more than anything else to people because obviously, you know, legs is the toughest part to work out, and you do need a lot of discipline to train your legs. Correct. You definitely need a lot of discipline to train legs, and yeah, that's one thing that I generally try avoiding it. Do-or-die raid! Mahindra Prasad is it? He's twisted his Right, back. sir. He will 1 point. escape MP Heroes. the do-or-die raid. Gagan Glorious got up, but what has happened there? What has happened there? I think he's twisted his leg. Oh, not looking good. Shouldn't have done that, Mahindra Prasad. What was happening? I think, right knee. Right knee. Just got under the waist of Gagan Gowda. Gagan also was very, very concerned about that. That'll take some doing. That'll take some doing. Right. And I'll tell you what, he did not turn his thighs on the other side, so his ACL is okay, Ran. I feel his ACL is okay. It's just a twisted. Oh my God! Oh my God! Sukesh Kulal. Rider save. 2 points. 3 consecutive Chola tackles Viran. successful, and Jersey this number time 4 and 6 there was out. no coordination at all from Sudarshan and Sukesh. Yes, completely looked off there. Take a look at that. The way he got the second point. He was going to go try get his third, but yeah, he was happy with 2. And look at that. Teja was ready to step in for the raid there also. Naveen. Substitution. Yeah, he was ready. 6 in, 19 out. Oh, this is not looking good for Right. the Chola Virans. Tamil Vandan Kuppuswamy comes in place of Mahindra Prasad Dandapani. All the bench has been tested. Mohan Das, Vishwa Mohan getting injured. Mahindra Prasad getting injured. Not Rice. Tamil Vandan. Rider Right. save. Oh, 1 that's point. Manogar. MP Heroes. Nevertheless, Manogar Jersey going in number from 9 that left out. corner for blocking Gagan Glorious Gowda. Does not get it. Yeah, that's his 20th point. Gagan Gowda here coming out scoring 20 points. And this is another big victory for the Humpy Heroes, Naveen. Yeah, massive victory. Double Super 10 for the glorious Raider, the top Raider of this Yuva Kabaddi Series Summer Edition 2023. And I'll tell you what, the problem there is the injury concerns. On the mat injuries, yeah, you can't do much about it. But losing out Mohan Das was a big loss today for the Chola Virans. And the Humpy Heroes have scored, say, 26 points in the second half, Ran. 26 points in the second half. And the Chola Virans, of course, have got only 12 points in the second half. So they were 13 in the first half. And then that has been a very sad story in the second half as well, Ryan, as we take a look at some of the high pointers of this match. Yes, a lot of exciting clips from this game, especially the second half where we saw Madhu Kaverappa get a good raid over there, and a lot of instances where the Humpy Heroes defense came out strong and got the better of the Chola Virans Raiders, but it was majority of Gagan Gowda getting past the Chola Virans offense. Not to forget this very good tackle coming in from the Chola Virans. They did have their points come in when it came to tackling, but they couldn't do it consistently. They couldn't keep Gagan out for too long, and that's why they paid the price. This kick was a very nicely executed kick on Madhu Kaverappa. Not to forget Gagan coming back and once again getting those 2 pointers. He scores in 2s. He loves to score in 2s, and that led to a good review, the previous raid over there, which went in favor of the Humpy Heroes. Not to forget, another tackle point coming in for them. Back to back, done by Sukesh over there, that got the crowd going and getting the defensive credit, but then errors were made post that. Anytime an error is made by the Humpy Heroes, Gagan Gowda goes in and compensates for it. That's what he's done throughout the season, and that's what he will continue to do for his team, hoping they can come out on top. That's why he's the top raider of the season, and he showed us why he is glorious indeed. Yeah, definitely. No doubt about that. And I also love the way he brought in all those changes in his raiding skills, all those varieties, the turns, the attack on the right flank, the right covers and the right corners. And that is why out of 24 points, Gagan Gowda himself has got 20 raid points. And then 19 raid points only for the Chola Virans, which is okay, which is good. But the defense of Humpy Heroes, wow.
they won the war with their defense. So two defenders get a high five. One Narasimha Murthy and the other one Sukesh Kulal. So both the corners getting high fives. It's a brilliant combination work there for the Hampi Heroes. As we will see Gagan Gowda's stats, strike rate of 80%. Wonderful work for the glorious Raider. He goes out there on the topmost of the list, and Sukesh was also very, very good in the defense lines there, Ryan. Yeah, Sukesh Kulal, the best defender of this match. 12 tackles in total, a strike rate of 50 because he had 6 tackle points, and he was on a roll, especially in that second half. Got a lot of fans as well. Yeah, very much. And that too, after I asked the girls to go for it. I hope they don't listen to the on-ground commentary. Yeah, they can't listen to it. They can only listen to it live and exclusive on Fan Code. But Hampi Heroes, number 5. They get their second victory, and they kind of are now safe. But not true. They are actually safe if the Palani Tuskers and Aravali Arrows start winning a lot of matches. And that can be a very neck-to-neck competition to get to the next round. Of course, Chola Virens losing their second match in a row, and today a little more concerned because of the injury worries. But nevertheless, we have another match coming up. Periyar Panthers against the Sin Sonics. Can this be the first victory for the Sin Sonics? We'll find out soon at 8 p.m. I'm Navin Shori alongside my elder brother Ryan James. It was a wonderful time, Ryan, in the commentary box with you. Thank you so much. See you soon. So Hampi Heroes got their big win against Chola Virens. Welcome to the post-match presentation of match number 84 of Yuva Kabaddi Series Summer Edition 2023. We would like to start this presentation with thanking all our partners. First, our broadcast partner FanCode, Fantasy partner Dream 11, our physio partner Department of Sports Science, Jesus College of Physiotherapy, hospitality partner Chincha Hotel, our healthcare partner Rama Krishna Specialty Hospital. और आज हमारे साथ presentation में मौजूद है Miss शैलेश्री M, Social Welfare Officer. A huge welcome in the post-match presentation. Ma'am, ये मुकाबला खेला गया हम्पी हीरोज बनाम चोला वीरन्स। एक बहुत ही अच्छा मुकाबला था जहां पर चोला वीरन्स शुरुआत की 3 जीत के पश्चात लगातार दूसरी हार यहां पर सफर करते हुए नजर आए और हम्पी हीरोज ने इस बूस्टर राउंड में एक बड़ी जीत यहां पर प्राप्त की है। सीधा चलेंगे अवार्ड्स की तरफ, शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रीडर ऑफ द मैच के साथ। So he is back after a marvelous 20 points. He is none other than Gagan Glorious Gowda. Let's have a look at his performance. Wonderful escaping his skills along with all the marvelous running hand touches. He got all in his kitty. But now the time for the best defender of the match. One more time, the crowd favorite from the team of Hampi Heroes is Sukesh Kulal for tackling his 6 tackle points in his kitty now today. Let's have a look at his performance. और अब समय कबड्डी कमाल ऑफ द मैच का तो कहना पड़ेगा द मोस्ट कमाल प्लेयर ऑफ द सीजन गॉट दिस अवार्ड ही इज नन अदर देन बट आवर वेरी ओन सुपरस्टार गगन गौड़ा 28 points.
So he's blushing all round, but that's all from the post-match presentation. Thank you so much all for joining us.
नमस्कार, स्वागत इस्तकबाल आप सभी का। मैच नंबर 85 पेविया पैंथर्स के सामने सिनसोनिक। नहीं, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि सिनसोनिक की टीम आज के दिन का आखिरी मुकाबला खेल रही है। हमने ये सोचा नहीं था कि जो टीम आखिरी पायदान पे होगी उसको आखिरी मुकाबला खिलाया जाएगा। युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन 2023 पेविया पैंथर्स दूसरे पायदान के ऊपर अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल दोनों टीम्स को मैट पे आना होगा। ओवर टू हर्षित। The Panthers are on the mission to conquer their opponents. Will they continue this streak? Let's have a look and invite them with all your applause. Let's give it up for Peviya Panthers! And after them, here we are inviting the Yellow Brigade जो shine करना चाहेंगे और rise करना चाहेंगे. Give it up for Sonics! You have got the ability to do the best when you are least expected, and that's what Sinsonic will be thinking before entering the bat on the match. But on the other hand, the opponent, that's Peviya Panthers, बहुत अच्छा खेलती हुई नजर आ रही है। दूसरे पायदान के ऊपर है लोकेश गोसलिया की कप्तानी इस टीम के लिए काम आ रही है। कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर अनुज भी उनका अच्छा साथ निभा रहे हैं। पेविया पैंथर्स के स्क्वाड पे निगाह डालते हैं रोहित यादव, रिचपाल जाट। पिछले मुकाबले में रिचपाल को स्टार्टिंग 7 में जगह नहीं दी थी, लेकिन सब्स्टिट्यूट करके लाने के बाद इस खिलाड़ी ने जैसा परफॉर्मेंस दिखाया कोच को मजबूर किया स्टार्टिंग में जगह देने के लिए। लेफ्ट इन के ऊपर सरदार चौधरी है, इनकी भी वापसी। कल के मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आए थे, लेकिन आज शुरुआती 7 में जगह मिली है। अनुज सैनी, लोकेश गोसलिया कॉर्नर के ये दोनों खिलाड़ी अपनी रोल को अच्छी तरीके से जानते हैं। राइट कवर के ऊपर राहुल है, लेफ्ट कवर के ऊपर आपको मोनू प्रसाद नजर आने वाले हैं। गोपाल को बाहर बिठाया गया है। कनरराम, नकुल, मुकेश, मंजीत मित्रा को भी आज बाहर बिठाया गया है। 3 परिवर्तन करे हैं आज इस टीम ने, जिसका नाम पेविया पैंथर्स है। लेकिन कॉम बॉक्स में मेरा साथ देने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर, जिनका नाम नवनीत है। स्वागत है नवनीत। शुक्रिया आयुष। मिडिल में आज राजू सिंह रहेंगे सिनसोनिक्स की तरफ से। कवर्स की बात करें, दाहिने तरफ रितेश कुमार, बाईं तरफ विनोद कुमार। इंस की बात करें, राहुल गोपे रहेंगे दाहिने तरफ, प्रिंस कुमार रॉय बाईं तरफ। कॉर्नर्स में रहेंगे मोनू कुमार एक तरफ और दूसरी तरफ रहेंगे रोहित सिंह। इसके अलावा प्रेम मंडल, हरेंद्र कुमार पासवान, अंगद कुमार ठाकुर, विकास शर्मा और अंशु सिंह। ये है लाइनअप आज आयुष। हेड टू हेड मुकाबले, 2 मुकाबले खेले गए, दोनों के दोनों पेविया पैंथर्स के पक्ष में गए हैं। हालांकि बूस्टर राउंड में सिनसोनिक के पक्ष में गया क्या है, एक भी मैच इस टीम ने जीता नहीं है। कोशिश जरूर करेंगे कि पेविया पैंथर्स को पटक नहीं दें, लेकिन जो शुरुआती फेवरेट्स है वो निश्चित तौर पे पेविया पैंथर्स की टीम रहने वाली है। इस एडिशन के अंदर सबसे ज्यादा रेड पॉइंट यदि किसी ने निकाले हैं तो गगन ने। पिछले मुकाबले में भी इस खिलाड़ी ने सुपर 10 2 बार लगा लिया, सुपर 20 कर लिया। 171 पॉइंट 17 मैचेस के अंदर, 140 पॉइंट संस्कार के नाम है। 131 पॉइंट निकालने वाले दुर्गेश कुमार 15 मैचेस खेल के फिलहाल तीसरे पायदान के ऊपर मौजूद है। नवनीत, बिल्कुल, एक तरफ गगन जो उनका पॉइंट्स है गगन की तरफ, और लोकेश जैसा जय सरम गोसलिया 19 मैच 56 पॉइंट। इसके अलावा अंकित जाट 20 में से 55 और राजेंद्र भाकर 18 में से 42 पॉइंट। तो ये है टॉप 3 डिफेंडर्स। इसका मतलब है कि इस मुकाबले के अंदर युवा कबड्डी सीरीज के इस एडिशन का अब तक का सबसे अद्भुत डिफेंडर उतरने वाला है लोकेश गोसलिया, जो कप्तान भी है। ओपोनेंट टीम सिनसोनिक के कप्तान राजू, उन्होंने टॉस जीता है और टॉस जीत के लेफ्ट कोर्ट का फैसला किया। पेविया पैंथर्स की टीम मुकाबले की पहली रेड लगाती हुई नजर आएगी। हमारे गेस्ट श्रीनिवास वहां मौजूद थे, रेफरी ने उनको धन्यवाद किया टॉस पे आने के लिए, और रेफरी के जस्ट पीछे ये वो चमचमाती सी ट्रॉफी है जिसके लिए सारे मुकाबले खेले जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खेल यदि कोई दिखाता है तो वो खिलाड़ी बेस्ट डिफेंडर के तौर पे अपने हाथ पे ये बेल्ट पाता है। लोकेश गोसलिया 19 मैचेस खेले हैं, टैकल पॉइंट 56 है। पिछले मुकाबले में 5 टैकल पॉइंट मिले थे इस खिलाड़ी को। टैकल का स्ट्राइक रेट 51 का पहुंच चुका है। हम देख रहे हैं नवनीत, हर बीतते दिन के साथ इनके स्ट्राइक रेट के अंदर इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल इजाफा हो रहा है, और लोकेश की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और राहुल गोपे दूसरी तरफ 16 मैच 71 पॉइंट।
और स्ट्राइक रेट देखिए, कोई भी जो स्टूडेंट होगा अपने से उस प्रतिशत से खुश होगा, 86.58। बिल्कुल खुश होंगे, लेकिन यदि आप वो परसेंटाइल की बात कर रहे हैं तो आजकल के बच्चे जितने मार्क्स ला रहे हैं लाना बहुत मुश्किल। पेविया पैंथर्स 20 मैचेस खेले, 12 मुकाबले जीते, 8 मुकाबले गंवाने पड़े, विन परसेंट 60 है, फर्स्ट डिवीजन के साथ पास होती है टीम नजर आ रही है। विशेषकर बूस्टर राउंड बहुत अच्छा गया इस टीम का, इनके कप्तान ने टीम को अच्छी तरीके से संभाला है, डिफेंस सदा हुआ खेल रहा है, सरदार आज टीम के अंदर वापस आए हैं, रिचपाल को स्टार्टिंग 7 में जगह मिली है, एक्सपेक्टेशन पर्सनल फेवरेट यही टीम रहेगी। आस्क द एक्सपर्ट, और ये वो समय आ चुका है जब हल्का सा मन घबराने लगता है। Are Peviya Panthers the best team when it comes to the super tackle situation? Yes, I believe they are at least at the top 3 positions as far as this edition is concerned, because corner और cover का जो coordination है वो मुझे लगता है इस टीम का बहुत सदा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरफ जब लोकेश घोषालिया रहते हैं तो आप कह सकते हैं कि सुपर टैकल में उनका अच्छा चांस रहता है और वो टॉप डिफेंडर्स है। दूसरी तरफ सिंसोनिक्स की बात की जाए, 18 मैच, 6 जीत 12 हार, इस प्रतिशत से तो खुश नहीं होंगे, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं 33 में आप पास हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, और उसमें मुझे लगता है पॉइंट्स में कुछ ज्यादा भी मिले तो इनका काम चल जाएगा। नवनीत, आपके लिए सवाल आया, पूछ रहे हैं कैन सिंसोनिक मैनेज टू गेट एटलीस्ट 1 पॉइंट, एटलीस्ट 1 विन इन द बूस्टर राउंड? इज सिंसोनिक वीक डिफेंस द रीजन फॉर देयर लॉसेस? और उज्जवल का ये सवाल है। जी हाँ, जब सवाल कैन होता है और आप होप हमेशा रखते हैं तो आप इस चीज की भी होप रख सकते हैं कि एटलीस्ट एक जीत तो उन्हें मिलेगी। उज्जवल, हमारे दोस्त, आपने देखा होगा काजीरंगा राइनोज ने एक मैच जीता था, उसके बाद वो हमसे अलविदा लेके गए थे। सिंसोनिक के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है वो दिन आज आ जाए। एक्सपेक्टेशंस कभी भी कुछ भी कर सकती है, और सिंसोनिक हालांकि पेपर के ऊपर ये टीम अच्छी नजर आती है लेकिन मैच के ऊपर शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, लेकिन अब परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समय हो चुका है काउंटडाउन का। आज की शाम का आखिरी मुकाबला शुरू हो चुका है। सागर जो मुकाबले के रेफरी है उन्होंने इशारा कर दिया है, पहली रेड सरदार चौधरी निकालने के लिए आए हैं। पेविया पैंथर्स की तरफ से पिछला मैच इस खिलाड़ी ने मिस किया था, उसी के चलते थोड़ा सा दबाव इनके ऊपर जरूर होगा। जो परफॉर्मेंस कोच को शायद थोड़ी सी कम लगी थी, क्योंकि इंजरी कंसर्न मुझे ऐसा कुछ विशेष नजर इस खिलाड़ी के पक्ष में आया नहीं, इस वजह से आराम कराया गया। चेन टैकल से बचकर निकलेंगे, राइट कॉर्नर, राइट इनको बाहर करके आएंगे। पेविया पैंथर्स ने खाता खोला। जी हाँ, बिल्कुल। पहले रेड में सरदार वहां पर असरदार सिद्ध हुए और यहाँ पर देखिए निरस्त किया, डिफेंस को डुबकी लगाई, उनके पैर को पकड़ा गया लेकिन उसका कोई असर नहीं है और सरदार 3 नंबर की जर्सी पहन के 2 पॉइंट लेकर के अपने टीम का खाता खो दिया। दूसरी तरफ आए हैं राजू सिंह। पेविया पैंथर्स जो कि सबसे टफ ऑफ द डिफेंडर्स में से एक है, राजू ने उनके बीच में से बोनस निकाला है और सिंसोनिक का भी खाता रेड में खुल चुका। हालांकि डिफेंस पे 2 खिलाड़ी मैच पे कम हुए थे, उनका रिवाइवल अभी तक नहीं आया, क्योंकि बोनस आपको सिर्फ 1 अंक देता है। रिवाइवल के लिए आपको टच लगा के आना होता है। रिचपाल ने जंप लगाया लेकिन शोल्डर्स में फंस गए मोनू के। मोनू ने सिंसोनिक के डिफेंस ने शुरुआत कर दी है। जी हाँ, वहां पर रेड एक मूवी भी है और यहाँ पर डिफेंस में पॉइंट मिला है तो डिफेंस का भी खाता खुल गया है। 2 और 2 यहाँ पर बराबरी का सीन दिख रहा है। राजू सिंह गए हैं सिंसोनिक की तरफ से। आज दर्शक चाहते हैं कि सिंसोनिक भी एक जीत लाए और अपने फैंस को जो कि इंतजार कर रहे हैं जीत मिले उन्हें। बोनस प्लस पॉइंट सिंसोनिक, नंबर 15 आउट। बोनस के साथ पॉइंट है, रोहित को बाहर जाना पड़ेगा। इनकी पोजीशन के ऊपर थे, एंकल होल्ड करने के लिए चले गए, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, उनके सामने से बोनस निकाला जा रहा था, उनको टीज करा जा रहा था और शायद वो जज्बातों पे काबू नहीं रख पाए। और जब आप जज्बातों पे काबू नहीं रखेंगे, ना ही आपके जज्बातों की और ना ही आपकी खुद की जगह उस मैच पे बनेगी। 2 अंकों का फासला है नवनीत। यह फासला 2 अंकों का, 2 मिनट का खेल गुजरा है। फिर से एक बार सरदार का नाम जब भी आता है वर्ड मेरे मन में आता है असरदार, और ये खिलाड़ी पहला रेड में दिखाया कि वो कितने असरदार है और इस बार खुश है। वो एम्प्टी रेड के साथ वापस जाना पसंद करेंगे।
पैविया पैंथर्स की यही थोड़ी सी कमजोरी रही है। डिफेंडर्स सब अच्छा खेलते हैं, लेकिन रेडर्स के ऊपर में जो मोमेंटम की दरकार होती है वो शायद उतनी अच्छी नजर अभी तक इस मुकाबले में आई नहीं है। इनफैक्ट ज्यादातर मुकाबलों में नहीं। अनुज और उनके साथ में लोकेश गोसलिया है। अनुज कॉर्नर की पोजीशन फिलहाल नहीं संभाल रहे। कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर सरदार चौधरी खुद जाकर खड़े थे। नहीं, सरदार इनकी पोजीशन, सेंटर की पोजीशन के ऊपर। उसी बीच एक एम्प्टी रेड, एक और एम्प्टी रेड यहाँ पर आए हैं अनुज सैनी। अनुज सैनी सिर्फ इनका जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसमें तो तेज है ही, पर बहुत ही दिमाग से खेलते हैं। और देखिए इस बार पूरे सोच समझ के साथ ध्यान दे रहे हैं कि किस खिलाड़ी को छुआ जाए, क्या टो टच किया जाए, इसकी नज़र में है। लेकिन बोले कि मैं जा रहा हूँ, वक्त गुजर रहा है। और जब वक्त गुजर जाता है, शाम होती है, सूरज ढलता है, तो आप अपने घर चले जाते हैं। पैविया पैंथर्स के हर बीतते दिन के साथ अनुज के ऊपर वो रेडिंग की जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। 5 का डिफेंस या प्रिंस कुमार रॉय के लिए है। कॉर्नर अपनी टीम के लिए ये भी संभालते हैं और साथ ही साथ रेड भी लगाते हैं। पिछली बार डिफेंसिव एरर के चलते बाहर चले गए थे, इस बार रेड करके पॉइंट निकालने का मौका है। लोकेश के सामने गए, फिर उन्होंने एंड को चेंज किया, राइट कॉर्नर की तरफ रनिंग एंड टच मारा और शायद वो क्लेम सक्सेसफुल भी रहेगा। पैविया पैंथर का राइट कॉर्नर बाहर। जर्सी नंबर 5 पहन के मोनू प्रसाद खड़े थे और इस बार वो प्रसाद उनके पक्ष में जाएगा नहीं नवनीत। जी हाँ, 5 का जो घर था उसमें 5 नंबर के खिलाड़ी को जाना पड़ा है बाहर। घर बचा 4 का। 3 नंबर के खिलाड़ी फिर से सरदार एक बार आए हैं और डू और डाई रेड लगाना पड़ेगा। सफल होंगे तो एक खिलाड़ी वापस आएगा, लेकिन एक और वापस जा सकता है अगर सरदार यहाँ पर आउट हो जाएंगे। और सरदार के पास बोनस निकालने का मौका भी है क्योंकि डिफेंस इंसोनी का पूरा हाउस पैक है। अब बहुत लेट हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि सरदार को यहाँ पे टच के लिए जाना चाहिए। फटाफट से पहले वो बोनस इंश्योर कर लेना चाहिए। ये फ्रंटल ब्लॉक आ गया, डबल थाई होल्ड। सरदार ऊपर से उठा के नीचे पटक दिए गए। जी हाँ, लगातार पटखनी खा रही है पेरियर पैंथर्स की टीम और सिंध सोनिक्स। दर्शकों को उम्मीद थी, शुरुआती क्षणों में लगातार अच्छा प्रदर्शन। यहाँ पर 4.5 मिनट का खेल हो गया है। सुपर टैकल का मौका और ऐसा ही एक सवाल आज आया था, क्या सबसे अच्छी टीम है? और यहाँ पर दिखा दिया है कि बिल्कुल सुपर टैकल के सिचुएशन में पेरियर पैंथर्स कैसी टीम है। लोकेश गोसलिया की हम बात कर रहे थे, वहां पर मौजूद था और सुपर टैकल हो गया है। लोकेश गोसलिया सबसे सेफ हाथ, डबल थाई होल्ड के लिए चले गए। हाथ थोड़े से फिसले, एंकल को नहीं छोड़ा। राहुल का सपोर्ट आया और अनुज जो कॉर्नर की पोजीशन संभालते थे, डिफेंस करना तो उनको भी बहुत अच्छा आता है। सुपर टैकल, एक नहीं 2 पॉइंट लिए। पैविया पैंथर्स अब 2 अंकों से पिछड़ रही है, लेकिन ये फासला मान के चलिए कम किया जा सकता है। रिचपाल जाट जिनका रिवाइवल मिला है, ये एक रेडर है। फ्रंटल ब्लॉक रितेश का खारिज, हाफ हार्टेड कंफ्यूज से। नंबर 66 आउट। जी हाँ, हाफ हार्टेड। और हम अक्सर बातें करते हैं मैं और आयुष कि हाफ हार्टेड नहीं चलेगा, कुछ भी काम करना है तो दिल लगा करके करिए। मैंने बहुत पहले कहावत सुनी थी नवनीत, मेरे एक कजन थे, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए दुनिया में आए हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। अब अगर आप मन लगा के काम करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे तो तरक्की होगी, और नहीं करेंगे तो काम तो करना ही है। तो डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। 5 का डिफेंस है, तो टच करने का डिसाइड किया। रोहित को टच किया भी है या नहीं ये देखना पड़ेगा, अभी तक कोई टच नहीं। रिचपाल जाएंगे अगली रेड पे। रिचपाल, इनके नाम में वो जो शब्द है रिच यानी कि धनी, अक्सर आप देखते हैं कि धनी राम इस तरीके का नाम रहता है भारतवर्ष में, लेकिन रिचपाल ये बहुत ही मॉडर्न नेम मुझे लग रहा है। और 5 का घर, यहाँ पर बोनस नहीं है, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा रिचपाल को। नवनीत, राजस्थान की यही प्रथा है। अश्विन वहां बैठे हैं, हमारे आज के मुकाबले के मुख्य अतिथि वहां बैठे हैं। राजस्थान की जो प्रथा है नवनीत, वो ये है कि नाम थोड़े से उलट पुलट रखे जाते हैं। जैसे जिनका नाम भूरिया रखा है, उनका कलर एकदम फेयर होता नहीं है। ऐसे नाम थोड़े से उलट पुलट रखे जाते हैं। जिसका नाम विकास है, उसकी हाइट सबसे छोटी होती है। जी हाँ, कमाल की बात। मेरे एक मित्र हैं और उनकी माता जी ने मुझे कहा कि पहले वो अपने बेटे का नाम विशाल रखने वाली थी, लेकिन नाम इसलिए नहीं रखा, वो डर गई कि कहीं वो लड़का बड़ा नहीं हुआ, वो समझा। अब
अपने नाम को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन डू और डाई को जस्टिफाई करना पड़ेगा। राहुल गो पे रेड लगाने के लिए आए हैं। आमतौर पे इनको सिर्फ और सिर्फ डू और डाई के अंदर भेजा जा सकता है। कारण ये है कि सिंसोनिक अपने बाकी रेडर्स के साथ काम चलाना चाह रही है, लेकिन लोकेश गोशलिया जब आते हैं, क्या ये मल्टी पॉइंटर रेड है? लोकेश राहुल इन्वॉल्वमेंट तो दोनों का है, लेकिन ये डिफेंस के पक्ष में निर्णय गया। जी हाँ, बिल्कुल रेडिंग को निरस्त किया पेरियर पैंथर्स के डिफेंडर्सों ने, और फिर से एक बार जो स्कोर है बराबरी पर आ गया है। सिंध सोनिक्स ने शुरुआत तो अच्छी की थी, पर पेरियर पैंथर्स लगातार भरसक प्रयास कर रही है और मैच को बराबरी पर ला दी है। रिचपाल जाट के पास मौका है उस फ्लो को तोड़ने का। डू और डाई रेड है, 6 और 6 की बराबरी है और लगातार कोशिश कर रहे हैं और कोशिश में सफल रहेंगे शायद। वहां पर 2 खिलाड़ियों का 2 पॉइंट्स पेरियर पैंथर्स, नंबर 44 एंड 1 आउट। रोहित और मोनू, वो 2 खिलाड़ी, वो 2 डिफेंडर्स जिन्होंने सिंसोनिक के लिए डिफेंस में पॉइंट निकाले हैं। इनके अलावा कोई और खिलाड़ी नहीं चला। रोहित ने सबसे पहले बैक होल्ड करने की कोशिश की, थाइस पकड़ना चाह रहे थे, हाथ स्लिप हुए, एंकल पे गए, तब तक मोनू भी आ गए और हुआ क्या, दोनों को बाहर जाना पड़ा। कुछ रनों पहले अभी सिंसोनिक के पास में जो 2 अंकों की लीड थी, वो अब 2 अंकों का ट्रेल हो चुकी है। साथ ही साथ प्रिंस कुमार रॉय यदि अपनी टीम के लिए रिवाइवल नहीं निकाल पाते हैं तो सिंसोनिक हो सकता है ऑल आउट के और करीब चली जाए। नवनीत जी हाँ, और करीब जा सकती है। रिचपाल जाट यहाँ पर आए हैं, प्रिंस ध्यान दे रहे हैं और किक मार करके वहां पर रिचपाल जाट को एक और पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट पेरियर पैंथर्स, नंबर 3 आउट। यहाँ पर जब रेड होगा तो देखना है कि क्या अपनी टीम को वो रिवाइव कराने में सफल रहते हैं या ऑल आउट से ऑल इन की तरफ उनका यात्रा बढ़ेगा। प्रिंस कुमार रॉय, पिछली रेड के ऊपर इनको खाली जाना पड़ा था, लेकिन तब उनके कैंप में 2 खिलाड़ी थे, काम चल गया था। यहाँ अकेले हैं, सोलो टैकल करना बिल्कुल आसान रहता नहीं है, प्रैक्टिकली कम पॉसिबल है। अनुज को रनिंग एंड टच क्लेम जरूर किया, अनुज ने कहा चलते बनिए, फर्क नहीं पड़ता मुझे। बोनस जरूर इंश्योर किया प्रिंस ने, ये अच्छी चीज है, लेकिन पेरियर पैंथर्स को ऑल आउट करने के चक्कर में 3 पॉइंट मिल जाएंगे। जी हाँ, कितना जल्दी यहाँ पर खेल बदल गया है। सिंसोनिक 6 और 2 से लीड कर रही थी, लेकिन पेरियर पैंथर्स 12 पर पहुंच गए। इतने देर में 10 पॉइंट मिल गया है पेरियर पैंथर्स को। सिंध को 1 ही पॉइंट मिला है, सिंध ने 1 और पॉइंट लिया है। यहाँ पर धकेल दिया है रिचपाल जाट को। सिंसोनिक, आपको याद होगा नवनीत, अभी कुछ समय पहले जब रितेश डिफेंस करने के लिए फ्रंटल ब्लॉक के लिए चले गए थे, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट के लिए, तो पिछली बार का जो खामियाजा है, इन्होंने वो रेडर को उठा के बाहर फेंक के कंप्लीट किया है। हीट का जवाब 75 से दिया है। और ये जो पूरा मैच है, छोटे छोटे क्षण जीतने पड़ेंगे और जब आप क्षण जीतते हैं तभी आप एक अरसा को जीतते हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा सिंध सोनिक्स को इस मैच में। अगर वो जीत का स्वाद उन्हें चखना है, वो जीत की बर्फी अगर उन्हें चाहिए। ऑलराइट देन, राजू ने एक बार अंपायर को देखा और बोनस की मांग करी तो फिर कबूल लिया गया। सरदार चौधरी रेड लगाने के लिए आए हैं। सेंट सोनिक के स्कोर कार्ड के अंदर वो परिवर्तन आपको दिख जाएगा। 9 अंक हो चुके हैं, 3 का फासला है। सरदार ने बोनस निकालने की कोशिश की है राहुल के सामने से। राहुल बैट के ऊपर क्लेम कर रहे हैं, कस्में वादे खा रहे हैं। अब इसमें किसमें सच्चाई है ये तो रेफरी का निर्णय बताएगा। आखिरी के 5 सेकंड सरदार अपने कैंप में और वो भी एम्प्टी हैंडेड। ऑफिशियल टाइम आउट। ऑफिशियल टाइम आउट की मांग की गई। सेंट सोनिक बनाम पेवियर पैंथर्स, दिन का आखिरी मुकाबला। सेंट सोनिक एक ऐसी टीम जिसने अभी तक बूस्टर राउंड में एक भी मैच जीता नहीं है। वहीं पेवियर पैंथर्स जिनकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। उनके सबसे बेस्ट डिफेंडर, उनके कप्तान लगातार अपनी टीम के लिए पॉइंट्स निकाल रहे हैं। आज के मुकाबले में भी नवदीप, यदि आपने गौर किया हो तो जो पॉइंट निकालने की कोशिश करी है लोकेश गोसलिया ने, वो तीनों के तीनों पॉइंट उन्होंने थाई होल्ड से इनिशिएट करते हुए दिखाए हैं। इससे पता चलता है कि जब आप डबल थाई होल्ड के लिए जाते हैं तो रेडर के पांव की पूरी मूवमेंट को ब्लॉक कर देते हैं और वही करके दिखा रहे हैं लगातार। जी हाँ, फैन कोर्ट पर हम देख रहे हैं सिंध सोनिक्स और पेरियर पैंथर्स के बीच में ये मैच। आधा मैच फर्स्ट हाफ का खत्म हो गया है और हम देख सकते हैं यहाँ पर यदि मैं गलत नहीं चल रहा है। तो
ये वार्म अप चल रहा है, लेकिन टेक्निकल जो डिस्कशन है वो शायद हो रहा होगा कि वो बोनस दिया जाना चाहिए था या नहीं दिया जाना चाहिए था। वो हल्की सी ऑडियो सुनाई दी और उसमें रेफरी का यही कहना है शायद कि वो बोनस मैंने नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद राइट आफ्टर दैट डिस्कशन शायद वो निर्णय के अंदर परिवर्तन किया गया है। अब क्या उसको रेक्टिफाई करके रीवेरीफाई किया जाएगा, दैट कुड बी अनदर क्वेश्चन। लेकिन अभी ये 3 अंकों का फासला है। खेल यहाँ से 9 मिनट, 9.25 मिनट का खेला जाना पहले हाफ में बाकी है। दूसरे हाफ में भी 20 मिनट का खेल आना है। लगभग 30 मिनट के खेल के अंदर क्या सिनसोनिक की टीम पेविया पैंथर्स को सिर्फ और सिर्फ बराबरी पे नहीं बल्कि डोमिनेट करके इस मुकाबले को खत्म कर सकती है, ये एक सवाल। मल्टीपल कैमरा एंगल्स, हम सिर्फ कमेंट्री बॉक्स में अपनी आवाज देते हैं, लेकिन यकीन मानिए आप तक ये लाइव ब्रॉडकास्ट पहुंचाने के लिए हमारी बहुत बड़ी टीम होती है, जहां आपको नजर आएंगे मल्टीपल कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ईवीएस ऑपरेटर, ग्राफिक गाय, ग्राउंड स्टाफ, हमारा सपोर्ट स्टाफ वहां पे मौजूद रहता है, जो वेन्यू मैनेजर, जो ग्राउंड मैनेजर होते हैं, जो हर एक चीज को मैनेज करते हैं। और उसी के चलते ये लाइव ब्रॉडकास्ट, डीओपी, ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, वो सब चीज मैनेज करते हुए नजर आते हैं। तो बहुत बड़ी टीम मिलके ये ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचाती है। जी हाँ, बिल्कुल। बचपन में एक कहानी सुनी थी कि जो एक लकड़ी होता है उसे आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जब बहुत सारी लकड़ियों का गुच्छा बन जाता है तो वो बहुत ही स्ट्रांग यूनिट हो जाता है, एक टीम हो जाता है। और जीत के लिए एक अच्छी टीम का होना बहुत ही आवश्यक है। और वही अगर आपस में लोग लड़ते रहेंगे, टीम नहीं बनेगी, तो फिर जाके ये जो इतना खूबसूरत दृश्य हम देख रहे हैं फैन कोर्ट पर, वैसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। अब वो ईगो की इंतहा देखिए नवनीत, दीवार पे लगी हर एक ईंट को यही लगता है कि पूरी दीवार उस पर टिकी है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत परे है। और जिसको वो सच्चाई समझ में आ जाती है, उसके बाद चीज़ें उनके लिए ना सिर्फ खेल में बल्कि जीवन में बहुत आसान हो जाती है। जी हाँ, और लगातार यहाँ पर वार्म अप करते हैं खिलाड़ी, और ये बहुत ज़रूरी है। जो यंग फैंस देख रहे हैं, जो बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे कि जब खेल रुका है तो आप क्यों दौड़ रहे हैं, आपके लिए तो आप हमेशा दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे जब मन करेगा। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इंजरीज होती है, लॉन्ग टर्म इंजरीज हो सकती है। और जब आप अपने बॉडी को ठंडा नहीं रखना चाहते, इसलिए लगातार खेल के समय ये वार्म अप ज़रूरी है अगर खेल रुका रहता है तो। और फिलहाल पेविया पैंथर्स की टीम में रिचपाल ने 4 पॉइंट निकाले हैं, सरदार ने 2 पॉइंट निकाले हैं, 3 पॉइंट लोकेश गोशलिया ने डिफेंस करके निकाले हैं। उनके अलावा 4 खिलाड़ी अभी तक शांत है, किसी ने भी खाता अपना खोला नहीं। वहीं दूसरी तरफ सिनसोनिक की कहानी थोड़ी सी अलग है। 3 पॉइंट डिफेंस में मिले, लेकिन तीनों खिलाड़ी अलग थे। रोहित को 1 पॉइंट, रितेश को 1 पॉइंट, मोनू को 1 पॉइंट। राजू सिंह ने रेड लगाकर 4 पॉइंट क्लेम किए हैं। प्रिंस कुमार रॉय को 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन वो जो ऑल आउट आया था शायद उसी के चलते वो फासला भी आया। एक्स्ट्रा का अंक भी एक पेविया पैंथर्स ने पाया, 3 अंकों की लीड बनाकर रखी है। लेकिन यकीन मानिए मुकाबला अभी भी बराबरी का है। सिनसोनिक टक्कर देती हुई पेविया पैंथर्स को नजर आ रही है। वो तो शुक्र है लोकेश का कि डिफेंस के अंदर वो थोड़े से एडवांस जाके थोड़ा एग्रेशन दिखा के रेडर को रोकने में कामयाबी पा रहे हैं, वरना उनके अलावा पेविया पैंथर्स के डिफेंडर्स बड़े साधारण साबित हुए आज के इस मुकाबले में। यहाँ ये स्कोर 9 और 12 का सिनसोनिक्स और पेविया पैंथर्स। और देखिए समय भी तकरीबन वैसा ही कुछ बचा है, एक तरफ 9 और दूसरी तरफ 13, तो अगर ये 12 पे रुक जाता तो कमाल हो जाता। बिल्कुल, फिर वो न्यूमेरिकल जो फैक्टर है जिसकी नवनीत आमतौर पे बात किए जाते हैं, वो हमेशा सेट बैठ जाता। लेकिन हर बार हर चीज़ हो ये शायद थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन राहुल और मोनू को देखिए, वो 1-1-1 की तिगड़ी आपको नजर आएगी, उसको 111 मान के हम काम चला सकते हैं नवनीत। ये देखिए, और दूसरी तरफ एक 44 है, एक 66 है, तो बहुत सारे जो मिरर इमेजेस आपको दिख रहे हैं। और आप न्यूमरोलॉजी पर भरोसा करते हैं, आप मानते हैं आयुष न्यूमरोलॉजी को? देखिए मेरा ऐसा मानना है, हर एक चीज़ एक आर्ट होती है और वो एग्जिस्ट करती है। अब सवाल यह है कि जिस इंसान से हम डील कर रहे हैं, जो हमें वो आर्ट का फॉर्म समझा पा रहा है, वो उस चीज़ में इतना निपुण है, यानी इतना एक्सपर्ट है या नहीं। बाकी सब कैलकुलेशंस है, और कैलकुलेशंस हमेशा इस जीवन में होती है। अब क्या आप सही इंसान से डील कर रहे हैं या नहीं, दैट कुड बी ए क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। बिल्कुल। और वैसे आयुष आपका नंबर क्या है, मतलब आपका जो बर्थ डेट है, मैं मंथ नहीं पूछ रहा हूँ, वो क्या है? नवनीत इट्स 4। अच्छा, आपका 4 है, मेरा 8 है।
यही तो न्यूमेरोलॉजी में कैसे नहीं मानता नवनीत, बताइए। हर चीज में आप दुगने हैं। कमेंट्री की बात कर लीजिए, वो अर्थव्यवस्था की बात कर लीजिए। कल ही आपने सिद्ध कर दिया था, जहां मैं सैंडल सोच रहा था आप सैंडलवुड की बातें कर रहे थे, तो 4 का डबल 8 और न्यूमेरोलॉजी फैक्ट निकली। जी, आप जिस तरीके से बात करते हैं, ह्यूमर लाते हैं, और ह्यूमर से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता है, और हर बातों को कितना लाइट लेते हैं। और 4 की भी अपनी खूबसूरती है, और जब चौका लगता है तो लोग कितना खुश होते हैं। रोहित की जर्सी के ऊपर हम दोनों का नंबर लिखा है। यदि इंडिविजुअल लेवल पे देखे तो मेरा नंबर 2 बार, यदि कंबाइन कर ले तो 8 आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन नंबर सेंसोनिक को बढ़ाने पड़ेंगे, कम से कम 3 बढ़ाने पड़ेंगे यदि पैविया पैंथर्स की बराबरी इस मुकाबले में करनी है। और वो स्टार्टिंग 7 हम रोज अनाउंस करते हैं नवनीत, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अभी तक इस एडिशन के अंदर YKS में जितने भी एडिशन हुए हैं, आपके फेवरेट 7 को यदि मैं देखूं तो आप कौन से वो 7 खिलाड़ी हैं जिनकी YKS 7 आप बनाना चाहेंगे? YKS में इतने सारे खिलाड़ी हैं और आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ खिलाड़ी जैसे कि लोकेश घोषालिया स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेकिन पूरे जो रेडर्स रहते हैं उनको पानी पिला देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा बैठ करके सारे खिलाड़ियों को पोजीशन वाइज देखना पड़ेगा, और मैं एकदम हेस्टिली इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और जहाँ तक न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे, नंबर 4 की बात कर रहे थे, तो वो कहता है कि जो 4 नंबर के इंसान होते हैं वो होते हैं एनर्जेटिक, नॉलेजेबल, क्लेवर, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल होते हैं, और उनके पास होती है लीडरशिप स्किल, उनकी जो शार्प मेमोरी होती है, और वो सीक्रेट्स बहुत अच्छे से रखते हैं। तो ये है नंबर 4 के गुण। अब ऐसा लग रहा है कि मुझे न्यूमरोलॉजी से विश्वास उठाना पड़ेगा नवनीत। वो हाँ अभी तो यही है, इसके बाद आगे ओके। कुछ डिस्कशन हुआ है, स्कोर को लेके कुछ डिस्कशन हुआ है। लोकेश ने पूछा था लास्ट में कि स्कोर यही है, और ये भी कहा गया था रेफरी के द्वारा कि हाँ स्कोर यही है। अब आगे क्या होना है वो शायद सुनाई नहीं दिया। नवनीत, क्या आपने ऐसा कुछ सुना? जी, मैं भी नहीं सुन पाया। वो अलग अलग रील चलती है ना, तो यदि हमारी ये कॉन्वर्सेशन खत्म होती तो पीछे फिर वो ऑडियो इंजीनियर की फोटो आती और नीचे लिखा हुआ था द ऑडियो इंजीनियर। हाँ बोल दियो। जी हाँ, वार्म अप करके भी खिलाड़ी थक गए हैं। पेरियर पैंथर्स के जो सारे खिलाड़ी हैं वो रुक से गए हैं, और क्या सीटी बजने वाली है यहाँ पर। रुक से तो ही, लेकिन थोड़े से इंतजार के बाद मुकाबला शुरू हो चुका है। दोबारा रिज्यूम, पहला हाफ चल रहा है। राजू, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 4 पॉइंट रेड कर निकाले हैं, वो फिर रेड करने के लिए आ चुके हैं। डिफेंस चेका, बोनस राजू के लिए एक्टिवेट। एक तरफ लोकेश, दूसरी तरफ अनुज ने चेन को तोड़ रखा है। दूसरी तरफ लोकेश घोषालिया फिलहाल चेन में नजर आ रहे हैं। बीच में आपको मोनू नजर आएंगे, लेकिन रनिंग एंड टच करने की कोशिश सरदार को की है। सरदार ने कहा कब, कहां, कैसे टच हुआ जनाब? एम्प्टी हैंडेड है आप। जी हाँ, एम्प्टी हैंडेड है, और वो उन्हें लग रहा था कि थोड़ा सा कहीं तो थिरकन हुआ है, कुछ तो टच हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार रोहित ने वो काम कर दिया। 1 पॉइंट मिलेगा पेरियर पैंथर्स को। स्कोर हो जाएगा 9 और 13। विनोद जा रहे हैं। डाइविंग एंकल होल्ड हमने देखा है, लेकिन ये डाइविंग टो टच, ये दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। रोहित ने एक परफेक्ट स्किल का एग्जीक्यूशन करके दिखाया है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दर्शाया है। विनोद, जो कि सुपर टैकल करने के लिए, बेग योर पार्डन फॉर दैट, एडवांस टैकल करने के लिए आना चाह रहे थे, उनको शिकार बनाकर बाहर किया। बिल्कुल बाहर किया, और इस बार घुलटिया मारते हुए राजू पहुंच गए हैं, और 2 पॉइंट मिलेगा। नंबर 9 and 3 आउट। सरदार बाहर जा रहे हैं, लोकेश बाहर जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका है। पैविया पैंथर्स को बहुत बड़ा झटका दिया है। फ्रंटल ब्लॉक लगाने की कोशिश की, राजू ने टर्न दिखाया, ट्विस्ट दिखाया, अपने टीम के लिए खिलाड़ी 2 महत्वपूर्ण पॉइंट लाया। अब ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ स्कोर डिफरेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है नवनीत, ये पॉइंट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा पॉइंट निकालने वाले डिफेंडर को आपने बाहर भेज दिया। सरदार, जिन्होंने रेड के अंदर अपना प्राइम फॉर्म दिखाने की कोशिश जरूर की है, उनको बाहर भेज दिया। रिचपाल की जिम्मेदारी रिवाइवल दिलाना। बोनस पॉइंट पेरियर पैंथर्स। बोनस पॉइंट पेरियर पैंथर्स को वहां पर मिला है। सेंसोनिक्स की तरफ से फिर से एक बार राजू आए हैं। पिछले बार इन्हें 2 पॉइंट मिला था। यहाँ पर 5 का घर है। क्या इस 5 के घर में कुछ वो
असमंजस की स्थिति पैदा कर पाते हैं राजू, देखते हैं कि नहीं, और वहां पर क्या एक टच पॉइंट मिला है, बिल्कुल मिला है। नंबर 6 आउट। 14-11 का स्कोर चल रहा था, अब उसके अंदर वो एक और इजाफा होता हुआ नजर आएगा। 15 पे पहुंच जाएगी सिंसोनी की टीम। कहां मुकाबले में ट्रेल कर रही थी, फिर वो लीड पे चली गई। ये दृश्य होते हैं कबड्डी के खेल में, चीजें ऐसे ही बदलती है। बैग योर पार्डन फॉर दैट। वो पिछला पॉइंट सिंसोनी को मिला, उससे वो 12 पे आए हैं। लीड फिलहाल अभी भी बनी हुई 14 अंकों की उनकी ओपोनेंट टीम के पक्ष में है। अब 15 पे पहुंच जाएंगे। रिचपाल ने शिकार किया है, रिप्ले में कंफर्म करते हैं। कवर की पोजीशन के ऊपर जब पीछे हट रहे थे खिलाड़ी, उनको रनिंग एंड टच वो थाई के ऊपर मारा और उसी के चलते उनको पॉइंट मिलेगा। यहाँ पॉइंट मिलेगा और यहाँ पर फिर से एक बार देखिए राजू आए हैं रेड करने सिंसोनिक की तरफ से, और एम्प्टी रेड के साथ वो वापस गए हैं। और स्कोर हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन 14 और 12 ये स्कोर है फिलहाल कैरियर पैंथर्स के पक्ष में। अगर मैं गलत नहीं हूं नवनीत, तो 15-12 का स्कोर है और जर्सी नंबर 15 रोहित रेड लगाने के लिए आए हैं। जर्सी नंबर 3 में विनोद ने फिर अपने जज्बातों से काबू खोया है। पिछली बार इनको टो टच करके बाहर किया गया था, इस बार ये डैश करने के लिए खुद आए, लेकिन रेडर को रोक नहीं पाए। विनोद बाहर। स्कोर है 17 और 12। जी नवनीत, गो ऑन। यह 17 और 12 का स्कोर है। राजू सिंह इस वक्त लीड लगाने के लिए आए हैं। पूरा 6 का डिफेंस मुझे नजर आ रहा है, और क्या वहां एक टच पॉइंट मिला है? बिल्कुल मिला है। 17 और 13 का स्कोर अभी पेरियर पैंथर्स के पक्ष में होगा। लोकेश को दूसरी बार राजू ने शिकार किया है। धीरे धीरे राइवलरी बढ़ रही है, कप्तान बनाम कप्तान। हालांकि सीधा सीधा सामना वो लोकेश से करते नहीं है, लेकिन फिर अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट पे धकेलते हैं, मिडलाइन के आसपास ले जाते हैं, जिससे लोकेश टीज हो जाते हैं और उसी का वो फायदा उठाते हैं। बैक किक का एग्जीक्यूशन रिचपाल की तरफ से आया जरूर है, लेकिन अभी तक कोई अंक लाया नहीं है। दाएं से बाएं चहलकर भी कर रहे हैं, एंकल पकड़ी जाएगी, कॉम्बिनेशन टैकल, छुई के फूल की तरह, टच मी नॉट, टच किया, डिफेंस टूट पड़ा। सब्स्टिट्यूशन पेरियर पैंथर्स, प्लीज कम। डिफेंस टूट पड़ा, रिचपाल चले गए हैं। 15 आउट, 18, 17 आउट, 18 और 13, 17 और 14 का स्कोर हो जाएगा। 14 के ऊपर सिंसोनी की टीम है, 17 के ऊपर पेविया पैंथर्स की टीम है। फासला 3 अंकों का। पेविया पैंथर्स 4 खिलाड़ी मैट के ऊपर है, 3 अंकों का फासला है। सरदार जो कि जर्सी नंबर 3 के ऊपर है, लेकिन फिलहाल रेडर का ऐसा कोई मानस लग नहीं रहा कि किसी खिलाड़ी को टच करते नजर आएंगे, क्योंकि कबड्डी के खेल में सबसे टफ डिफेंस माना जाता है। गलती की जर्सी नंबर 4 ने, गोपाल ने बैक होल्ड करके जैसे तैसे अपनी टीम के लिए ये पॉइंट बचा लिया। राहुल हुए धाराशायी। जी हाँ, राहुल धराशायी हुए, लेकिन इस एक वक्त ऐसा लगा था कि सारे खिलाड़ियों को वो छका करके थोड़ा सा वहां पर जो टच हुआ वहां गिर गए, दिशा बदली, फिर से उन पर टूट पड़े सारे डिफेंडर्स। राहुल के पास कोई मौका नहीं था और एक पॉइंट वहां पर कैरियर पैंथर्स को मिल गया था। स्कोर हो गया है 18 और 14। गोपाल जिन्होंने पिछली बार डिफेंस के अंदर पॉइंट निकाला था, यहाँ रेड पे गए हैं। लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर पहले टो टच मारा, अभी तक मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई संपर्क हुआ है। गोपाल रेड अभी भी लगा रहे हैं, एम्प्टी हैंडेड आते हुए नजर आएंगे। मोनू बहुत करीब थे, उनको शिकार बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ पर 5 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर फ्रंट ब्लॉक आया, कोई मौका नहीं होगा वहां पर। कैरियर पैंथर्स को एक और पॉइंट मिलेगा, 19 और 14 का स्कोर हो जाएगा। मित्रा जिनको मौका मिला सब्स्टिट्यूट करके लाया गया मंजीत, पिछली बार पॉइंट गंवाया था, इस बार वो फ्रंटल ब्लॉक टाइम पे आया और पीछे अच्छा सपोर्ट देते हुए उनके साथी खिलाड़ी नजर आए, शायद उसी के चलते वो सपोर्ट भी काम आया। डिफेंस में एक और अंक आया। सिंसोनिक की टीम में चर्चाएं हो रही है, कुछ आवाज जरूर सुनाई दे रही है, शायद रेफरीज ने थोड़ा सा समय लिया है। 19-14 का ये स्कोर है। पेविया पैंथर्स मुकाबले को लीड कर रही है, 5 अंकों का ये फासला है, तो डिफेंस भी 5 का है। इस 5 के घर को भेदने की कोशिश गोपाल कर रहे हैं। फ्रंटल ब्लॉक मोनू का खारिज, टर्न ट्विस्ट, ओ ये अच्छी स्किल थी। एक बार फिर कम से कम चकमा देने की कोशिश तो की गोपाल ने
और अपनी टीम का स्कोर 20 पे पहुंचा देंगे। 6 अंकों पे लीड आ जाएगी, पेविया पैंथर्स के पक्ष में जाएगी। रेड। जी हाँ, पेरियर पैंथर्स ने उस 5 के घर को तोड़ दिया है, 4 का घर बचा है और एक खिलाड़ी वहां से प्रिंस कुमार राय, दुबले पतले खिलाड़ी, काफी लंबे भी हैं, कवर करते हैं मैट को बहुत इजीली, लेकिन इस समय ज्यादा फुटवर्क नहीं दिखा रहे हैं। एक तरफ कोर्ट के नजरेल गड़ाई है और क्या मध्य रेखा को क्रॉस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, 1 पॉइंट निराश वहां पर। और वो जो स्कोर है जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, एक एक पॉइंट पेरियर पैंथर्स अपने खाते में ऐड कर रही है और एक एक पॉइंट जोड़ के पहुंच गई है 21 पर। नंबर 9 पेरियर पैंथर। मूवी का डायलॉग सुना होगा ना नवनीत, मौत को ठक से छू के निकल जाता हूं, बस राहुल ने वैसा ही किया है। मिड लाइन के बहुत ज्यादा पास आ गए थे, लेकिन उसके बाद भी अपने जज्बातों को काबू में रखा। लोकेश पीछे से सपोर्ट लगाने के लिए आए, उसी के चलते पेविया पैंथर्स के स्कोर में इजाफा होगा। 21 पे पहुंच चुका है स्कोर। तो दूसरी तरफ 14 अंकों पे सुपर टैकल की सिचुएशन खिलाएगी सिंसोनिक। लुत्फ उठाइए, एंजॉय कीजिए नवनीत। जी बिल्कुल एंजॉय हम करेंगे। और यहाँ पर देखिए 3 का डिफेंस है, सुपर टैकल का मौका है, लेकिन लग नहीं रहा है, पकड़ने का कोई मन है। वहां पर गोपाल आए हैं 8 नंबर की जर्सी में, पकड़ा गया है, लेकिन वहां पर किसी तरह रेंगते पहुंच गए हैं गोपाल। पेरियर पैंथर्स नंबर 3 आउट। आपकी टीम में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो क्रेडिट होते हैं, तो कई बार कुछ खिलाड़ी आप ऐसे भी चुन लेते हैं जो डेबिट होते हैं। आज के मुकाबले में विनोद ने सिर्फ डेबिट वाला काम किया है, पॉइंट्स दिए ही दिए हैं, निकाला कुछ नहीं है अपनी टीम के लिए। डिफेंस को थोड़ा और संभल के, थोड़ा और सद के खेलना पड़ेगा। पेविया पैंथर्स की लीड बरकरार है, आगे बढ़ चुकी है ये लीड 22-14 से। 1 पॉइंट सिंसोनिक नंबर 3 आउट। जब क्रिकेट दिखाया जाता था तो उसमें एक चीज दिखाया जाता था कि कौन से फील्डर ने कितना रन बचाया है और कितना रन दिया है। तो कभी कभी किसी खिलाड़ी का रहता था +10 रन सेव, किसी का रहेगा -5 रन। तो अगर उस तरीके से कबड्डी में स्कोरिंग होने लगे तो बहुत सारे खिलाड़ियों का नेगेटिव में जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। और यदि आप युवा कबड्डी सीरीज की ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको लाइव स्कोर कार्ड के अंदर ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इंतजार मत करिए दर्शकों, देर मत करिए, चाहिए युवा कबड्डी सीरीज की सिचुएशन को, उस ऐप को डाउनलोड करिए। सिचुएशन सुपर टैकल की थी, 2 पॉइंट मिलेंगे सिंसोनिक की टीम को मिलेंगे। समय हो चुका है हाफ टाइम का, और हाफ टाइम की समाप्ति के बाद 22-17 का स्कोर पेविया पैंथर्स के पक्ष में है, क्योंकि रेडर ने किसी खिलाड़ी को टच नहीं किया। गोपाल का पांव लॉबी में चला गया। सुपर टैकल की सिचुएशन में डिफेंडर्स ने कुछ नहीं किया, लेकिन 2 पॉइंट मिल गए। यही होता है, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं। 22-17 5 अंकों का ये फासला पेविया पैंथर्स के पक्ष में है। वहीं दूसरी तरफ इनकी ओपोनेंट टीम यानी कि सिंसोनिक 17 पॉइंट उन्होंने निकाले हैं। हालांकि शुरुआत सिंसोनिक की थोड़ी सी बेहतर हुई थी, लेकिन उसके बाद पेविया पैंथर्स ने कमबैक दिखाया। बीच के कुछ क्षणों में ऐसा लगा जरूर कि इस फासले को कंपनसेट करते हुए सिंसोनिक की टीम नजर आएगी, लेकिन ज्यादा समय तक वो कैरी ऑन कर नहीं पाए। तो चलिए आगे के एक्शन के अंदर क्या होगा, बचे हुए 20 मिनट में क्या होगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ब्रेक के उस पार दोबारा आपसे मुलाकात, बने रहिए। स्वागत आप सभी का। मुकाबले का पहला हाफ खेला जा चुका है। पेविया पैंथर्स से सिंसोनिक की टीम टकरा रही है। पेविया पैंथर्स की तरफ से पहली रेड सरदार ने लगाई थी और उसी रेड के अंदर मल्टी पॉइंट 2 अंक कमाए थे। रिच आए जरूर, लेकिन आज इतने रिचनेस उन्होंने शुरुआती क्षणों में दिखाई नहीं। सरदार भी पकड़े गए थे। डिफेंस एक एक करके पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ डिफेंस से नहीं होता, रेडर्स को भी काम करना पड़ता है। थोड़े से साधारण से साबित हुए रेडर्स सिंसोनिक की टीम के, उसका पूरा फायदा उठाया पेविया पैंथर्स के डिफेंस ने। रितेश ने बदला जरूर लिया, रिचपाल को उठा के बाहर फेंका था, सोलो डैश करके दिखाया था। लोकेश ने 2 बार गलती की, दोनों बार खिलाड़ी एक ही था, ओपोनेंट टीम के कप्तान राजू, और उसका खामियाजा भुगतना जरूर पड़ा पेविया पैंथर्स की टीम को। एक आध रन के लिए लगा जरूर होगा कि जान हलक में आ गई है, लेकिन फिर इस तरह के टैकल से गोपाल ने सबका दिल जीता। उस टैकल के बाद लगातार रेड लगाने के लिए हमें गोपाल ही नजर आए। जब जब पेविया पैंथर्स की बारी थी, ज्यादातर कैंप से उनको भेजा जाता था। राहुल ने भी बहुत एडवांस टैकल करके दिखाया अपनी टीम के लिए, वो खिलाड़ी भी पॉइंट लाया। ये एंकल होल्ड विनोद का खारिज गया। विनोद ने आज के इस मुकाबले में जितनी गलतियां की, उनकी गणना यदि आप करें तो वो कम पड़ जाएंगी। हाफ टाइम का स्कोर जो था वो समाप्ति के ऊपर 22 और 17 का था, लेकिन इस 5 अंकों के फासले को अभी भी कंपनसेट किया जा सकता है। हाफ टाइम के बाद
सेकंड हाफ की पहली रेड नवनीत के साथ। जी बिल्कुल 22 और 17 का ये स्कोर और सिनसोनिक्स की तरफ से रेड आया है पेरियर पैंथर्स में। यहाँ पर 5 डिफेंडर्स हम देख सकते हैं अंदर तक बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि राहुल आप अंदर आइए अगर आपको पॉइंट चाहिए तो। पूरा जो डिफेंस है वो पूरा डीप हो गया है, कोई एडवांस टैकल के मूड में नहीं है। 5 पॉइंट्स की लीड है और समझदारी के साथ दोनों ने निर्णय किया कि चलो मैं ना पॉइंट दूंगा ना मैं पॉइंट लूंगा। राहुल एम्प्टी हैंडेड गए थे तो लगभग उन्हीं की कदकाठी के रिचपाल रेड लगाने के लिए आए। यदि दोनों खिलाड़ी बराबरी में खड़े हो तो शायद रिचपाल की हाइट थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन अपने आप को इतना ज्यादा बेंड करके ये खिलाड़ी खेलता है कि इनकी हाइट एग्जैक्टली मापना डिफेंडर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो नाप करना मुश्किल हो जाता है कि क्या वो थाई होल्ड के लिए जाए या फिर एंकल होल्ड के, और उसी कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा पॉइंट ये लेके आते हैं। हालांकि इस बार एम्प्टी हैंडेड आए थे। या बिल्कुल, और राजू एक बार फिर से 5 का डिफेंस हमें देखने को मिल रहा है और अंदर तक गए, पकड़े गए राजू पकड़े गए, बहुत डीप गए हैं। उन्हें पता था कि पॉइंट चाहिए तो डीप जाना होगा और शायद रुक सकते थे वहां पर राजू। देखते हैं राजू किस तरह से बना एंटलमैन। कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर से राहुल का वो एंकल होल्ड आया था, लोकेश को सामने पाया था, और उसके बाद में किस खिलाड़ी के पास वो पोटेंशियल होती है कि ऐसे डिफेंस से पार पाकर बाहर आ जाए। 23-17 का ये स्कोर, 23-17 स्कोर बढ़ रहा है, 1 अंक का इजाफा हुआ है। हालांकि सिर्फ 1 पॉइंट अभी तक छलका है नवनीत। सेकंड हाफ की शुरुआत में ये दूसरा आएगा, रोहित के नाम जाएगा, रिचपाल बाहर। सुपर टैकल 2 पॉइंट सिनसोनिक। जी हाँ, सिनसोनिक्स को और 2 पॉइंट मिला है सुपर टैकल में। और आज एक एक्सपर्ट वाला क्वेश्चन आया था जिसमें कहा गया था कि क्या पेरियर पैंथर्स की जो टीम है वो सुपर टैकल में बेस्ट है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा सुपर टैकल है, लेकिन यहाँ पर जो सिनसोनिक्स की भी टीम है उसने भी सुपर टैकल करके दिखाया कि बच्चों हमें भी कम ना समझो। लीड करती हुई नजर आ रही है पेरियर पैंथर्स की टीम। फासला 23-19 से उनके पक्ष में नजर आ रहा है। सिनसोनिक की टीम ने बिल्कुल अच्छा सुपर टैकल करके दिखाया था, लेकिन इस तरीके के ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेंगे तो वो सिर्फ पेरियर पैंथर्स का कैंप होगा। फ्रीज कर दिया रेडर को, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी राहुल के पास वापस अपने कैंप को देखने की भी। इनकी पोजीशन के ऊपर से वो सडन टैकल करा और उसी के चलते वो नी होल्ड काम आया। 24-19 पेरियर पैंथर्स के पक्ष में। जी बिल्कुल, और फिर से एक बार सुपर टैकल का मौका रहेगा। क्या गोपाल पॉइंट लेंगे या सुपर टैकल करेंगे यहाँ पर सिनसोनिक्स, वो देखना है, लेकिन हो सकता है एम्प्टी रेड भी हो जाए। पिछली बार सुपर टैकल परफेक्टली करके दिखाया था, इस बार गोपाल को एम्प्टी हैंडेड जाने दिया। 24 के ऊपर पेरियर पैंथर्स की टीम है, सिनसोनिक की टीम 19 अंकों के ऊपर है, फासला 5 अंकों का है। मोनू रेड लगाने के लिए है, डिफेंस 6 का डिफेंस हम आप सभी जानते हैं बोनस एक्टिवेट रहता है, और उस एक्टिवेटेड बोनस का फायदा उठाने की कोशिश मोनू को करनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस संभालते हैं शायद रेडिंग स्किल थोड़ी सी कमजोर हो, और अभी तक देख के यही लगा है। रेडर भी ये देख के राइट है, इसका मतलब इनका सीधा सामना लेफ्ट कॉर्नर लोकेश से होता है, क्योंकि लोकेश अपनी टीम के बेस्ट डिफेंडर है, उनके सामने एम्प्टी हैंडेड आना सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। बेस्ट स्ट्रैटेजी, और इस वक्त फिर से एक बार सुपर टैकल का सिचुएशन गोपाल आए हैं, और मुझे लग नहीं रहा है, बिल्कुल वहां पे तकरीबन टच कर दिया था गोपाल ने, और यहाँ पर निर्णय हुआ। जी हाँ, लेकिन निर्णय पक्ष में नहीं गया गोपाल के। बैक टू बैक एम्प्टी रेड का मतलब ये है कि दोनों टीम सुपर टैक डू और डाई की सिचुएशन पे खेलना चाह रही है। टाइम आउट की मांग की गई है शायद पेरियर पैंथर्स के कैंप से। पेरियर पैंथर, चलिए सुनते हैं कोच क्या कहना चाह रहे हैं। वो सारी केस हुई आएगा तो तुम एकदम पूरा एकदम सुखा दे रहा हो, तुम लोग दोनों को एकदम चल के एक साथ जाना और मारना। सुपर टैकल स्पीड मतलब शर्ट के खेलोगे तो उसको डरेगा, उसको डू और डाई है, वो पूरा अंदर घुस के ही चाहेगा पॉइंट लेना, समझ गया ना। अगर राइट का रेडर आया तो तुम यहाँ लगाना, तुम लोग दोनों मिल के एकदम पूरा सुपर टैकल होना चाहिए। रोहित और मोनू को कहा है कि राइट रेडर आए तो रोहित स्ट्राइक करेंगे, लेफ्ट रेडर आए तो मोनू स्ट्राइक करेंगे, लेकिन कैसी भी परिस्थिति में सुपर टैकल होना चाहिए। अब देखते हैं कि कोच ने जो कहा है वो करके दिखाया जा सकता है या नहीं। एक बार सुपर टैकल इस मुकाबले में कंप्लीट जरूर किया है सिनसोनिक की टीम ने, क्या ये दूसरा मौका कर पाएंगे, ये एक सवाल है।
लेकिन इस सवाल के बीच में मुझे लगता है कि थोड़ा सा खनन एक बार फिर आ चुका है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल टाइम आउट की मांग की गई है। एक तरफ कैंप के अंदर आपको 3 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, ये जो कैंप है ये सिंसोनिक का है। येलो कलर की जर्सी के इन खिलाड़ियों का स्कोर एज ऑफ नाउ 19 है। तो दूसरी तरफ पेवी पैंथर की टीम, जिनके मैट के ऊपर 6 खिलाड़ी मुकम्मल है, उनका फासला जो है वो 24 अंकों का है, यानी इन टोटल डिफरेंसेस फॉर 5 पॉइंट्स। और ये 5 पॉइंट का खेल, क्योंकि ये लो स्कोरिंग और हाई इंटेंसिटी मुकाबला है नवनीत, मायने रख सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। लो स्कोरिंग मैच जब होता है तो जो वक्त गुजरता है, जो पॉइंट्स मिलता है, सब कुछ कितने वैल्यूएबल होते हैं। और जी हाँ, बिल्कुल, जैसे यूएस की बात करें, $1 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ₹1 की बात करें तो शायद हर बच्चे के पास रहे। ये बात बहुत सही कही आपने, ₹1 शायद हर बच्चे के पास रहे। लेकिन ये कहानी हम बयां कर रहे हैं भारत की। यदि आप यूएस में जाएंगे तो हो सकता है वहां बच्चों के पास डॉलर मौजूद हो। चर्चाएं चल रही है टेक्निकल कैंप के अंदर, थोड़ी सी गर्मागर्मी जरूर, लेकिन चीजों को रेक्टिफाई करने की, सही करने की कोशिश, जल्द से जल्द लाइव एक्शन वापस शुरू हो, इसकी कोशिश की जा रही है। और जैसा हमने आपको बताया, सिर्फ हम नहीं, ये कंप्लीट टीम होती है। स्कोरर अपने स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको रेक्टिफाई करके स्कोर कार्ड को एकदम परफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो उनके साथ टेक्निकल टीम बैठी है, कबड्डी के वो एक्सपर्ट जो यहाँ पे आपको नजर आते हैं एम्पायर की, रेफरी की भूमिका निभाते हुए, वो साथ में बैठे होते हैं। एग्जैक्टली वो जो मैनुअल स्कोरिंग वो भी की जाती है और साथ ही साथ डिजिटल स्कोरिंग भी की जाती है, ताकि चांसेस ऑफ एरर मिनिमम किए जा सके। जी हाँ, एक तरफ पेरियर पैंथर्स की टीम है जो एक सर्कल बना करके चर्चाएं कर रही थी, दूसरी तरफ यहाँ पर 3 ही खिलाड़ी मौजूद है, वो वार्म अप कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोनों टीमें वार्म अप करते हुए नजर आ रही है हमें। मुकाबले की वापस शुरुआत हुई है, रिज्यूम हुआ है मुकाबला डू और डाई की सिचुएशन में। ये सिर्फ साधारण डू और डाई नहीं है, ये वो डू और डाई की सिचुएशन है जहाँ सुपर टैकल भी ऑन है। इस परिस्थिति का मतलब ये होता है कि रेडर पूरी तरीके से झांसे में, यदि गोपाल को बाहर जाना होगा तो डिफेंस चूक करके दिखाएगा। ये लकी पॉइंट था गोपाल के लिए, ये लकी पॉइंट था। कहा गया था रोहित को कि यदि आपके साइड में अटैक हो तो आपको स्ट्राइक करना है, लेकिन ऐसी गलती बड़ी साधारण। जी हाँ, साधारण गलती थी। 25 और 19 हमें स्कोर देखने को मिल रहा है। और टाइमिंग की बात करें तो तकरीबन 5 मिनट का खेल हो गया है। Leadership 1 point, Sinsonic, number 6 out. कवर को टूट के खेलने की आवश्यकता कहां थी? राहुल उनके सामने से एक खूबसूरत सी डुबकी लगाई, सही समय पर बॉडी के बैलेंस को पूरी तरीके से नीचे की तरफ धकेला मोनू ने। और इंडिविजुअल लेवल पे कहूं तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगा कि वो एफर्ट दिखाए गए थे, क्योंकि मोनू अपनी टीम के लिए डिफेंडर की भूमिका निभाते हैं। यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है रितेश से, बॉडी का बैलेंस खोया, रिचपाल ने उसका फायदा उठाया, अपनी टीम के लिए खिलाड़ी एक और अंक लाया। जी हाँ, रिचपाल ने एक और अंक लाया। वहां पर रितेश आउट हो गए हैं, कॉर्नर पर खड़े थे 21 नंबर के खिलाड़ी रिचपाल। और दूसरी तरफ यहाँ पर फिर से एक बार सिंसोनिक्स के लिए मोनू धावा बोलेंगे और पूरा 7 के 7 खिलाड़ी है। बोनस चुरा करके लग रहा है मोनू का यही प्लान था। क्या बोनस मिला या नहीं, बहुत ही नजदीकी मामला था। और वहां पर कॉर्नर के खिलाड़ी ने नंबर 9 आउट का कोशिश किया और असफल। लोकेश घोषलिया थे। ये हमने क्या देखा, कॉर्नर के खिलाड़ी मोनू ने इस एडिशन में अब तक के सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट निकालने वाले बेस्ट डिफेंडर को बाहर कर दिया है। इतना आसान एंकल होल्ड क्यों नहीं पकड़ पाए लोकेश, ये शायद वही जानते हैं। सुपर टैकल की सिचुएशन अभी भी ऑन है और रेड लगाने के लिए रिचपाल देखिए अपनी बॉडी को किस तरीके से वो बेंड करते हैं और दोनों पांव के बीच में फासला भी होता है जिससे वो मैट का ज्यादा एरिया कवर कर पाए। बॉडी का बैलेंस भी शायद बना रहता है। बैक किक एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे प्रिंस के सामने, अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो दूसरी तरफ विनोद के साथ में मोनू, एम्प्टी हैंडेड रिचपाल। जी हाँ, और फिर से एक बार मोनू गए हैं। 6 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और शानदार किक लगा के खुद ही गिर गए हैं। बोनस खुला रहेगा मोनू के लिए। और यहाँ पर
लगातार दोनों खिलाड़ी आपस में सोच रहे हैं कि क्या उनका पैर पकड़ा जाए, और सिंसोनिक सोच रही थी कि क्या बोनस लिया जाए। रिचपाल फिलहाल एक बार फिर से बैक किक वहां मोनू ने लगाया था, तो रिचपाल ने भी वही आर्ट दिखाई है, लेकिन ये आर्ट थोड़ी ज्यादा बेहतर है। 1 पॉइंट, डाइव लगाई, जंप लगाया, और वो जंप out. उनके परफेक्ट टाइम के ऊपर काम आया। मोनू को बाहर जाना पड़ेगा। रेड लगातार मोनू लगा रहे थे सिंसोनिक के लिए, क्योंकि अब वो मैट के ऊपर नहीं है, तो ये कारनामा कौन करके दिखाएगा। अपने शोल्डर्स के पीछे दोनों हाथ को ले जाके मोनू ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बड़ी देर कर दी जनाब आते आते। ये क्या शानदार छलांग थी, और ऐसा लगा कि हरे हरे मैदान में वो खरगोश जो एक जंप लगाता है गाजर के लिए, लेकिन यहाँ गाजर नहीं था, यहाँ पॉइंट्स के लिए जंप लगाया था रिचपाल जाट ने। और साथ ही साथ रिवाइवल लेकर आ गए, अपने कप्तान का रिवाइवल लेकर आ गए, और साथ ही साथ आ चुका है वो स्कोर कार्ड भी पेवियर पैंथर्स के पक्ष में जाएगा। एक और ऑल आउट आएगा, सिंसोनिक का सफाया, 4 पॉइंट पेवियर पैंथर्स के पक्ष में। ऑल इन। या दोनों खिलाड़ियों का सफाया क्या, यहाँ पर जर्सी पुल हो गया था, इसीलिए छोड़ दिया। नो जर्सी पुलिंग, ग्रीन कार्ड। ये ग्रीन कार्ड पुलिंग के चलते रेड जी नवनीत। और ये ग्रीन कार्ड पूरा दे ही दिया जाए प्लेयर को, सिर्फ दिखाया ना जाए। 2 पॉइंट सिंसोनिक, नंबर 9 and 8 आउट। लोकेश गोपाल दोनों बार, गोपाल तो रेड लगा रहे थे, लेकिन इस बार इनकी पोजीशन के ऊपर खड़े थे। लोकेश ने किस तरह का अटेम्प्ट दिखाया, ना वो फ्रंटल ब्लॉक था, ना ही वो पीछे से बैक होल्ड लगा, और शायद एक कमजोर एफर्ट उनके काम नहीं आएगा। 31-23 धावा बोला है डिफेंस ने, चकनाचूर किया है रिचपाल की इस ताकत भरी रेड को। जो रिचपाल इस बार चले गए हैं, और जैसे एक बुल होता है ना, बुल अपने सर से फोर्स लगाता है, वैसा ही फोर्स रिचपाल ने लगाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लॉक आया। और मुझे उस खेल का याद आ गया, स्पेन में जो खेला जाता है, जब एक मैदान में एक बुल चारों तरफ दौड़ता है, हड़कंप मचा देता है, लेकिन रिचपाल वहां पर हड़कंप मचाने में असफल रहे। नवनीत, स्पेन का आपने नाम लिया, आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा बुल कहां पाए जाते हैं? तमिलनाडु नहीं, जिस शहर में मैं रहता हूं नागौर, उसमें भारत में सबसे ज्यादा बुल पाए जाते हैं, और यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है। कमाल की बात यहाँ पर। और जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दिया। लेकिन ये इंफॉर्मेशन गलत थी। जो मंजीत ने अपने तरकश से तीर निकाला था, वो बिल्कुल दिशाहीन था। राजू को बाहर एग्जैक्टली कर दिया। ऑल राइट देन, मुझे एक क्षण के लिए लगा कि वो लॉबी से खुद बाहर चले गए, लेकिन अब रिप्ले में कंफर्म कर लीजिए, मंजीत के पांव पूरी तरीके से सधे हुए थे, राजू बाहर है। तो तरकश का तीर गलत नहीं लगा, मैंने ही बोर्ड को गलत देखा है नवनीत। जी हाँ, और क्या आप उस मेले के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे जो नागौर में लगता है? बिल्कुल, पहले इस पॉइंट को एंजॉय करते हैं। कार्टव्हील करके सरदार अपनी टीम के लिए पॉइंट लाए, कॉर्नर के खिलाड़ी को बाहर कर दिया। रोहित बाहर जाते हुए फिलहाल नजर आएंगे। कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर खड़े थे, पहले उन्होंने सोचा कि वो डबल एंकल होल्ड के लिए चले जाए, लेकिन फिर अपनी बॉडी को काम रखा, थोड़ा सा कंपोज रखा। 9 मिनट का खेल यहाँ से खेला जाना बाकी है। फासला जो है वो भी 9 अंकों का है, पेवियर पैंथर्स के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। उस मेले की जो आपने बात की नवनीत, यहाँ पे कई सारे कैमल आते हैं, कई सारे हॉर्स आते हैं, और फिर अलग अलग जो डांसेस होते हैं जानवरों के, वो भी यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। बहुत आकर्षणीय होता है वो दृश्य। और क्या जंप लगा करके मोनू ने वहां पर पॉइंट मिला है उन्हें। टीवी अंपायर, पेरियार पैंथर challenges is Raider out. Our decision 1 point. Please review. पेवियर पैंथर्स ने अपने रिव्यू का इस्तेमाल किया है। रेडर आउट ऐसा कहा गया। कवर की पोजीशन से चेन को तोड़ा था, डबल एंकल होल्ड के लिए चले गए। रेडर अभी मोनू ऐसा लग रहा है कि वो लॉबी का इस्तेमाल कर ही आ रहे हैं। बॉडी का कोई पार्ट लॉबी से बाहर गया नहीं है। मेरे हिसाब से मोनू सेफ है, पॉइंट मिलना चाहिए।
जी इंतजार रहेगा यहाँ पर रेफरी के निर्णय का। Review unsuccessful. 1 point. Sinsonic. Period Panther. Your review over. No more review. पेविया पैंथर्स ने अपना एकमात्र रिव्यू गंवा दिया। राहुल ने वो डेफर्ट दिखाया जरूर थे, चेन को तोड़ा, उन्होंने डैश करने की कोशिश की, मोनू ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दर्शाया, सही समय पे खिलाड़ी अपनी टीम के लिए जंप लाया, लॉबी का इस्तेमाल किया, साथ ही साथ मिला वो पॉइंट भी। कोई दिक्कत नहीं, बार बार अपना करे, अपने आप टूट जाएंगे वो, बस इधर गलती मत करो यार। सुने लोकेश, उसको बोलना किस लिए मारो, वो इंतजार कर रहा है, वो इसका इंतजार कर रहा है, पता नहीं कितने मार रहा है, इंतजार कर रहा है। या तो मारो ना, तुम मंजित है, दोनों साथ मारो ना। रेड मंजीत को कहा गया है कि यदि आपको अटैक करना है तो लोकेश के साथ मिलके करिए। वेट किस चीज का कर रहे हैं? सेंसोनिक की टीम के खिलाड़ी तो खुद ये इंतजार कर रहे हैं कि जब आपको मौका मिले आप उसको बुला लीजिए। 6 का डिफेंस, बोनस एक्टिवेट है गोपाल के लिए। गोपाल ने सेकंड हाफ में पेविया पैंथर्स के लिए सबसे ज्यादा रेड लगाई है और उसमें उनको सफलता भी मिली है। एंकल के ऊपर, टो के ऊपर वो टच करने की कोशिश थी गोपाल की, शायद उसके अंदर अभी तक उनको वो सफलता मिली नहीं है, उसी के चलते एम्प्टी हैंडेड वापस आएंगे। बोनस का प्रयास भी नहीं किया। सब्स्टिट्यूशन सेंसोनिक कर रहा है। 6 in 3 out। रेड विनोद को बाहर जाना ही था। नवनीत जी हाँ, विनोद को बाहर जाना ही था और यहाँ पर एक बार फिर से सिंसोनिक स्लेट लगा रही है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है सिंसोनिक को के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और एक्सटेंड किया हाथ को, क्या वहां पर लोकेश गोशलिया को टच नहीं कर पाए। निश्चित रूप से वक्त गुजर रहा है, 10 सेकंड से कम का समय बचा है यहाँ पर और एम्प्टी हैंडेड वापस आएंगे। लोकेश गोसलिया नाम इतना बड़ा हो चुका है कि कोई भी खिलाड़ी इतना आसानी से उनके सामने जाने की कोशिश करता नहीं है। अब रेड लगाने के लिए सरदार हैं। सरदार आज कितने सरदार है ये तो फाइनल स्कोर ही बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि पेविया पैंथर्स इस मुकाबले को कंपनसेट करते हुए, लीड करती हुई नजर आ रही है। राहुल ओपोनेंट टीम के कप्तान रेड पे, 7 मिनट का समय यहाँ से खेला जाना बाकी है। आखिरी 7 मिनट के अंदर कप्तान ने कप्तान का शिकार किया है। लोकेश ने अपने ओपोनेंट टीम के खिलाड़ी को बाहर किया है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। जी बिल्कुल, यहाँ पर स्ट्रैटेजिक टाइम आउट लिया गया है और दोनों टीमें यहाँ पर छोटी सी चर्चा करेंगी कि क्या करना है। 1 मिनट से कम का ये वक्त होता है जब आपको प्लान बनाना है। 2 नंबर पे खेलना बेटा, उस कॉर्नर का ध्यान रखना, आगे कुछ नहीं है, आराम से बढ़िया मार। और सुने, अगला कॉर्नर पहले हटता है ना तो सेकंड पे हाथ मार देना, सेकंड कॉर्नर पे। वो देखे मेरी बात में, वो तो दिखा रहा है आगे, वो आता है सबसे बढ़िया है, वो पीछे हट रहा है तो सेकंड कॉर्नर पे, ठीक है, बढ़िया आराम से बढ़िया। खेलो हम लोग है अंशु, तुम लोग एकदम पूरा बढ़िया से मारो, जब आए डोज में से मारनो, उसको डराओ, रेडर को डराओ कवर से। इतने भोले वाले दिखने वाले अंशु कैसे रेडर को डरा सकते हैं, लेकिन आप लोग इनाम पा सकते हैं, ये तय है। 5000 तक के कैश प्राइजेस जीत सकते हैं। प्ले करिए वो युवा कबड्डी सीरीज की ऐप पे जाइए, डाउनलोड कीजिए वो ऐप, उसके बाद ना सिर्फ 5000 तक के इनाम बल्कि साथ ही साथ वो मर्चेंडाइज भी अपने नाम कर सकते हैं। डू और डाई की सिचुएशन, टीसी रेड किसी भी टीम की खाली जा नहीं सकती है। रिचपाल रेड लगाने के लिए आए हैं, बाहर जाएंगे, लेकिन क्या डिफेंडर्स बाहर है या नहीं? प्रिंस कंटेंशन में हो सकते हैं। जी हाँ, प्रिंस कंटेंशन में हो सकते हैं। देखना है यहाँ पर क्या निर्णय रहता है। 34 और 25 का ये जो स्कोर है, थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है। उसका कारण यह है कि प्रिंस की टो जो थी वो लॉबी में थी, बट द क्वेश्चन इज क्या एक रन के लिए भी उनकी टो हवा में उठी है? यदि उठी है तो दोनों टीम को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो डैश सक्सेसफुल। 6 मिनट का खेल यहां से खेला जाना बाकी है और हर एक बीतता पल सिंसोनिक के लिए मुश्किलात का सबब है। पेविया पैंथर्स डू और डाई पे ही खेलती हुई आपको नजर आएगी। इस बार रिचपाल बाहर हुए, ये रेड भी डू और डाई की परिस्थिति में आई थी। 2 खिलाड़ी यहां नजर आ रहे हैं लॉबी के पास।
डिस्कशन हो चुका है, निष्कर्ष आना 1 है। point each. 1 point One each, defender. प्रिंस बाहर। Sinsonic 18 number out. रिचपाल तो बाहर गए ही थे, साथ ही साथ प्रिंस को भी जाना पड़ेगा और सिंसोनिक के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि पॉइंट का फासला उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ये देखिए किस तरीके से उनका जब घुटना लैंड हुआ, जब उनके दोनों ही नीज लैंड हुए तो टो जो थी वो हवा में उछल गई और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। खामियाजा भुगतना पड़ा और पेरियर पैंथर्स 35, सिंसोनिक्स 26। राजू गए हैं, खलबली सी मचाइए और यहाँ पर क्या राजू मध्य रेखा को क्रॉस कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। सिंसोनिक्स को 2 पॉइंट मिला है और ये क्या संजीवनी का काम करेगी सिंसोनिक्स के लिए, ये देखना है। क्या फॉर्म को बरकरार रख सकती है सिंसोनिक्स? लोकेश से इतनी ज्यादा गलतियां कैसे हो रही है? सरदार तो चलिए फिर भी वो उड़ते तीर लेने के लिए आ गए क्योंकि अपनी टीम के लिए वो रेडर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन लोकेश से ऐसी एक्सपेक्टेशन उनकी टीम पेविया पैंथर्स, उनके कोच बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। 5.5 मिनट से भी कम का खेल यहाँ खेला जाना बाकी है। फासला 35 अंकों का वो पक्ष में पेविया पैंथर्स के जा रहा है और हर एक बीतती घड़ी सिंसोनिक के लिए अच्छी चीज नहीं है। डिफेंस बहुत ज्यादा हाईलाइन खिलाने की कोशिश की जा रही है। गोपाल ने डिफेंडर को ना सिर्फ डराया है बल्कि टो टच करके वो पॉइंट भी क्लेम किया। नंबर 66 आउट। पॉइंट्स क्लेम किया और पॉइंट मिला भी है। 66 नंबर के खिलाड़ी वहां पर बाहर गए हैं और गोपाल क्या कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। 5 मिनट 2 सेकंड का खेल बचा है। एक बार फिर से यहाँ पर राजू आए हैं और देखिए 5 खिलाड़ी लगातार फुटवर्क का यूज कर रहे हैं। उन्हें पॉइंट चाहिए और अगर पॉइंट नहीं लाएंगे तो सिंसोनिक्स के ऊपर प्रेशर बनता रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजू को प्रयास करना चाहिए मेरे विचार में और सिंसोनिक्स पिछड़ रही है। और इस मैच के शुरुआत में एक दर्शक ने हमसे सवाल पूछा था कि क्या सिंसोनिक जीत सकती है, तो ये आने वाला कुछ 4.5 मिनट का जो खेल बचा है उसमें इसका आंसर छुपा हुआ है, लेकिन आंसर इनके एफर्ट में भी छुपा हुआ है और एफर्ट की कमी मुझे नजर आ रही है। राजू जिन्होंने आज के इस मुकाबले में ऑलरेडी अपना सुपर 10 कंप्लीट कर लिया है, 5 के डिफेंस के अंदर है। इस बार मैच के ऊपर लोकेश आपको नजर नहीं आएंगे। दोनों ही कॉर्नर्स के ऊपर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो कॉर्नर की पोजीशन अच्छी तरीके से नहीं संभाल पाते हैं। राहुल से एंड को चेंज किया, लेफ्ट कॉर्नर की तरफ गए लेकिन एम्प्टी हैंडेड वापस आना पड़ेगा। एम्प्टी हैंडेड वापस। 8 पॉइंट का जो ये डिफरेंस है, 4 मिनट से कम का समय बचा है। गोपाल आए हैं और गोपाल उन्हें पता है कि जो समय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 30 सेकेंड अगर निचोड़ लेंगे तो प्रेशर सिंसोनिक पर बढ़ता जाएगा। वो टिकटिकी एक बार आपके हाथ से निकल गई, ऑफिशियल समय एक बार आपके हाथ से निकल गया तो फिर वापस इतनी आसानी से नहीं आता। ऑफिशियल टाइम आउट की मांग। आज 3 बार गेम को बीच में रोका गया है और ये सिर्फ एक तकनीकी एरर है, लेकिन खेल के अंदर बीच में जैसे जैसे वो रुकावटें आती है शायद मोमेंटम के अंदर थोड़ी सी स्पीड ब्रेक हो जाती है। सिंसोनिक की टीम बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। पेविया पैंथर्स चाहती है कि बीच बीच में वो ब्रीदर्स मिलते हुए नजर आए। स्कोर शायद अपडेट हो चुका है। 36-28 ये दृश्य फिलहाल स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आ रहे हैं। पेविया पैंथर्स के पक्ष में जा रहे हैं। एक रिव्यू बचा है पेविया पैंथर्स के पास। पेविया पैंथर्स ने रिव्यू गंवा दिया है। सिंसोनिक के पक्ष में जाना चाहिए वो रिव्यू। 1 पॉइंट उनके पास बचा था, लेकिन बाहर जाते हुए राहुल नजर आएंगे। किसी खिलाड़ी को चोट लगी है। क्या रोहित हैं जिन्हें चोट लगी? राहुल वहां पर और राहुल को शायद जूते से चेहरे पर चोट लग गई है। इसी बीच रिचपाल जाट डू और डाई रेड में 5 का घर यहाँ पर अंदर तक गए हैं, लेकिन और अंदर जाना पड़ेगा। पॉइंट चाहिए तो नजरें उनकी टिकी हुई है खिलाड़ियों पर और इस बार मुझे लगता है 1 पॉइंट थोड़ा सा बेहतर प्रयास हो सकता था रिचपाल जाट के लिए, लेकिन रिचपाल यहाँ पर पकड़े गए हैं। डबल थाई होल्ड आया रोहित के सामने। रोहित वो खिलाड़ी है जिन्होंने ऑलरेडी आज के इस मुकाबले में अपना हाई फाई कंप्लीट कर लिया है। राजू ना सिर्फ टीम के कप्तान, आज के मुकाबले में सबसे ज्यादा पॉइंट लाने वाले खिलाड़ी। लॉबी का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हुए जरूर, लेकिन सेफली अपने कैंप में आए, साथ ही साथ एक और पॉइंट लाए।
इन कप्तानों की बैटल नवनीत देखते ही बनती है। दोनों जब आमने सामने आते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बोलते हैं। बचे हुए जो 2 मिनट का खेल है उसमें सिंसोनिक एटलीस्ट ये कर सकती है कि अपने लिए 1 पॉइंट इंश्योर करे, 7 अंक से कम कर ले उस फासले को। 7 अंक से कम कर लेगी तो 1 पॉइंट मिलेगा गोपाल यहाँ पर। और जैसे ही 1 मिनट 40 सेकंड से कम का खेल बचता है, इसका मतलब होता है खेल अब 100 सेकंड से कम का है। और 100 सेकंड से कम के खेल में 13 पॉइंट निकालने वाले रेड कर राजू वो आपको नजर आएंगे। टैकल में भी उन्होंने एक योगदान दिया है। इन टोटल 14 पॉइंट इस खिलाड़ी के पक्ष में गए। तो वहीं दूसरी तरफ कैंप के ऊपर राहुल मौजूद है, लेकिन अटैक दूसरे कॉर्नर की तरफ से आया। मनजीत मित्रा शायद वो खिलाड़ी थे, बिल्कुल थे। कोच ने उन्हें कहा था कि संभल के सत के खेलना पड़ेगा। सेंसोनिक के कोच के चेहरे के ऊपर अच्छे दृश्य नजर नहीं आएंगे। राजू मैच से बाहर जाएंगे। ग्रीन कार्ड पेरियर पैंथर्स, जर्सी नंबर 4, जर्सी पुलिंग। या मंजीत को हरा कार्ड मिला है। कई बार ऐसा नहीं होता नवनीत कि बैंक के अंदर आप अपने क्रेडिट कार्ड को 1-2 बार इस्तेमाल करिए और उसकी लिमिट इंक्रीज कर दी जाती है। मुझे लगता है कि वो जर्सी पुलिंग का कार्ड थोड़े सस्ते में मिल गया। या बिल्कुल सस्ते में मिल गया। अनुज सैनी यहाँ पर आए हैं फिर से एक बार। 7 सेकंड से कम का खेल बचा है और रेडर से मारते हुए पहुंच गए हैं बहुत ही आसानी से। नंबर 1 आउट, पैंथर्स 38 और सोनिक सब्स्टिट्यूशन सिंसोनिक प्लीज 1 14 सेंसोनिक 66 सब्स्टिट्यूशन आउट। देखेगी। मोनू ने डबल एंकल होल्ड करने की कोशिश की जब जंप लगाकर बाहर जा रहे थे रेडर। पूरा कैंप ही बदल रहे हैं। 15 इन, प्रेम अंदर आए, रितेश बाहर गए, 6 आउट। अंगद अंदर आ रहे हैं, अंशु उनकी जगह बाहर जाएंगे, 18 विकास अंदर आए, प्रिंस शायद उनकी जगह बाहर गए। सब्स्टिट्यूशन पेरियर पैंथर्स प्लीज 1 in 6 out, 17 in 7 out, 44 in 4 out। तो अभी तक हम जो मैच देख रहे थे वो पेवियर पैंथर्स बनाम सिंसोनिक था। अब बचे हुए 50 सेकंड के अंदर जो खेल दिखाया जाएगा वो पेवियर पैंथर्स 2.0 बनाम सिंसोनिक 2.0 का है। चलिए कम से कम इस बैटल में कौन जीता है ये देखते हैं। एंकल होल्ड गोपाल गोपे, बैग योर पार्डन, सिंसोनिक राहुल गोपे बच के निकल गए। 17 out। बोनस +2 मिलेंगे। सुपर रेड लगा दी। छोटी सी बैटल में ये खिलाड़ी जो सब्स्टिट्यूट होकर नहीं आया वो अपनी टीम के लिए पॉइंट लाया। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, जाते जाते चेस्ट के ऊपर टच मारा, कवर के खिलाड़ी को भी साथ ले गए। और यहाँ पर रिचपाल जाट 1 point पेरियर पैंथर्स अपनी टीम के नंबर 40 आउट। 40 प्रेम आउट हो गए। वहां पर स्कोर है 39 और 33। 2 बार वो टर्न दिखाया। बचपन में हम वो लट्टू चलाते थे तो याद होगा नवनीत आपको, रस्सी को खींचते ही लट्टू के स्पीड के अंदर टर्न मारता था। वैसे ही कुछ टर्न्स दिखाए हैं आज। या बिल्कुल, और वो जब लट्टू घूमता था तो आवाज भी आता था गुर्र इस तरीके का। पर मैट इतना अच्छा है कि वहां पर वो आवाज नहीं आ सकता है। और आनी भी नहीं चाहिए। यदि वो आवाज आ गई तो समझ लीजिए कि किसी खिलाड़ी की हड्डियां कड़क गई है। 13 अंक निकाले इस खिलाड़ी ने। टच पॉइंट 10 है। 3 पॉइंट इनको मिले हैं राजू को बोनस के। सुपर 10 आज के इस मुकाबले का कंप्लीटेड। लेकिन शायद चेहरे के ऊपर वो मुस्कान नहीं, क्योंकि सेंसोनिक को वो जीत नहीं दिला पाए। ट्राई करना, कोई ना 1 पॉइंट मिलेगा, 1 बोनस मिल जाएगा अपने को। 6 पॉइंट मिलते हैं। 7 की लीड, 8 की लीड होगी ना, 1 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ट्राई कर। ऑलराइट देन, सेंसोनिक का वो जो सपना है एटलीस्ट अपने लिए 1 पॉइंट लेने का, वो भी नहीं देना चाह रही पेवियर पैंथर्स की टीम। कह दिया है कि वो बोनस ले लीजिए। कानाराम चौधरी डिफेंस हाउस पैक। रोहित ने सबसे ज्यादा शिकार किए हैं, रोहित को ही शिकार बनाया है। अंगद को भी साथ में ले गए। सुपर रेड हो सकती है, सुपर रेड है। 7 and 15 हाउस ने सेंसोनिक के कैंप का एक भी सपना पूरा नहीं होने दिया। मैच ओवर। या मैच ओवर हो गया है। सेंसोनिक्स को एक भी पॉइंट नहीं मिला है और यही सवाल था हमारे दर्शक का। अनुज यहाँ पर बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। 43 और 33 ये स्कोर लाइन रहा और ये आखिरी दृश्य हमें देखने को मिल रहा है जब दोनों टीमें आपस में मिल रही है।
सब्स्टिट्यूशन खूब किए, लेकिन वो आखिरी का समय था। रिचपाल जाट 11 पॉइंट अपनी टीम के लिए पेवे पैंथर्स के लिए मुकम्मल किए। लोकेश गोसलिया ने डिफेंस के अंदर आज हाई फाई से वो चूक की है, क्योंकि पहले हाफ के अंदर ही उनको 4 पॉइंट मिल गए। दूसरे हाफ में एक भी शिकार लोकेश ने नहीं किया। ये दृश्य आम नहीं है हम सभी के लिए। राहुल चौधरी को 2 पॉइंट डिफेंस के अंदर मिले थे। अनुज सैनी को सिर्फ 1 पॉइंट डिफेंस का मिला। 1 अंक की वो खिलाड़ी रेड में लाया। कॉर्नर की पोजीशन खेलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों उसके अंदर फेरबदल करने की कोशिश पेवियर टीम को पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ सेंसोनिक के डिफेंस के अंदर दहाड़ लगाई है। 6 पॉइंट के साथ रोहित सिंह इस मुकाबले के बेस्ट डिफेंडर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस सब खिलाड़ियों को दिखानी थी, शायद उसमें थोड़ी सी कमी आई और उसी के चलते वो जीत भी थोड़ी दूर चली गई। लेकिन डिफेंडर ने रेडर को भी दूर भेजा था। यहाँ रेडर को दूर भेजा था और यहाँ पर देखिए रोहित बहुत ही शानदार डाइव लगाए थे। रिचपाल ने भी अच्छा खेल दिखाया है और यहाँ पर क्या छकाने का प्रयास किया था, असफल रहे थे लगातार। सेंसोनिक थोड़ा सा निराश होगी अपने प्रदर्शन से, पर ये जिस तरीके से खेली है खिलाड़ी सीखेंगे। बिल्कुल, खेल एक ऐसी चीज है जिसमें या तो आप सीखते हैं या फिर आप जीतते हैं। हार का कोई सवाल बनता नहीं है, लेकिन वो एक अलग कहानी है कि स्कोर कार्ड के चलते आपको बाहर जाना पड़ता है। जर्सी पुलिंग क्लीन तौर पे दिखी थी। राजू टर्न पे सबको दिखाना चाह जरूर रहे थे और फिर आखिर में सफलता भी अपनी टीम के लिए पाई। ये डुबकी थोड़ी सी नलीफाई हो गई थी क्योंकि मोनू वहां मौजूद थे, और यदि आप अर्ली डिसीजंस बना लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार चीजें आपके पक्ष में जाएं। पास फटाफट हाईलाइट्स आप देख रहे हैं और वो उस मुकाबले की थी। हालांकि 3 बार बीच में इंटरफेरेंस हुआ जरूर था, वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से। उसके लिए हम आप सभी से माफी चाहते हैं, लेकिन सपोर्ट फैन कोड के ऊपर युवा कबड्डी सीरीज को इसी तरह से आप देते रहिए तो चीजें सब कुछ परफेक्शन की तरफ जाती हुई नजर आएगी। जिस परफेक्शन के साथ आज डिफेंस खेला था पेवियर पैंथर्स का, जिस परफेक्शन के साथ आज रेडर्स ने रेड लगाई थी पेवियर पैंथर्स के लिए, वो दृश्य हमें बार बार दिखाए थे और जहन में जरूर याद रहेंगे। आखिरी के कुछ क्षणों में जब दोनों टीम ने अपने सब्स्टिट्यूटेड खिलाड़ियों को बैट के ऊपर ले आए थे, तो वहां पर कानाराम ने आखिरी रेड, अपने मुकाबले की पहली रेड, सुपर रेड के तौर पे लगाई। फुल टाइम मैच समरी पेवियर पैंथर्स 43-33 के ऊपर सेंसोनिक। रेड पॉइंट 25 मिले थे पेवियर पैंथर्स को, तो 3 कम पे थी सेंसोनिक की टीम। 9 टैकल पॉइंट थे, 3 अंकों का फासला वहां भी मुकम्मल था। 12 अंक पेवियर पैंथर्स ने निकाले ऑल आउट के। 4 पॉइंट पेवियर पैंथर्स की टीम ने एंजॉय किया। एक्स्ट्रा दोनों टीम को बराबर मिले। सुपर रेट्स बराबर लगाई। सुपर टैकल आज के दिन तो कम से कम सेंसोनिक ने बेहतर की। पेवियर पैंथर्स ने अभी तक वाईकेएस इस एडिशन में, यदि मैं गलत नहीं हूं, सबसे ज्यादा सुपर टैकल लगाई है। राजू सिंह आज के मुकाबले के बेस्ट रेडर रहे। नवनीत बेस्ट रेडर रहे राजू सिंह। 13 पॉइंट्स हमें देखने को मिलेगा जब स्क्रीन पर दिखाया जाएगा उनका नाम। बिल्कुल 21 में से 13 पॉइंट्स और प्रतिशत देखिए 61% के साथ, लेकिन अपनी टीम के लिए कप्तानी पारी खेली जरूर थी। मन के अंदर वो मलाल रह जाएगा कि टीम को विक्ट्री नहीं दिला पाए, लेकिन टीम गेम में सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी आपको यदि जिता भी सकता है तो एक आध मैच। लंबी सीरीज जीतने के लिए आपको चाहिए मल्टीपल सपोर्ट। रोहित सिंह बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट रेडर, बेस्ट डिफेंडर दोनों ही सेंसोनिक के, लेकिन मुकाबला पेवियर पैंथर्स ने जीत लिया। यही होता है ऑलराउंड परफॉर्मेंस। टैकल 10 जनरेट किए थे, टैकल पॉइंट्स 6 मिले, सुपर टैकल एक बार इन्वॉल्व थे। टैकल का सक्सेस रेट हालांकि 60% ही था, लेकिन उसके बाद भी तारीफ करनी पड़ेगी जैसा खेल दिखाया। पेवियर पैंथर दूसरे पायदान पे थी, दूसरे पायदान पे है। कारण यह है कि नीलगिरी नाइट्स ने एक भी मुकाबला गवाया नहीं है बूस्टर राउंड में। 5 में से 5 जीते हैं। पेवियर पैंथर्स एक मुकाबला उनको गंवाना पड़ा, 4 जीत के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सेंसोनिक खाता खुलने का इंतजार कर रही थी, खाता खुलने का इंतजार कर रही है। कब तक करेगी ये शायद वक्त बताएगा। अरावली एरोज बहुत अच्छा नहीं खेल रहा है इनका दिन भी। 5 मैचेस खेले, 1 मुकाबला इन्होंने जीता है, 4 गंवाने पड़े। पेवियर पैंथर्स से जस्ट ऊपर, अरावली एरोज से जस्ट ऊपर पलनी टस्कर्स की टीम है, जिनका सूरत हाल भी लमसम एक ही है, लेकिन एक टाई खेला था। अपने से जस्ट ऊपर वाली टीम हम्पी हीरोज के साथ। हम्पी हीरोज नीचे कैसे आ गई? चोला वीरन्स की टीम चौथे पायदान के ऊपर है, चंबल चैलेंजर्स तीसरे पे। 3 मुकाबले दोनों ही टीम ने जीते हैं, लेकिन फासला जो है वो स्कोर डिफरेंस का है। यदि आप अच्छे स्कोर डिफरेंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो चीजें आपके पक्ष में जाती है। पॉइंट्स सबसे ऊपर नीलगिरी नाइट्स की टीम को 28 मिलेंगे, पेवियर पैंथर्स 24 के ऊपर है। सेंसोनिक पॉइंट्स में भी खाता खोल रही है, स्कोर डिफरेंस में -71 पे है। कितना ज्यादा बड़ा डेबिट, कितना ज्यादा बड़ा लोन इनके ऊपर है, वो चुकाना पड़ेगा। कब चुकाएंगे ये शायद वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल समय हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। लेकिन आप कहीं जाइए मत, क्योंकि हर्षित जुड़ेंगे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में।
One more time, Panthers hunt in a row. Welcome to the post-match presentation of match number 85 of Yuva Kabaddi Series, Summer Edition 2023. We would like to start this presentation with thanking all our partners first. Our broadcast partner, FenCode, fantasy partner, Dream 11, our physio partner, Department of Sports Science, JSS College of Physiotherapy, hospitality partner, Ginger Hotel, our healthcare partner, Ramakrishna Specialty Hospital. और आज चलिए हमारे साथ presentation में मौजूद है Mr. Srinivas Sir, Personal Secretary, Maharaja of Mysore Palace. A huge welcome in the post-match presentation. We are profoundly delighted to have you here in this arena. This match, Periyar Panthers versus Sinsonic. One more defeat for Sinsonic in a row. Periyar Panthers won this game by 10-point margin, and here we are heading towards our presentation party, starting with the best raider of the match, and from the team of Sinsonic, he is Raju Singh for his 13 raid points. Let's have a look at his performance. और जरूर बेस्ट रीडर के साथ साथ बेस्ट डिफेंडर का तमका भी यहाँ पर सिंसोनिक के पक्ष में जाएगा। समय है बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच का, और वो रहेंगे एक बार फिर से सिंसोनिक की टीम से रोहित सिंह, जिन्होंने प्राप्त किया आज अपने नाम 6 टैकल पॉइंट्स। देखिएगा इनका शानदार प्रदर्शन को। तो चलिए अब समय है कबड्डी कमाल ऑफ द मैच का, और बात करते हैं पेरियार पैंथर्स। ये जरूरी है कि आप कमाल मूवमेंट अपने नाम करें और मुकाबले को भी अपने नाम करें। ये अवार्ड जाएगा वन मोर टाइम द रिच इन पॉइंट्स मिस्टर रिचपाल जॉर्ज, जिन्होंने लगाया शानदार मूव ऑफ द मैच और मैच की अपने लिए, अपनी टीम के लिए कॉन्क्रीट। So that's all from the post-match presentation. एक बार फिर से बहुत ही अद्भुत ये दिवस, बहुत सारा एंटरटेनमेंट अब आप सभी के लेकर आए, बट हमारे साथ बने रहेगा क्योंकि हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे इन द पोस्ट शो यानी कि YKS लाइव में।
कबड्डी का बुखार और कबड्डी का एक्शन अपने 7वें आसमान पर शुमार हो रहा है लगातार। आइए आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं और स्वागत करें द पोस्ट शो YKS लाइव। और नवीन, मैंने ये क्यों कहा क्योंकि आज भी हमें क्या एक्शन नजर आया ना, बहुत सारी टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मेरे साथ मौजूद है नवीन, एक बार फिर से हम स्वागत कहते हैं आप सभी का। Thank you so much, Arshit. And we've always been in awe with the stadium as well, Chambal Indoor Stadium. And we also really want to thank Karnataka Rajya Amateur Kabaddi Association as well for allowing us to have such a wonderful Kabaddi matches. You know, fabulous this was today, the day. It panned out very nicely. I think we'll once again quickly go out there and start off with the first match to start off with, what happened and how it was and all that. जी हाँ, उसकी तरफ चले उससे पहले अंक तालिका की तरफ अगर ले चले हमारे दर्शकों को और बता दें कि आज कैसे यहाँ पर पॉइंट्स टेबल पर उथल-पुथल मची हुई है। हमने शुरू में कहा था ना कि पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल मचेगी, पर टॉप पायदान पर नहीं मचेगी नवीन, क्योंकि 5 में से 5 जीत यहाँ पर और पॉइंट्स पर मैच और इंक्रीज हुआ इस टीम का। दूसरे पायदान पर आज पेरियार पैंथर्स जीता, दूसरे पायदान पर वो नजर आएगा। तीसरे चौथे पर चंबल और चोला है। चोला पहले से चौथे तक की कहानी रही है नवीन उनकी। And Hampi Heroes was really nice to get their second victory as well and sealing that 5th spot. I won't say they qualified already, but I will say they are kind of safe because the way Sonics are playing, Hampi Heroes can feel a little more cushion on their back. But the Palani Tuskers, yes, they will want more victories than just that one victory. First victory in the booster round, very good for them. जी हाँ, बड़े मुकाबले थे, बट अब आइए जल्दी से चलेंगे मैच नंबर 82 की तरफ, जहां पर दो टीमें ऐसे खेल रही थी इससे पहले कि टाई के साथ मुकाबला समाप्त हो रहा था। बट ये मुकाबला अपने नाम किया नीलगिरी नाइट्स ने, और कहां अच्छा खेला कहीं ना कहीं आइए उसकी तरफ चलते। 27-19 से मुकाबला अपने नाम किया उस मैच की समरी की तरफ आपको बिना किसी इंतजार के ले चलते हैं नवीन। रेड में बहुत अच्छा किया यहाँ पर टीम नीलगिरी ने। Very good for the Nilgiri Knights, I should tell you that. And of course for the Chambal Challengers, yeah, that was a big problem. I think me and you were there in the commentary box where Sanskar Mishra did not raid. He did not come in. And when Sanskar Mishra does not come in, look at that. The entire team got 13 points. That's what I said. Sanskar Mishra alone could take 13 raid points. But here the team put together has taken 13 raid points. But good that Marimuthu Selvam has done it. And I will really want to, welcome that new talent that came in for the Nilgiri Knights, the new raider who came in place of Kesavan Raja. And he actually, slightly got into the team very smoothly. Did not announce too much, Vasant. He came in and he just slightly got into the team and got his 6 to 7 raid points. Very good. जी हाँ, कुछ भी वहां पर ओवर ट्राई करने के लिए नहीं गए, सिर्फ उन्होंने अपनी स्किल्स को यूज किया। पहला मैच था, बिल्कुल नर्वसनेस को पूरी तरह से हटाया और बहुत ही अच्छा खेले। और नवीन, उनकी एक सुपर रेट जब आई थी ना, जो हमारी कबड्डी कमाल था, आज वो वीडियो ने बताया कि कैसे उस खिलाड़ी ने चंबल चैलेंजर्स के विरुद्ध सील की ये विक्ट्री। Oh really? I didn't know that this was Vasant's Kabaddi ka Kamal moment. Yeah, there he got a little bit of a hit on the left eye, and then that super raid, and this jump was marvelous. So I was just thinking. He just came in. He did not have any Kamal moments, Arshit, because I didn't see the the post-match award ceremony that you had. But lovely that he got it in the first match itself, and not to announce too much of an extravagant entry, but slightly getting into the team and making sure his place is okay. I feel bad for Kesavan Raja, who's done well, who's lost the place right now. But good that another Raiders in the team, and not to worry for the Nilgiri Knights. They have a lot of Raiders whenever it's needed. एग्जैक्टली नवीन, बिल्कुल आपने सही कहा। और आज एक और खिलाड़ी की आपने बात की, संस्कार मिश्रा ने ज्यादा रेड नहीं लगाई। वी आर होपिंग कि वो अपने आप को ठीक रखें। ये सोच भी अच्छी थी कि बाकी रेडर्स को मौका मिले, बट मौका आज अगले मैच में पूरी तरह से दिया था रावली एरोज ने पलनी टस्कर्स को नवीन जीतने का, और पहली विन वहां पर आई है बूस्टर राउंड में पलनी टस्कर्स की। मैच नंबर 83 की तरफ चलते हैं तो रावली एरोज 14 से 21 पहुंचा है, बट ये परफॉर्मेंस उनके लिए बेहतर नहीं था। उनके टैकल पॉइंट्स अच्छे थे, बट रेड पॉइंट्स देखिए आज भी उन्होंने पीछा किया, सिर्फ 11 रेड पॉइंट्स नवीन। That has been their problem for the Aravali Arrows, isn't it? Every time they have that issue there. And Rajendra Bakar also today was raiding. I was wondering what was happening with the coach and the think tank. They were sending Rajendra Bakar for a do-or-die raid. They were sending Rajendra Bakar for an all-out situation where he was standing alone. I really have no clue why that was being done. And that's why Palani Tuskers, yes, they came out with a nice plan. They executed their plan and they won it. And once again, very good on the raiding and the defensive unit as well. They did their best in making sure that the Aravali Arrows did not get a sniffer of to come back in that match. जी हाँ, ऐसा लगा कि बड़े शुरुआती क्षणों में जिफी मोमेंट्स में यहाँ पर पलनी टस्कर्स ने ऑल आउट कर दिया रावली एरोज को, और उसके बाद वापस आ ही नहीं पाए। बट एक खिलाड़ी बहुत अच्छे अंदाज में वापस आए अपनी टीम में, वो है एस मणिकंदन। नवीन, मैंने इनकी कल भी बात की थी कि क्यों ये बेंच पर बैठे, बट शायद एलेवरसन साहब सोच रहे थे कि जब हम उन्हें उतारेंगे तो फुल पैकेज के साथ उतारेंगे। Oh yeah, that is why he is there, the left cover defender. He had to get in along with Ajay Mutaya very nicely, and when Ajay Mutaya gave that place,
and Vidudhai Viswanathan did not get that spot. He came in and Manikandan did that best moves. I think we should call him in and ask him more of what he feels actually about today. तो चलिए हम उन्हें बुला लेते हैं हेल करते हुए. Here we are inviting S Manikandan with us. So please join us S Manikandan. स्वागत करते हैं हम आपका. Wow, Mani, முதல் மேட்ச் விளையாடுறீங்க, முதல் மேட்ச்லயே ஹை ஃபைவ். அருமையான ஒரு இன்னைக்கு ஒரு ஆட்டம் உங்ககிட்ட இருந்து. பட் ஒரு பாக்ஸிங் சாம்பியனா, நீங்க பாக்ஸிங் கோல்டு மெடலிஸ்ட், எங்களுக்கு தெரியும். நீங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் பாக்ஸிங் கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்கீங்க. கபடியோட மாற்றம் எப்படி இருக்கு? கபடியோட மாற்றம்னா நான் ஸ்கூல் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் காலேஜ் சேர்ந்த அப்புறம் தான் கபடி விளையாடவே ஆரம்பித்தேன் சார். அதுக்கப்புறம் கபடி விளையாண்டே கற்றுக்கிட்டேன் சார். அருமை. இன்னைக்கு பாக்ஸிங் பஞ்ச் மாதிரி இருந்துச்சு உங்க டிஃபென்ஸ் கூட. ஆனா எதுக்காக உங்களுக்கு அந்த கார்டு வந்தது? எது எப்படி அந்த குழப்பம் என்னன்னு புரிஞ்சுட்டா உங்களுக்கு? தெரியல சார், மேட்ச் பார்த்தா தான் சார் தெரியும். He says he does not know why I got the yellow card. He got the yellow card, he was standing outside. He has to go back and see the match. That was very so humble of him and innocent of him as well. But இன்னைக்கு நீங்க வந்து அஜய் முத்தையோட காம்பினேஷன், நீங்க அந்த கவர்ல நின்னீங்க, அது எப்படி தோணுச்சு உங்களுக்கு? ஏன்னா அஜய் முத்தையா ஒரு சீனியர் பிளேயர். ஆமாம் சார், அவர் சீனியர் பிளேயர், அதனால் அவருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வாய்ப்பு சார். அவர் மைனஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க, அந்த வாய்ப்பை நான் கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிட்டேன் சார். அருமை. அப்புறம் கடைசி கேள்வி, தமிழரசன் ரொம்ப அருமையாக விளையாடிட்டு இருந்தாங்க லெஃப்ட் கார்னரில். ஆனால் 2-3 மேட்ச் அவங்க வந்து அந்த ஃபார்மை காட்டல. எதுக்கு அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அவர் நல்லா விளையாடல அப்படின்ற நேரத்தில் ரூமுக்கு போய் என்ன தான் பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் இளவரசனுக்கும் உங்களுக்கும்? இளவரசனு பரவாயில்ல, இந்த மேட்ச் இல்லைன்னா அடுத்த மேட்ச் ஆடிக்கலாம் கான்ஃபிடண்ட்டாக சொல்லுவார்ண்ணா. அதுக்கப்புறம் தமிழரசன்ட்ட பேசுனீங்களா ஏன் நல்லா விளையாடல அப்படின்ட்டு? பேசினேன். அந்த பையன் இந்த மேட்ச் இல்லைன்னா அடுத்த மேட்ச் நான் நல்லா விளையாடுவேன் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடண்ட்டாக சொன்னான். அருமை. நன்றி. Thank you so much. First victory for you. Superb. So Arshit, what he always was saying was, where you go out there after losing the match, you go out and make sure that in the room you just make that environment completely forgetting. That is what Ilavarasan is best in doing it, isn't it? He just said, no, we will not talk about the match. We will just say this match is over. We will think about the next match. So simple. वंडरफुल. यही होना बहुत जरूरी और यही मणिकंदन का कॉन्फिडेंस वहां पर बयां करता है, जिस प्रकार से पिछले कई मुकाबलों में नहीं थे बट इस मैच में आए और बहुत अच्छा किया. बट नवीन, एक प्रश्न था जो आज दी एक्सपर्ट के तौर पर पूछा गया था उस मैच में, और उसका एक और कंफर्टेबल आंसर के लिए मैं वही प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा. ब्रजपाल सिंह गौड़ के लेकर शायद प्रश्न पूछा गया था कि पिछले 3 मैचेस में उनके पास सिर्फ 8 रेट पॉइंट्स हैं और उन्होंने बहुत ही मिनिमम रेट्स की है, बल्कि वो YKS समर एडिशन के वन ऑफ द टॉप 5 या 7 रेडर्स में आते हैं. तो क्यों ब्रजपाल सिंह गौड़ पिछले कई मैचेस से कम रेट्स लगा रहे हैं? क्यों उन्हें कोच कम रेट्स का मौका दे रहे हैं? I think, see, the only strategy could have been that you're saving your raider for the other matches that's going to come up. Apart from that, I don't see why a raider like Brajpal is being saved so much. Yeah, for me, he has to go on raiding. As I said, even in the commentary when we were discussing, remember, as a raider, you should have that momentum. Every match you keep on playing, you will get better and better. But that can't be said for a defender, because defender needs that time to recover, come back, because more body aches, more body pains, more bruises compared to a raider. But for a raider to keep on playing is very, very important. And I want to see Brijpal to raid more as well. And thanks for that question, whoever asked, that we have actually gone ahead and put out a point to the coach as well to ask Brijpal to raid more. या तो हम ऐसे ही आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए #AskTheExpert के साथ युवा कबड्डी सीरीज के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे. बट आइए उसके पश्चात अगर हम बात करें तो शुरुआत कर दी है हम्पी हीरोज ने. पहले हम एक जीत की बात कर रहे थे, अब एक और बड़ी जीत वहां पर प्राप्त हुई है अगेंस्ट चोला वीरेंस. बहुत अच्छा खेले और कंसेक्यूटिव लॉस यहां पर चोला वीरेंस के लिए बाती हुई. आइए उस समरी की तरफ चलते हैं जहां पर हम्पी हीरोज ने पटक नहीं दिए. बड़े मार्जिन के साथ, यानी कि लगभग 22 पॉइंट के मार्जिन के साथ हम्पी हीरोज ने विन प्राप्त किया. और गगन गौड़ा कोई चिंता का विषय नहीं है नवीन. एक मैच अगर इनका अच्छा नहीं जाता है तो तुरंत अगले मैच में इन कलर नजर आते हैं. रेट पॉइंट्स पूरी तरह से बयां कर रहा है. Yeah, in color, because I was really happy of whatever Madhu Kavirappa told in the post-match show that we had. Remember when he came in, as he got that 22 rate points, he very clearly said that, listen, Gagan needs to use the lobby more, and that is what even we were discussing as well, isn't it? He needs to turn on the right as a right raider. He needs to attack the covers more. That is all the points today he incorporated, and because of that, he's got a double super 10 and 24 raid points today, out of which 20 are of Gagan Glorious Goda, and he steals that front slot
completely of the top raider of the Yuva Kabaddi series on the Summer Edition 2023. And also, you know what, Arshit? He also has a tackle point today. Can you believe that? He's got that one tackle point as well, Gagan Gowda. जी हाँ, बहुत अच्छा कार्य। बट नवीन, मेरे लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग कुछ था तो आज हम्पी हीरोज ने टैकल पॉइंट्स प्राप्त किए। 2 हाई फाइव वहां पर उनकी टीम से नजर आए हैं और ये सबसे ज्यादा उन्हें गेन करेगा मोमेंटम में और बूस्ट अप करेगा इस बूस्टर राउंड में। बट बहुत अच्छा खेले और चोला वीरन से नवीन टैकल पॉइंट्स में सिर्फ 5 नजर आए। पिछले मैच में गौतम अकेले ने वहां पर 5 टैकल पॉइंट प्राप्त किए थे, बट आज उनके खाते में सिर्फ 1 पॉइंट था। क्यों? Again, see, because of Gagan Gowda, there is no, two questions about it. But you mentioned about the corners of Humpy Heroes. For the first time, Humpy Heroes is both the corners, or rather both defenders are getting a high five. Both Narsimhamurthy and Sukesh Kulal. Sukesh Kulal, of course, he's got that problem of starting well and then giving away points. Narsimhamurthy also had that problem before, but today they held on to their stats and they held on to make sure that they get that high five very nicely. So both the corners done well. But yeah, apart from Gagan Gowda, who else can break Gautam's momentum? जी हाँ, तो कमाल मूवमेंट की हम बात करते हैं और कमाल मूवमेंट की तरफ ले चलते हैं जहां गगन गौड़ा ने 20 रेड पॉइंट अपनी टीम के लिए प्राप्त किए और आज उन्होंने वो किया। ये देखिएगा, पहली रेड से यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कैसे उनके जो टर्न्स थे वो अच्छे थे। एक बार फिर से राइट टर्न था नवीन ये। Yeah, that was a half right turn, but even then that was fine. But then this old habit of turning the pages around, he's still having that problem. But this time, you know what he did? He did not turn the page in one hand, he turned the page in both the hands. So when he turned the page in both the hands, see, that can be done. Jokes apart, what happens is Gautam is a very, very quick defender. As a right cover defender, Gautam is very quick. He goes in towards Gagan Gowda more quicker than any other right cover defender. But instead of Gautam, if it was some other defender who could just pause, Gagan would have again got tackled out. So we were discussing about that as well. So today, good that he's brought the variations of turning towards the lobby, going and attacking the right cover and also the right corner. He's got that reach on the wingspan. He was going for the hand toucher. That was very, very good. But he should forget to turn the pages. जी हाँ, ये तो वही बात है ना, जिस प्रकार से ऋषभ पंत को टेस्ट मैचेस में चाहे हाफ वाली बॉल मिल जाए पर वो उसी तरह से खेलते हैं जैसे वो T20 में खेलते हैं। गगन गौड़ा को भी अगर कवर्स अटैक करता है तो पहली आदत उनकी टर्निंग द पेजेस अराउंड। बट जरूर बहुत अच्छा करें और हम यही आशा करेंगे बहुत अच्छा करें जितना अच्छा पेरियार पैंथर्स ने मैच नंबर 85 में किया। नवीन बहुत ही सेंसिबल परफॉर्मेंस कर रही है और लोकेश गुसरिया धीरे धीरे अपनी टीम को अच्छी तरह से लीड कर रहे हैं। नवीन 43 से वो मुकाबला अपने नाम किया। सिंसोनिक फिर से वही इशू रहेगा, रेड पॉइंट्स उनके पास हैं बट टैकल पॉइंट्स में उतनी आपको अग्रेशन और साथ ही साथ उतना आपको सफिशिएंट प्रदर्शन नहीं नजर आ रहा है। See, that has been their problem, no, Harshit. I've been telling that Raju Singh is okay, he is good, and also he's got a little support from here and there where all the other raiders try to chip in with raid points. But the only problem there on the defense, see again, you mentioned about Lokesh Gosalia. Today I saw one tackle. As a left corner defender, he moved so much that he moved almost near the left cover. I mean, when a right raider is raiding, he moved so much, and that too not by moving outside the balk line. He was moving on the balk line. He was moving along. He went into the left in position, then he went to the right. He went into the left cover position, and then went for the ankle hold. That is Lokesh Gosalia. So that hats off for that captain. He's doing really well for the Periyar Panthers. But once again, a loss for Sinsonics. I think now every match is a do-or-die match for them from tomorrow. जी, सिंसोनिक की टीम को वहां पर जीत चाहिए क्योंकि जो उनके 7वें पायदान पर टीम है ना, उनके खाते में वहां पर जीत गई है और अरावली एरोज भी थोड़ा सा परेशानी का सबब रहेंगे। बट बात करें ना तो आज फिर से पॉइंट्स में रिच रहे हैं रिचपाल जाट, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और नवीन, एक और मेरे लिए सबसे अच्छी बात रही कि किसी भी खिलाड़ी को पेरियार पैंथर्स के आज बेस्ट रेडर बेस्ट डिफेंडर नहीं मिला, उसके बावजूद टीम ने कॉम्बिनेशन परफॉर्मेंस दर्शाया और वहां पर जीत प्राप्त की है। और जो सुपर 10 रिचपाल जाट ने बनाया था, उनकी जंप्स जो है बहुत अच्छे से आज नजर आई। तो आज वो उदय शेट्टी का साथ मिला है। Yeah, we keep talking about Anil Kapoor. You know, basically Manu of Welcome movie. That's what Richpal Jatt always looks like. Look at that. He's tilted towards the right, but he's a right raider and wonderful towards the jump. I wonder why that body is tilted towards him. We also discussed that most of the southpaws, if you look at especially one of the Karnataka's great Sunil Joshi, very close to me, he always tilts like that. I always tell Joshi, come on Joe, why are you wearing a coat like this? He's always tilted like that. But Richpal also is tilted, and even Yuvraj Singh also, he's little tilted towards the left. But even though Richpal is tilted towards the left, he's a right raider and he's got that body balance very nicely, and that escape route, that is marvelous from Richpal Jatt. Whenever he goes in, I have not seen him getting blanked out
with the escape route. He has one or two escape routes in his mind. He makes sure that the defenders actually get confused which route he is going to take to get out of the tackle of the defenders. जी आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आ रहे हैं रिचपाल जाट और देखिए फालतू फुटवर्क नहीं करते वहां पर कि इधर उधर सिर्फ घूमे वहां पर उन्हें पता होता है प्लान के साथ जा रहे हैं प्लान के साथ जब आप एम के साथ जाते हैं जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं बट एम तो कल नवीन बहुत सारी टीमों का होगा जीतने का जैसा कि हमने सिंसोने की बात की उन्हें जीत रही है रावली एरोज को जीत रही है क्योंकि और एक और चीज है नवीन बूस्टर राउंड में अगर कोई ट्राई किसी टीम को करना है खासकर जैसे नीलगिरी कर रही है बहुत ही अच्छा रोटेशन कर रही है तो यहाँ आप कर सकते हो क्योंकि उसके बाद चैलेंजर राउंड में कोई आप ट्राई नहीं कर पाएंगे Absolutely not at all. And also if we can even look at the tomorrow schedule, that'll actually tell us what the Sinsonic should actually go ahead and do it. Now watch that. Humpy Heroes have got Aravali Arrows in front of them. And today Aravali Arrows, bit of issue here and there. But tomorrow Aravali Arrows will come out all guns blazing. So just be careful, Humpy Heroes. Today's win would have been easy against the team that Yuva is facing you. But still, Aravali Arrows will come out all gun blazing. So that is a big problem. Nilgiri Knights will want to continue the winning run against Chola Virens. That's a nice Tamil Nadu derby that's coming across. But for the problem there the Chola Virens have got is, there are injury concerns. Mahindra Prasad is injured on his waist. He might not take up the Kabaddi match tomorrow. And of course, no Arun Kumar Anjapuli. And also, Mohan Das is recovered with that injury. So that is good. So the raiding department is struggling there. And then Palani Tuskers against Sinsonics. Tough match for the Sinsonics. They can't help it. But at least try and put out a very good win. But who knows? Like the Kaziranga Rhinos, can they spring up a surprise? Is what we want to see. And then the Chambal Challengers. Of course, I think tomorrow Sanskar Naveen Mishra will be raiding against the Periyar Panthers' defense. लोकेश गुजले वैसे संस्कार मिश्रा मजा आएगा उस मुकाबले में देखने के लिए तो कल के मैचेस पूरी तरह से तैयार हैं बट नवीन आज एक और बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे समक्ष रखा गया था आज की एक्सपर्ट की अगर हम बात करें तो प्रतीक जय हिंद सबसे पहले उन्हें जय हिंद करते हैं बहुत अच्छी बात है जब आप भारत को वहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड सो मेनी इंजरीज happening to the players this edition? Okay, that's a very good question, Pratik. I'll tell you something. See, a Kabaddi mat is not as equivalent as playing on the mud or anywhere you practice. See, what happens is, many of us always come in with that belief that every positiveness of the Kabaddi mat needs to come to us. You come in, of course, I might also say, we've heard people say, oh, this is not right, this is not wrong, you had to do some, rituals and all that. And now, can I also put a point and say, stop swearing on the Kabaddi mat. Stop swearing wrongly on the Kabaddi mat. We've seen every player swearing on the Kabaddi mat. This is like God to us. Kabaddi mat is our God. If you wrongly swear, I don't want to put that point across. But when you say something is going wrong and we are getting injured, no, that's not right. Scientifically, I'll tell you what the problem is. Scientifically, even today we saw Mahindra Prasad. Very, very classic example. The reason why he got injured, he went for the back hold. How should he go for the back hold? He should go in the front. Rather than that, he's going towards the back of the raider. He's going towards the right side of the raider. He's going in, and instead of pulling the raider across, he's put the raider on himself. Now, if you have that sort of an issue, why do we have to, think about not getting injured or being injury-free? See, being a good player is also being how injury-free you can be. See, Kiran Kumar BS for that example. Whenever I see him, I keep telling him, get that scan done. Go out there. You make sure that your leg is fine. He says, no, I'm fine. He plays with the band on. See, I know it's an urge to play. I know this liking to play is very good. But your future also is dependent on your leg as a Kabaddi player, isn't it? So, more number of injuries does not mean that, the players are actually going out there and playing out very rough, tough games. Now, I don't want to blame it on the players also, but the only thing is the strategy, the skill of being injury-free is what we want. Tell me something. Lokesh Gosalia, Rajendra Vakar, how many times have they got injured? Have they got injured? Nothing like that. Even though there's a small bit of a niggle, they come back soon. So it depends on how you are staying injury-free. And see all those injuries, even for Sanjeevi, that left shoulder on that injury list. If I can keep on saying, I can keep on saying the whole night. But what does Sanjeevi do? He suddenly goes back, rests, gives the time for the recovery, then he comes back and plays. So that is very good. So you need to have that routine in your in your career, and that is what takes you longer. See, Kabaddi, how long can you play Kabaddi for? 30 years, 35 years? Of course, everybody is not Dharmalat and Charlatan to play until 40 years also. Anna was playing even in 40. So that can't be there, no? So 35 years is your shelf life. When you have the shelf life, try and preserve your life. Try and preserve your career. Absolutely. Stay injury-free with right skills. Practice it rightly. Have that right skill. Then you will definitely not be injury-free.
जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है और खासकर चूला वीरेंस की टीम को तो खासकर बूस्टर राउंड में उनके लिए लगातार इंजरीज रही है। महेंद्र प्रसाद भी आज इंजर्ड हुए, हम यही आशा करते हैं कि वो बड़ी जल्दी मैच पर आए। बट नवीन, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, नासिर हो घरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, थोड़ा सा हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, क्योंकि चूला वीरेंस की लगातार 5 दिनों में 5वीं इंजरी आ जाई है। बट आज का दिन भी नवीन उस इंजरी को छोड़कर बहुत अच्छा रहा है बहुत सारी टीमों के लिए, और कल भी हम यही आशा करेंगे एज यूजुअल। बहुत ही फ्रूटफुल रहा आज का डिस्कशन, बहुत सारे प्लेयर्स के लिए था। Absolutely, and no injuries is what we want to see. We are not happy at all. Absolutely. As players, when they get injured more than them, we feel bad. As commentators, as Yuva Kabaddi series, we feel bad saying, what is going to happen now? How will he going to come back on that injury? Will he come back tomorrow immediately? Can he come back soon? That's what we always say. That is what that very good question from Pratik allows us to have that discussion. So, to stay